Batting power play that will be taken from over number 3 till over number 7. If it is not been asked by the batting captain, then 7th over will be compulsory batting power play. So here we can see men in red taking their spots on the field. So soon we are about to start, and even the two dashing umpires out in the middle, Aslam Sheikh and Siddesh Naik. So both the teams are playing with the same 11. So this is a wonderful qualifier number 1. Team winning this match will secure themselves into the finals. Team losing this match will get one more chance. This is playoffs format. But they will have to wait for the team that will come from the Eliminator 1. So this is a beautiful day, beautiful afternoon, hot and humid, and perfect setting for the final day of this tournament. South Goa Premier League, where 4 teams are battling it out to book their places into the finals. Let's see which 2 teams can make it to the finals. We're about to begin the first qualifier. Even the 2 openers are out in the middle. So wishing both the teams all the very best.
So there are plenty of prizes for this match as well. For the spectators, for the final day. कळवणे आसा जे प्रेक्षकांक आसात तेणे जर भायल्यान बाउंड्रीच्या भायर एक हातान कॅच धरली जाल्यार केकेजी यांचे ओनर जे आसात अहमद खान हाणें 500 रुपयाचे इनाम दवरलां. प्रत्येक कॅचेक 500 रुपया एक हातीन धरले जाल्यार दावी जाल्यार दाव्या उजव्या जाल्यार उजव्या. आणि हॅट्रिकाक 5000 रुपयाचे इनाम फाव आसा. So here we go with the first ball. Switch it in act and that's a boundary. Good start for KKJ Knight Riders. Pradeep Patil. And the hat-trick is only for Royal Challengers, Zirgam Royal Challengers. If any bowler of Royal Challengers take a hat-trick, then you will be getting 5,000 rupees from your owner. Meanwhile, a good run taken. There was a chance of a run out. Bharat would have been in trouble. And it's a leg by extra to the total. Team total moves to 5. So lot money prizes. That hat-trick prize is only for Al Zargam Royal Challengers player, especially bowler. If any bowler takes a hat-trick, you are going to get a cash prize of 5,000 rupees. For the spectators, if any spectator catch the ball in one hand, which is going to be hit outside the boundary rope, not one drop, direct durbazo. If you catch, then 500 rupees cash prize from Ahmed Khan, the owner of KKJ Knight Riders. Satish Yadav, the bowler. So far 5 runs in this over. Now we can see a shift in the field placement as fielders have been kept at the desired position. Only 2 fielders can be kept outside the circle because this is a power play. 2 overs will be compulsory power play, and after that 1 will be decided by the batting team before the 7th over. Another fuller pace slightly outside the off stump. No chance of any run. Good fielding from a short fine leg fielder. Out in a flash, stops the ball, stops the run. Meanwhile, another good yorker from Satish Yadav. No chance of any run. This is a wonderful player bowling by Satish Yadav, delivering into the right zone, wide yorker, which makes it little difficult for the batter to get it connected with the bat. So meanwhile, consecutive 2 dot balls bowled by Satish Yadav. If any batsman of KKJ scores a 50, then you'll get a cash prize of 2,000 rupees from Ahmed Khan. Another good strike into the covers. Even the fielder has been placed. Is it going to be stopped? No, my dear. Look at that strike from Bharat Arkas. Boundary takes the team total furthermore to 9. Plenty of prizes for players as well as for spectators. And this should be the motivation. Players another cash prize if you are going to hit on the C easy board, which is straight. Meanwhile, Bharat strikes a pull shot in act. What a strike. Sixer takes the team total to 15. After completion of first over, score is 15. Now, there's a big logo which is at the long on region near the stadium. If any batsman hits a 6 directly on that logo, then there's a cash prize of 5,000 from the owner of C Easy.
Any batsman of KKG Knight Riders who is scoring 50 runs will get a cash prize of 2,000. Any bowler of Al Zargam Royal Challenger takes a hat trick, then he will be richer by 5,000. Rohan Salgaonkar, another very good prospect, a good character, has been introduced to bowl the second power play over. We have seen him bowling those batting power play overs, and he was on top. But this is a different game, different opposition, as two teams that are battling out in the middle are from the two different groups. So this is going to be a very good contest. Pradeep Patil on the striking end, the 360-degree man. Shifts way outside the off stump. Lovely thinking by Rohan Salgaonkar. Delivers even further outside the off stump. A Yorker length. Rohan starts with a dot delivery, continuing the same form from yesterday. Switch it in that on to the stumps. Rohan Salgaonkar strikes. What a player. But it has been asked to revive. So this has been asked whether the ball has touched the stumps or it was off the deflection. That to be checked. And the third umpire, Shivcharan Dabholkar, alias Babu, is having a hawk-eye on the situation. So this is going to be a crucial juncture as all eyes at the screen, even the spectators will be taking out their mobile to watch exactly what has happened. Is it going to be a wicket? So the decision is made, and that is going to be the first wicket for Rohan as well as for Al Zargam Royal Challengers. And what a wicket to get. House station player. The 360 dimension player could not do much. So first wicket back to the pavilion. Rohan, the Goan player, striking on the second delivery into the second power play. What a player. This is a strong character. A shy when it comes to talking, but a fighter when it comes to take the proceedings in his hand. A very shrewd bowler, very decent line and length maintained by Rohan Salgaonkar. And now it looks to be no one wants to come out in the middle as Rohan is in charge of the bowling department. Let's see who is going to take that challenge now. There are so many rules in the modern game. Two shrewd umpires are out in the middle, Aslam Sheikh and Siddesh Naik. And there are 10 ways by which a batsman can be declared out. And one of the rule is timed out. So 8 overs have made captain to think and finally decides to send Ankur Singh top the order. So Rohan Salgaonkar taking a word of advice from the upcoming youngster, the better batsman, and right now he is had made a statement in the world of tennis ball cricket. Fardin Kazi, who is keeping the stumps, and he is the better player
to give the advice to his bowlers as he is closely watching the batters as how they are going to take the proceeding. Meanwhile, successful second over so far. 44 on his back. Here we go with the next delivery. Rohan to Ankur. Plays watchfully towards the cover point region. Good fielding there by the fielder. So far, this over is without any score and a wicket on top. There's a chance. Ball takes the leading edge. Oh my dear. Fielder was waiting for the bounce and it skids off the surface. Boundary on the fourth delivery of the over. Score moves to 19. So this is exactly what is displayed on his back. Fourth delivery goes for a boundary. And with that, score moves to 19. That was fortunate for Ankur Singh. It was not a convincing strike. Ball takes the leading edge and travels safely to the third man. Fuller pitch, chance of a catch. Is it going to be held slightly away from the fielder? Nonetheless, a survival for Ankur. Lucky second time. Meanwhile, a single takes the team total to 20. Rohan is having a very good time on this ground at Fatoda. Has bowled decent line and length throughout the tournament and now still continuing with the same. Bharat Darkas could not do much. Ball going away from the batsman. Well kept by Faldin Kazi. A dot ball to conclude over number 2. A successful over after completion of 2 overs. Score is 20 for the loss of 1 wicket. DJ. And now we are into the third over. So let's see what is going to happen. Ankur Singh will be at the striker's end. Final delivery of the second over was a dot delivery. What a lovely over considered by Rohan Salgaonkar. Has taken a wicket and have given away only 5 runs. The good form continues and it's nice to see a Goan player showing his ability and his capacity out here. Meanwhile, a short pitch delivery, hint of a leg cutter. Down the leg some wide is the signal from the umpire, Aslam Sheikh. So 1 run to the total in form of extra. With that, team total moves to 21. Nehal Bind. He was also one of the reasons for which Royal Challengers are toppers. Another good strike, chance of a catch. Is it going to be held? Ball goes away much ahead of the cover fielder. A sweeper was in act only to watch the ball sailing past. 6 takes the total for the more to 27.
Switch hit and a beautiful connection. Chance of a catch. Oh my dear, missed by the spectator and he has dropped 500 rupees from his hand. Nonetheless, team total moves to dangerous figure 33. Weighted onto the back foot, immediate switch, the grip, and that was even a big six over the point region. Missed by the spectator, dropped 500 from his hand. Another switch hit in neck, no connection, ball straight onto his back. So we welcome Jai Bhosle in this tournament on the final day. All Malwani Masala will be out in a flash in the day. Meanwhile, down the leg stump, as the fine leg fielder has been placed very much fine to the keeper. Wide is the signal, has stopped that extra run. Score moves to 34. Another good strike along the carpet. Ball has been hit towards the cow corner region. Fielder from the deep long on gathers the ball quite comfortably. Strong throw restricts the batsman for a single. And with the single, team total moves to 35. Third over in progress. Even they have lost a wicket, but the run rate continues to about 10 runs per over. Change in pace, asking for the trouble. A pull shot in act. Bharat Darkas connects to the maximum. Sixer takes the team total to 41. It was a leg cutter but dropped very much short. Has survived yesterday but could not survive today. And this big six takes the team total to 41. So Bharat Darkas also joining the party. If any batsman score 50 of a KKG Knight Riders, then you will be awarded a cash prize of 2,000 rupees. Any bowler who is going to take a hat trick will get 5,000 rupees from your owner. Meanwhile, the ball takes a inside part of the bat, travels safely to the fine leg. Shabir gathers the ball quite comfortably. A dot ball to end over number 3 after completion of 3. Score is 41 for the loss of 1 wicket. DJ.
5,000 rupees from his owner. Any batsman who is scoring 50, individual 50, will get 2,000 rupees from Ahmed Khan. Meanwhile, there's a correction chance of a catch. Amit Damsekar, oh my dear, I could not believe my eyes. That was a simple looking catch. Captain would have taken a wicket on the very first delivery. Missed by Amit Damsekar. I can't believe my eyes. That he is the safest pair of hand. And I don't know how come he could not held on. With that, and even the third umpire is in act as there was a hit at the striker's end. So we are going to check as what is going to be the decision. There was an appeal for a run out at the striker's end. And third umpire now busy watching it on the screen. So the decision has been made. Batsman is safe as he has reached right on time up. And with this couple of runs, team total moves to 43. So that was a lucky escape. If he has to get little late, even by a second, then that would have been curtains for Ankur Singh. Very quick. Lucky escape for Ankur. Switch it into act and what a hit! Even it goes away from the spectator as well. Big six from Ankur Singh. Ankur doing his job for what he is sent top the order. And he is the ultimate hitter at the moment. Big six takes the team total to 49. Just a run short of half century for the team. And Ankur being the architect now for getting such a huge scoring run rate. So let's see what is going to happen. Captain getting the beating at the moment. Catch was dropped. Again ball takes the inner part of the bat. Goes straight to the keeper. And every six that have been hit by Ankur Singh will be hunting to Amit Damsekar as that catch will come in front of his eyes. Let's see what is going to happen. He will be praying. Another hit. And the result is going to be same. Oh my dear. Even it is missed by the spectator. Wanted to judge but could not judge it properly. Nonetheless, second six from the bat of Ankur Singh in this over after a drop catch. And all eyes will be on Ami. So big six takes the team total to 55. 50 up for KKJ Knight Riders. And what a way to get it by hitting a big six. Another hit. All the fielder is there. Oh my dear. 500 rupees. Ahmed Khan, please note you are. A player has taken a one-handed catch. 500 rupees. Asking that spectator to come over here and take your prize from Ahmed Khan. Cash prize of 500 rupees for one-handed catch outside the boundary rope. Team total moves to 61. What a hitter of the tennis ball. Another good strike straight to the fielder. Oh my God, Navdeep. And even it traveled the distance. What could have been a wicket. 2 times survival for Ankur Singh. And that boundary takes the team total to 65. So much drama happening out in the middle.
Ankur Singh is playing at the individual score of 42, just 8 runs away from taking those 2,000 rupees from Ahmed Khan. Be in the dugout, and spectators, please, you have to move from the dugout. Meanwhile, a cash prize of 500 rupees won by Mayur. And now it's time for me to take a little rest, inviting Ashok Chinaik with the further updates in national language. अहमद खान बाब मातसो यो आणि 500 रुपयाचे जे इनाम 500 थैंक यू सॅगी, धन्यवाद. कॉंग्रॅच्युलेशन मयूर. केन्ना केन्ना आमी टुर्नामेंट खेळटात आणि बेस्ट बॅट्समॅन बेस्ट बॉलर प्रायज जे इनाम आसता फूल टुर्नामेंट खेळून ते 500 रुपया आसता. तुवें फक्त आज हात भायर काडून 500 रुपया घेतिल्ले आसा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका. थँक्यू. उलय मरे कितें. थँक्यू हरीश सर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स मयूर. 4 ओवर का खेल समाप्त. 5वें ओवर की शुरुआत सतीश यादव सामने से फातोड़ा स्टेडियम की ओर से गेंदबाजी करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर, और अंकुर सिंह बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी. 5 छक्के अब तक, 1 चौका. सामने भरत अर्कस 5 छक्के 2 चौके जो बल्लेबाजी में. इस बार थोड़ी सी लोअर फुल टॉस, हल्के से गेंद को ड्राइव किया. इस बार मिड विकेट पर फील्डर तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, लेकिन तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का. एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 43 पर अंकुर सिंह बल्लेबाजी कर रहे. सामने भारत अर्कस 2 छक्के अब तक, 1 चौका बल्लेबाजी में 17 रनों पर कूद के अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए. फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए. आज कहीं ना कहीं शायद मैं अल जरगम क्रिकेट टीम की बात करूंगा. वो गेंदबाजी नहीं हो रही है, वो फील्डिंग नहीं हो रही है जो पिछले 2 दिन में बिल्कुल जो कि देखने को मिली थी कल के दिन में. आज फील्डिंग के साथ गेंदबाजी बिल्कुल वो नहीं दिखाई दे रही है. सामने से बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी हो रही है. दोनों बल्लेबाज बिल्कुल टूट पड़ चुके हैं गेंदबाजी पर, और इसी बीच में दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. फिर से खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, इस बार डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक सनसनाता दंदनाता छक्का. गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए. जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम की, 8 ओवर का मैच है, शायद 120-130 का टारगेट, एक बड़ा टोटल सामने बन सकता है मैदान पर. फिलहाल स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ 79, लॉस ऑफ 1 विकेट, 79 रन 1 विकेट के नुकसान पर. चौथा छक्का भरत अर्कस के बल्लेबाजी में, 1 चौका अब तक वो बल्लेबाजी करते हुए
और नॉन स्ट्राइकर इन पर बैटर है अंकुर सिंह। थोड़ा सा अपने फील्डिंग को लगा रहे थे, इसीलिए अंपायर ने रोका, डेड बॉल का इशारा। और सतीश यादव जिन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी की शुरुआत की थी, पहले ओवर में 2 चौके 1 छक्का लगा और वो खुद का दूसरा टीम का 5वां ओवर जारी रखते हुए इस बार छोड़ा, बल्ले को हटाया, जाने दिया गेंद को। इस बार वाइड बॉल का इशारा, थोड़ा सा लाइन पर भटके, गेंद अपटम से दूर थी इस बार। और जब तक विकेट कीपर के पैरों से टकराती गेंद शॉर्ट पाइन लेग पर आती गेंद को फील्ड करते, एक अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर आगे निकला, 80 रनों पर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। एक शानदार शुरुआत मैदान पर केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम, टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी। ओ पुल करना चाहते थे, सफल हुए थे, लेग कटर गेंद, लेकिन इस बार बिल्कुल चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के पास निकली। क्वालिफाई 1 मुकाबला जो जीतेगा अंतिम फेरे में फाइनल में प्रवेश करेगा। एक टीम को बिल्कुल मौका और बनेगा, लेकिन दोनों में से पसंद करेगी टीम कि बस अंतिम फेरे में प्रवेश किया जाए। एक तो इनाम बिल्कुल नक्की होगा, एक ट्रॉफी नक्की होगी। पुलर लेन की गेंद, इस बार गेंद निकली स्लिप की तरफ, और जब तक फ्लाइंग स्लिप पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर समाप्त होता हुआ टोटल ओवर 1, यानी 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 80 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला आज का आखिरी दिन, साउथ गोवा प्रीमियर लीग 2023, ढेर सारी इनामें और उसी के साथ दर्शकों के लिए बिल्कुल जो कि एक बड़ा इनाम। एक हाथ से अगर आप बाउंड्री लाइन के बाहर के गेंद को कैच करोगे तो 500 रुपए का इनाम मिलेगा, और एक इनाम जो कि बिल्कुल अभी अभी जो दर्शक लेकर बिल्कुल गए हैं, यह मौका जारी रहेगा दोस्तों आपके लिए। बाउंड्री लाइन से बाहर की गेंद को आपको कैच करना पड़ेगा, वो भी एक हाथ में। अगर एक हाथ में उस गेंद को कैच करोगे तो आइए हमारे कमेंट्री बॉक्स के साथ, और 500 रुपए का इनाम आप जरूर स्वीकार कर सकते हैं। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से। 5 ओवर समाप्त हुए, 80 रन टोटल 1 विकेट पर। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का। असलम शेख, उन्हीं के साथ सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक, दूसरी जोड़ी शिवचरण उर्फ बाबू दाबोलकर और उन्हीं के साथ सदगिरी नाइक। आज कमेंट्री बॉक्स में सागर गोस्वामी, हरीश काकोड़कर सर, मैं अशोक नाइक, और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जय भोसले। टेनिस क्रिकेट की पूरी टीम स्कोरिंग की जानकारी देते हुए विराज तेंदुलकर और हमारे ऑनलाइन स्कोरर रुद्रेश शर्मा, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे बिल्कुल हमारी जो कि पूरी कमेंट्री की पूरा जो कि कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल जो कि कप्तान मनोज सर, वो भी बिल्कुल हमारे पीछे इस मैच को बिल्कुल बड़े गौर के साथ देखते हैं। मनोज अंकल, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं आदरणीय 6x6 क्रिकेट टीम के को ऑनर सर तोहित भाई, आइए प्लीज, आपका स्वागत है। आइए प्लीज मंच पर तशरीफ रखिए, आइए प्लीज। तो बॉलिंग में परिवर्तन, अनुष केरकर दिखाई देते हुए गेंदबाजी पर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 80 रन टोटल 1 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का। ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर जो 3रे से 7वें तक, मुकाबला 8 ओवर का। अनुष केरकर इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार खेल किया है, इस खिलाड़ी ने अच्छी गेंदबाजी की है, हमेशा आरबी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम के साथ प्रतिनिधित्व करते हैं। छोड़ा, इस बार जाने दिया, सफल हुए थे ज्यादा इस बार, इसीलिए अंपायर ने बिल्कुल सही गेंद ठहराई। और एक बार फिर से हम शायद इशारा कर रहे, कॉल कर रहे 6x6 क्रिकेट टीम के को ऑनर सर तोहित भाई। आइए सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में, प्लीज आइए सर, मंच पर तशरीफ रखिए। और इस बार अल्टी पल्टी करना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिला। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी। इस बार
एक अल्टी पल्टी शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ और अनुश केरकर धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर एक स्लिप पर फील्डर है, एक कवर पॉइंट पर, एक स्वीप पर कवर पर है, ऑन साइड पर एक शॉट फाइन लेग पर है, एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक फील्डर। यह फील्डिंग की जमावट मैदान पर। फुल टॉस गेंद इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, हवा में गोता जरूर लगाया, गेंद से दूर थे, गेंद चले गई लॉन्ग ऑफ सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है मंच पर एक बार फिर से सभी मान्यवरों का। और अंकुर सिंह खुद के व्यक्तिगत 49 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, और हमारे डीजे मैन के साथ थोड़ी सी चर्चा। डीजे मैन आप भी बिल्कुल तैयार रहिए बीच बीच में सुमधुर संगीत के साथ। और 2000 रुपए का इनाम मिलेगा अगर 50 रन बनाते हैं तो। और इस बार पीछा किया तो ऑप्टम से बाहर कट होकर और बाहर की तरफ निकली, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम को बिल्कुल सही रास्ते पर दिखाई दे रही है, बिल्कुल अच्छे स्कोर की और कदम बढ़ा रही है। और जिस तरह से बल्लेबाजी अभी भी आने वाली, बाकी ये 2 बल्लेबाज बिल्कुल लाइन में टच में बल्लेबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद हवा में, शॉट देखना होगा, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर जरा जोरदार तालियां। 50 रन जो कि खुद के व्यक्तिगत पूरे होते हुए एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अंकुर सिंह की। 2000 रुपए का इनाम का हकदार। और अंकुर सिंह 50 रन बैट दिखाए अंकुर सिंह। ओके, थैंक यू, बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी। अनुश केरकर अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर, और इस बार बाहरी किनारा, पॉइंट पर मौका, लेकिन थोड़ा सा गेंद से दूर फील्डर। शायद इस आउटफील्ड पर आपको बिल्कुल कोशिश पूरी तरह से करनी चाहिए। आप डाइस लगा सकते हैं क्योंकि ग्रास है, ओरिजिनल ग्रास है इस मैदान पर। अपने शरीर को बिल्कुल झांक सकते हैं। आपने पहले दिन में अगर अब्दुल सलाम शकील को देखा होगा क्या किस तरह से फील्डिंग की थी, तो शायद मैं तो कहूंगा इस विकेट पर आप वो कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल रन स्कोर के साथ एक आगे बढ़ता हुआ टीम का टोटल पहुंचा 90 रन पर, एक विकेट पर 90 रन। दूर से खेला, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, लॉन्ग ऑफ सीमारेखा से बाहर एक बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। एक बार फिर से आपके लिए जानकारी, एक शानदार बल्लेबाजी अंकुर सिंह जो 50 रन बनाते हुए, और वो भी क्वालिफाई 1 मुकाबले में उन्हीं का साथ बढ़िया देते हुए। भरत अर्कस अब तक 5 छक्के भरत अर्कस के बल्लेबाजी में, खुद के व्यक्तिगत 35 रन पर। लेकिन शुरू में प्रदीप पाटिल बिल्कुल सस्ते में लौटे थे, तब लग रहा था कि दबाव बनेगा इस बल्लेबाजी पर, लेकिन सामने से अगर रोहन सालगावकर की मैं बात करूंगा तो उनके अलावा वो गेंदबाजी नहीं हुई, वो फील्डिंग नहीं दिखाई दी मैदान पर। टॉस जीता अलजरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, सामने बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी। 8 ओवर का मैच है, जो जीतेगा फाइनल में प्रवेश करेगा। टोटल स्कोर हो चुका है 90 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 96 माफ कीजिए 96 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर अभी भी बाकी, खुद का दूसरा। रोहन सालगावकर अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बढ़ती हुई साझेदारी देखना होगा इस ओवर में क्या होता है मैदान में। रोहन सालगावकर एक ब्रेक थ्रू दिलाते हैं अपने टीम को, या वही सिलसिला, वही बल्लेबाजी जारी रखते हैं मैदान पर। थैंक यू सर। इनामों के बौछार हो रही है मैदान पर। लगातार अगर 3 छक्के लगे तो 5000 रुपए का इनाम
जो कि जारी रखा है। तो हमारे थर्ड अंपायर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं। TennisCricket.in बहुत ही शानदार कैमरा वर्क गौरव सावंत और उनकी पूरी टीम का। शाम के दौर में एलईडी स्क्रीन पर भी ये मुकाबले बिल्कुल आपको देखने को मिलते हैं। सुरभि लाइट्स, और देखना होगा अंपायर का निर्णय क्या होता है मैदान पर। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, दोनों बल्लेबाज एक बड़ी साझेदारी। जो पहला विकेट 15 रनों पर आउट होकर वापस प्रदीप पाटिल 4 पर खुद के व्यक्तिगत। मुकाबला पहला आईपीएल की बिल्कुल धरती पर यह क्वालिफाई 1 मुकाबला। जो जीतेगा फाइनल में प्रवेश करेगा। टॉस जीता एल झरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम ने। पहले फील्डिंग करने का फैसला केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम को बल्लेबाजों को मौका दिया, और 7वां ओवर जारी। खुद का दूसरा रोहन सालगांवकर पहले ओवर में 5 रन 1 विकेट चटकाया था। ये खुद का दूसरा, टीम का 7वां। और देखना होगा थर्ड अंपायर की आंख बिल्कुल तो नॉट आउट। जो बेल्स गिर चुकी थी वो पहले ही गिर चुकी थी, इसलिए बिल्कुल चलो थैंक यू। बिल्कुल सहमति होती हुई दोनों बेल्स जो पहले गिर चुके थे। तो इस बीच में स्कोर बोर्ड पर स्कोर वहीं पर रुका हुआ 98 टोटल 98 रन, 2 रन पीछे 100 रन से पहले इस मुकाबले में। सामने अंकुर सिंह नॉन सेकंड एंड पर बैटर है भारत अर्कस। रोहन सालगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर बहुत ही शानदार गेंदबाजी। आगे निकले डाउन द ग्राउंड इस बार, और जब तक काउ कॉर्नर पर फील्डर आते गेंद को उठाते 100 रन इसे के साथ 2 रन के साथ पूरे होते हुए केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के 100 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सामने गेंद को लॉप किया इस बार मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद निकलते हुए 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। आज दोपहर के आते पर थोड़ी सी गर्मी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन क्या बल्लेबाजी की इन जोड़ी ने। एक बड़ी साझेदारी मैदान पर बनते हुए जो पहला विकेट 15 रन पर, उसके बाद निश्चित रूप से एक अच्छी साझेदारी। अल्टी पल्टी करना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। रन के लिए निकले स्लिप पर, फील्डर जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते। लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और यहां पर हम आमंत्रित कर रहे हैं। आइए सर जुनेद भाई आइए, आपका स्वागत है। जुनेद भाई आइए प्लीज मंच पर तशरीफ रखिए। आइए आपका स्वागत है, थैंक यू। तो और एक रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। इसी बीच में रोहन सालगांवकर अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओवर पिच गेंद इस बार बढ़िया शॉट, गैप में खेला हुआ मिड विकेट बाउंड्री पर। फील्डर 1 रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छा शॉट था, अच्छी फील्डिंग थी। फिलहाल 1 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। स्कोर टोटल हो चुका है 106।
फुल टॉस देखना होगा इस बार मिड विकेट पर मौका बनेगा कैच का और फरदीन काजी मिड विकेट बाउंड्री पर कैच को हाथों में लपेटते हुए बड़ी देर के बाद एक सफलता मिलती हुई अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम को। लेकिन शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी, बड़े शॉट, लंबे लंबे शॉट देखने को मिले बल्लेबाजी में, अंकुर सिंह की बल्लेबाजी में, जो लगभग पहला विकेट प्रदीप पाटिल बहुत सस्ते में लौटे थे 4 पर, और आप देख सकते हैं जो कि रिप्ले पर 24 गेंदों में 60 रन की बल्लेबाजी, बहुत ही आतशी बल्लेबाजी अंकुर सिंह की। बिगुल बज रहे हैं, सिट्टियां बज रही है, जोरदार स्वागत अंकुर सिंह का। शानदार बल्लेबाजी, 24 गेंदों में 60 रन और दूसरा विकेट 116 रनों पर एक बड़ी साझेदारी 101 रन की। हो चुका है 106 रन, एक बड़ी साझेदारी बनी मैदान पर। 7 ओवर, आखिरी ओवर का कमेंट्री बॉक्स में चर्चा हो रही थी लगभग 120 की, और शायद उसी की और बढ़ रही है मैदान पर। केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम फिलहाल न्यू बैटर आ चुके हैं मैदान पर भरत अर्कस का साथ देने के लिए। प्रशांत गरत, आखिरी ओवर का खेल सामने दिखाई दे रहा है कमेंट्री बॉक्स की ओर से। अनुष केरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, अंतिम ओवर 8 ओवर का मैच है। अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स और उन्हीं के साथ केकेजी नाइट राइडर्स। कितना लक्ष्य रखेगी सामने, बस इस ओवर के बाद, इस ओवर की समाप्ति के बाद पता चल जाएगा क्या होगा टोटल सामने जीत के लिए 8 ओवर में। और अनुष केरकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट। आखिरी ओवर का खेल जारी, पहली गेंद अंतिम ओवर की। और बढ़िया शॉट इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर से दूर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। इस रन पर बल्लेबाजी कर रहे भरत का सामना करते हुए अगली गेंद का अनुष केरकर की गेंदबाजी का। फील्डिंग में कोई खास परिवर्तन नहीं मैदान पर। टॉस जीता अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम ने फील्डिंग करने का फैसला, सामने मौका दिया केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम को। लेकिन मैं तो कहूंगा बिल्कुल फील्डिंग और गेंदबाजी, लेकिन देखना होगा वो कमी आपको बिल्कुल बल्लेबाजी में पूरी करनी पड़ेगी, और बल्लेबाजी है इस टीम की ताकत है। और खास करके बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने फरदीन काजी पर बहुत कुछ दारोमदार रहेगी। ऑन साइड पर मारना चाहते थे, शॉट पाइन लेग पर फील्डर मौजूद, 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। अंपायर का इशारा लेग बाइज का मिलता हुआ, और फिलहाल 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के। पहली गेंद पर बड़ा शॉट, बाद में कमबैक गेंदबाज का, सामने प्रशांत गरत न्यू बैटर। अब ओवर पिच गेंद, एक लॉफ्टेड शॉट, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स से ऊपर गेंद आती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। और इनाम है जो लगातार अगर 3 छक्के लगाते हैं तो 2000 रुपए का इनाम रखा है, जो इस ओवर के लिए बल्लेबाजी करने वाले जो कि टीम के लिए, और वो इनाम रखा है केकेजी अहमद भाई जिनके ओर से। थैंक यू सर, आपका एक बार धन्यवाद। तो 1 छक्का लग चुका है, अभी भी 2 लगाने पड़ेंगे 2000 रुपए इनाम पाने के लिए।
राइट आर्म ओवर द विकेट। अनुष केरकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से अगली गेंद लेकर। ओ बढ़िया शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट, हाफ वॉली पर लेकर एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट। आप निश्चित रूप से YouTube पर रिप्ले जरूर देख सकते हैं किस तरह से थोड़ी सी ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी गेंद के बिल्कुल जो कि मेरिट पर निकले, पिच पर पहुंचे और बल्ले के बीचों बीच एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट, 6 रन के लिए। 2 छक्के लगातार, अगर तीसरा लगा तो मिलेंगे 2000 रुपए का इनाम। सैगी सर 2000 ना, 2000 रुपए इनाम, जो कि 2 या 5 दोस्तों फिर से जानकारी दे दो, 2 पक्का, 2000 बिल्कुल। थैंक यू सर। 2000 रुपए का इनाम। 2 छक्के लग चुके हैं प्रशांत गर्ग की बल्लेबाजी में, अनुष केरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, और देखना होगा अगर इस गेंद पर बड़ा शॉट लगा तो 2000 रुपए। एक बार फिर से दर्शकों आपके लिए भी जानकारी, एक हाथ से कैच करो बाउंड्री से बाहर की गेंद को, और आप भी आइए 500 रुपए का इनाम लेकर जाइए। ओ इस बार ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद, एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे, बिल्कुल चूके गेंद के बारे में पूरी तरह से, और 2000 रुपए इनाम से वंचित जरूर हो गए। 125 रन टोटल 2 विकेट के नुकसान पर, 125 लॉस ऑफ 2 विकेट। शानदार बल्लेबाजी, अंकुर सिंह ने बनाए 60 रन, भरत अर्कस, ओ ये पटकी हुई गेंद, इस बार देखना होगा शानदार फील्डिंग, मिड विकेट पर तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट करते, थ्रो करते, बैकअप जब तक होता, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की ओर, हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर। एक तो जरूर बना है, रनआउट के लिए ये अपील हो चुका है, 1 रन तो पक्का है, दूसरे के लिए ये रनआउट का इशारा है, और देखना होगा, हम जरूर जांच जो कि परख करें, उसके बाद निर्णय होगा। आउट, तो एक ही रन मिलेगा स्कोर में। तीसरा विकेट चला गया केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम का। 13 पर खुद के व्यक्तिगत प्रशांत गर्ग 2 छक्के लगाए, 60 रन बनाए 24 गेंदों में। अंकुर सिंह ने 6 छक्के लगाए भरत अर्कस की बल्लेबाजी में, 1 चौका लगाया भरत अर्कस ने। शानदार साझेदारी बनी दूसरे विकेट के बीच में, जो पहला विकेट 15 पर, दूसरा 106 पर, और तीसरा विकेट जो निकलता हुआ टीम का। टोटल स्कोर एक इनाम जारी हो चुका है। दूसरी इनिंग की जब शुरुआत होगी, अगर फरदीन काजी का विकेट पहली गेंद पर अगर गेंदबाज लेते हैं तो पहले ओवर में, पहले ओवर में अगर गेंदबाज ने फरदीन काजी का विकेट लिया तो मिलेंगे 5000 रुपए का इनाम हमारे अहमद भाई जिनके ओर से। थैंक यू एक बार फिर से अहमद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं मैदान पर, दूसरी इनिंग की शुरुआत। 126 टोटल स्कोर, और टारगेट रखा है 127 का। टोटल स्कोर 126, टारगेट 127 का। 42 रन बनाए भरत अर्कस ने, अंकुर सिंह ने बनाए 60 रन। अगर गेंदबाजी की बात की तो रोहन सालगांवकर की बात छोड़ दी जाए तो बाकी वो प्रभावित नहीं किया गेंदबाजी ने। रोहन सालगांवकर ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, 2 विकेट चटकाए उन्होंने, और खेल पहले 8 ओवर का समाप्त हुआ। टोटल 126, टारगेट 127 का। अगर पहले ओवर में फरदीन काजी का विकेट मिला तो इनाम बिल्कुल आपके लिए होगा जरूर, जो एक बड़ा इनाम रखा है। देखना होगा। फिलहाल रुक करते दूसरे इनिंग के साथ कमेंट्री बॉक्स में आइए, जुड़ जाते सर हरीश काकोडकर के साथ, और उन्हीं के साथ जुड़ जाएंगे जो कि आखिरी पल में जय भोसले।
were hammered and tonked all over the park for sixes by the batting of Ankur and Bharat Tarkas. Together amongst them, they scored more than 100 runs. That was a beautiful partnership. And it looked as if they might go for even more runs. But 127, a mountain of 127 has to be chased now by the players, the batsmen of Al Zargam Royal Challengers. Well, looking at the wicket and during this time when the sun is in full flow, I guess it's quite possible to chase. But the only thing, the bowling of KKG Knight Riders is much better than the bowling of Al Zargam Royal Challengers. But if you see the batting, then they have got the batting depth. Al Zargam Royal Challengers, they have got a strong batting order with number 8 to number 9 have the capacity to hit the boundaries and sixes. So I don't think so there is going to be a second approach here. They know what is up for them in this match. They just have to go after the bowling and go strongly. Well, we have seen some catches being dropped in the fielding as well. Ahmed Damshekar dropped a seater, and one more catch was dropped at the long off region. One was dropped by Navdeep, which should have been taken. So lots of chances given to the batsmen, and they have taken the advantage of that. And that's the reason the score is 127 target in 8 overs. With this man on the screens, it's very much possible. A class of his own, the talent, supremacy that this man has. Fardin Qazi, and he's out of the very first ball. Out of the very first ball. 5,000 rupees. 5,000. Yes. 5,000, Ankur. पाच हजाराचे इनाम दवरिल्ले 5,000चे जर फर्दीन काझीक पहिल्या ओव्हरीक काडटा आनी म्हाका दिसता अंकुर सिंगान पहिल्याच बॉलान काडिल्लो आसा आनी पयले फाटी आमी मनीस पळयता 5,000 वता पूण भरपूर खूश जाला 5,000 वता म्हणून 5,000 वताचे दुख ना अहमद बाब खानाक मनांतल्यान 5,000 दिल्ले आसा. So Ankur has earned 7,000 rupees in this match itself. 7,000. You can see that the replay. What a start given. Wonderful line length just outside. He went for the big drive and it was in the covers. Second attempt, the fielder takes the catch. A rollicking start. Saish taking that catch. Very good catch from Saish. Now the bowling attack will be relaxing a bit. Karan Mori. This time he swept it away, but there is a man placed for that sweep. And you see that fielding, they kept 3 men at the backward of point for him, 1 in the short covers. They have done the homework. They have absolutely done the homework in a perfect way against Fardin Qazi. And it has come right for them. It's right in the first over. And wide signal here by umpire. Very well left here by Ahmed Damshekar. This is the time that AB Ahmed Damshekar has to come good here. He has to play a good knock. It's not about just 1 6, 2 6s or 3 6s. It's about a good knock of 30 plus runs at least from his bat. Ahmed Damshekar used to like the jersey number 99, but now he's wearing the jersey number 69. This time very nicely played, chance of a run out, but they made it well in. Watchfully played by Ame. That should be planning. It's not about just because Ankur Singh and Bharat Tarkas has hammered all the bowlers. They also can go after the bowling. They have to have planning. They have to target the bowlers.
and go after them. Ankur Singh has started so well in this match, not only in batting but now once again taking the all important wicket in this run chase. This is very nicely played. This is in the gap and goes for 4 runs. Timed very well here by Karan More, getting a boundary finally. They were waiting to get a boundary and a 6 in the first over. And a good shot over a wide long off region fielder. Well, Ankur Singh was very alert after that catch was taken by the fielder. He was immediately pointing me. Yes, I thought sometimes the bowlers just raise their hands like 5 fingers, but that's when a 5-wicket haul is taken. But this time he was showing 5 fingers because it was 5,000. That's it, outside edge and catch taken. One more wicket going down. It's the day of Ankur Singh. You just cannot take anything away. The man has done a fabulous job and is continuing to do so for KKG Knight Riders. Both important wickets. They have got a 2 outstation player and 2 big players, Fardeen Qazi and Karan More. I was watching the replay here on Tennis Cricket, and you see what Ankur Singh was doing. He was trying to glide the ball away from the right-hander. Here comes the replay once again. Karan More was trying to play that on the leg side first. He shuffled across. He still bowled it wide, got it away from the right-hander, got an outside edge and taken down in the gully region for a good catch. Gopal Gaus, the captain of the side, easily taking that. If another 5,000 was kept here for another wicket, then Ankur Singh will have got 10. तसंच लॉंग ऑनाच्या दिशेन म्हळ्यार सध्या थर्ड मॅनाच्या दिशेन सी इजीचो लोगो आसा. सी इजी मुश्ताक बाब अहमद हांची कंपनी आणि त्या सी इजीचो लोगो आसा ताजेर जर तर कोणें मारलो जाल्यार 5,000चे इनाम घोषित केल्लें आसा मुश्ताक बाबान. लोगोचेर डायरेक्ट लोगोचेर फिशाचो जो लोगो आसा त्या लोगोचेर पडपा जाय. सारखे अर्जुनान जसो नुस्त्याच्या दोळ्याचेर बाण मारिल्लो तसो तुमी बाण मारपा जाय 5,000 घेवपाक. Here comes the next over. Gopal Gaus, the captain of the side. Was going for the switch hit. Appeal there from behind the wicket. No reaction from the batsman. Sometimes when the batsman reacts, he knows whether he has hit it or not. It's more sort of excitement from behind the wicket. So what Ami has to do here? I think the switch hit. I think with the fielders inside, the way Ankur Singh has batted with the switch hits is definitely on, but he has to select the right ball to play that switch hit. This time finding the gap. Is it going for 4 runs? No, very well fielded and 2 runs comfortably taken. Well, Gopal was very alert. That Ame was slow off the box while taking that first run, and he threw at the striker's end. Ame Damshekar is a very good leather ball player, and he has played a lot of leg spinners in his career. That time, the asking run rate is never around 15 runs per over, but here in tennis ball cricket, the ball dries up very easily. They soak up very fast, and the asking run rate, which with each and every dot ball with a single climbs up.
What a ball, and wide signal here. It turned way too sharply, says the umpire, and a wide signal. Gopal Gauss is not happy, but umpire is saying this is too much of turn to handle and going outside the guideline. Right now, KKG Knight Riders are on the top, but one innings from Al Zargam's side can change this match. You can see this is a perfect length, perfect line, and with the keeper standing in front behind the wickets, it's very difficult to come down the track as well. So what are the options? This mandatory batting power play so far has gone totally in favor of the bowling side. Score at the moment is 10. Navdeep Gaonkar has come on to give the company. This time, this is in the air. This might be catch, and not a convincing shot. Once again, he goes for the second. This ball, the timing was missing. It just went high, not got the distance. Getting once again twos. Ones and twos. Well, KKG will be happy because these are the power play overs, and if only 12 runs have come, a credible, super job has been done by the first two bowlers. This time Amir strikes. This time it's a 6 runs and 500 rupees. One more 500 rupees. I think the spectators are very much ready. Spectators are very much aware that 500 will be up for grabs. And I guess all the spectators are moving with one hand on the ground. One hand they are moving. And Afridi from Sharjah boys. काल 200 घेतिल्ले आणि आज 500. And that's again a good shot. Wonderful shot here from Amit Damshekar. This is good batting. He is showing a little bit of his talent at this stage. After 2 overs, the score is 22 for the loss of 2. Ahmad Khan, KKG's owner, Ahmad Khan. Ahmad Khan म्हणता कॅन्सल केल्ले आसा हे सारखे न्हू कारण प्रायज आसा जाल्यार सारखे अनाउन्स करपा जाय आणि 500 फक्त 1000च गेल्ले आसा ट्रॉफी म्हाका दिसल्या जिखलो जाल्यार तो खूश आसतलो सो म्हाका दिसना ताणें फाटल्यान सरपा जाय कारण स्पेक्टेटर चडान चड 3 ते 4 कॅची धरपा शकता दिसाक चड धरपा शकना तो म्हणटा एकच मॅचीन 2 धरल्या. So once again back concentration on this match. Comes Vinod Wilson, very nicely played in the covers. Should be only a single. There is a deep covers placed for that shot. What are the options they have? One thing the batsman should have switch it. Vinod Wilson is a street smart cricketer. He is a very good bowler, very good all-rounder, and plays a lot of cricket, especially leather ball cricket. He plays. And he knows what the batsman is trying to do and what is the asking run rate. He can bowl that Yorkers consistently. I have seen him playing some good knocks, some handy knocks with the bat, and he can tongue the ball to all the parks and also can be handy with the ball by bowling those 2 overs whenever required by the team. He has timed it well and catch dropped.
A chance given here to Ahmed Amshekar, but a good effort there from the fielder. He was coming in, diving forward. Not easy when you are coming in front. The ball sometimes when you are diving just pops out of your hands, and nothing short of the effort here. It's not an easy catch, mind you. That's a good shot. Should be a boundary right in the gap. Lovely looking shot. Great timing and a great punch from Navdeep Gaonkar. They need these two Goans to come on top of their game here and need to come early as well, fast as well. Cannot take too much of time. Asking run rate climbs after each and every over. At the moment, the score is 28. Two balls left of the third over. Once again, a good shot. Might be a catch. No. 4 runs. So 2 boundaries of 2 balls. The ball bouncing more than the height of Ankur Singh. He should have, I felt that should have come for the catch. But finally, a boundary here to the batting side and the batsman Navdeep Gaonkar. That will give him some sort of confidence. Let's see whether he can go for one more one. Score moves on to 32. Just 32, third over in progress. Oh, that was a full toss ball. He wanted to play it in the covers. Once again, this time missing it. He knows, you can see the reaction, but a single to finish this over number 3. And the score is 3-3 for the loss of 2. This is the second call for the toss. Tossa खातीर दुसरो call हो Oxford Titans आणि Dynamic Royals. Captains मातसो tossa घेयो. Second call. After, let's see who is going to be the bowler here. So Gopal Gaun's looking to finish his overs and quota of 2 overs. Both the wickets were taken by Ankur Singh, and Gopal Gaun's very well knows we have to break this partnership. Although it's not scary at the moment, but with 5 overs and almost close to 90 plus runs required, there comes to around 20 runs per over, close to 20 runs per over. This time that's a good hit. This should be 6 runs. Where is the ball? And he's out. Oh my God, I thought the ball has gone for 6 runs, but it was high in the air and it came down fast. Catch taken pretty well in the deep square leg region, and a wicket here for Gopal Gaus in the first ball of his second over. So final call here for Oxford Titans captains and Dynamic Royals captain. जर तुम्ही येनात जाल्यार 6 ओव्हरीची मॅच खेळतले. Please take a note. The next match will be of 6 overs if you are not coming for the toss. At least one captain should come here. आम्ही जर तर एक कॅप्टन आयलो जाल्यार त्या कॅप्टनाक आम्ही टॉस हँडओव्हर करतले जर दुसरो कॅप्टन येना जाल्यार.
So in comes Shreyas. Shreyas Kadam. So Gopal starts off very well. Navdeep is back in the pavilion once again. Gopal. That's a good ball. He knows that's a perfect ball that he bowled. He knew what Shreyas was trying to do. Coming, shuffling across and trying to play that slog sweep over square leg region. He bowled a full ball just outside the leg stump and ball turned it away sharply. The leg was there of Shreyas. Otherwise, it would have been clean bowled. Smart thinking, very smart thinking from Gopal Gaus. So now both the captains have come. Both these captains want to play 8 overs match, so they have come immediately. Mukhtar Qadri and Syed Badi. So again going for the switch hit. Looking at the way he was going for the switch hit, doesn't look like to be natural switch hitter. Ankur Singh, we have seen how in authority he was hitting the switch hit. He may be looking to practice a lot. You need a practice for the switch hits. So now we are... This is in the air. That's wonderfully tossed up delivery. And Shreyas also goes back in the pavilion. Gopal Gaus strikes. So we are here for the toss ceremony. Toss is going to be... First, uh, we have to play our best 8 overs over there. Now we don't know second batting might be in light or not. That's why we cannot take a chance. That's why we are taking a batting. This is a very surprising decision as 8 overs match and most the toss winning captain, they always try to bowl first, but very much surprising. All captains have different strategies anyways. Best of luck for you. But the toss is not in your favor, but still looks to be you were expecting that you are going to bat, but very surprising decision. So what is your say about it? Yeah, actually we wanted to bowl first, and luckily Mukhtar bhai won the toss and still he gave us bowling. So we have to bowl our heart out, and this is the quarter final and important match as a final. We have to play as a final. So this is eliminator number 1. The team winning will get one more chance and will step ahead and will be playing against the losers of this qualifier. So what do you think as you are bowling first? What will be the target in your total to restrict the Oxford Titans? Because this is also a very good team. So what is the figure in your mind that will be comfortable for you to chase? Like we have to restrict them as much low score as we can, and like we have to bowl really well, and we have to think a particular match at a time. Okay, but they're not going to ask you much because those are the strategies that you have to plan. It's time to take a photograph. Thank you, Segi. And look at the variety of bowling attack of KKG Knight Riders. They have got one left arm medium pacer. They have got a wonderful leg spinner. They have got a wonderful right arm medium pacer. And still 2 options we are yet to see. So far the variety is so good, and that's the reason why it's a very strong bowling unit. That's a good shot. Ahmed Damshekar is fighting a lone battle here. He can still do wonders, not only here, but he can get the form, he can get the timing back, and still there are matches. There is also one more chance. So all the batsmen who are coming in, they first should think of the victory. If not, then they should think that yes, if at all we are losing here, we should get an opportunity, we should play well, we should bat well. That will give and raise the confidence in the next match that they are going to play. After 4 overs, the score is 40. Just 40. It is going at 10 runs per over. Not a bad total, but the asking run rate is so much that even 10 runs per over is looking so small. With 10 runs per over in 8 overs, they can get at the most 80. So that's not going to take anywhere because it is 127 on the board to be chased. It's very good actually. Even in IPL we see many times not only the players of KKG Knight Riders will get rest,
for the finals, if at all they are going to win this one. There is still a long way. 50% of the match is over. 50% in this inning still left. But if at all they go on to win, their players will get rest, and they can wait for that finals and watch other teams playing. And teams like Al Zargam or Dynamic or Oxford have to play 3 matches and win 3 matches if they have to win the title. This time wonderful drive, but there is a man in the covers region. Well, I saw that ball from Gopal Gaons, which got a wicket of Shubham. You need to have Shreyas Kadam. You need to have guts. You need to have guts to bowl that flighted ball that is rarely seen nowadays. That art has gone disappeared, but Gopal Gaons has still kept it alive. And he troubled that batsman with the flight. He went for the slog sweep, and good catch taken. So all the credit goes to the bowler over there. Wrong ball being used here, or tried to play that sweep shot. The intentions, I always say regarding the switch, it should be at the last moment and you should have quick hands. Glenn Maxwell does it very good, in a good way, does it at the last moment. Kevin Peterson was the master of it. Warner also plays it in good ways. Nowadays, modern cricketers in each and every game, switch it has become an important asset, important tool for any of the batsmen to trouble and make hardships for the bowler. So again, trying to hike that ball over the mid-wicket region. Nothing happening here for the batting side. Welcome Royal Challengers. Yes, some moment of brilliance with 2 sixes so far from Amit Amshekar, but it's not moving at the pace to win them this match. This time very nicely hit, no one there. This is timed well, and a straight hit. 6 runs. Wonderful straight hit from Anush Kirkar. This time he never intended to play it across. Straight bat is better, he says, and giving the maximum return. 48 now the score moves on to. This time in the air, this should be catch. Fielder coming, and all the catches has been taken here by the fielders of KKG Knight Riders. They are taking the catches, and that's the reason. One more wicket, that is the 5th wicket going down at the score of 48. 48 for 5, 5th over in progress. Some beautiful Kokani songs, Kataras. We as Goans love it, and now it's an opportunity for everyone to listen to a few of those. Meanwhile, Rohan Salgaonkar, very good all-rounder, especially a bowling all-rounder, done a fabulous job with the ball. Now comes at number 7 spot, 5 down. Oh, he plays a good shot for 6 runs. That was full toss and hits it on the screen. This is Rohan Salgaonkar. He is not only capable with the ball, but he is with the bat as well. And that's the reason why I say Al Zargam is a very good side. They have got good batting. The problem is the bowling department. They need to correct it as fast as possible in the next match. Otherwise, it's going to be difficult for them against some strong teams. Meanwhile, I will hand over the mic. I will give the mic to a commentator who has come all the way, especially today, from all the way from Banda, for the viewers on tennis cricket, because they had told us that they need a commentary in Marathi.
as a lot of spectators joining, watching the South Goa Premier League from Maharashtra. So this is for the viewers of Maharashtra. Here comes Jay Bosle for his commentary in Marathi. सर्व क्रीडा रसिकांचं या क्रिकेटच्या मैदानावर हार्दिक स्वागत. 5 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 54 धावा धावफलकावरती 127 धावांचा पाठलाग या मैदानावरती. पंचांचा इशारा येतो बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा. या मैदानावरती अजूनही उरलेत 18 चेंडू आणि 18 चेंडूमध्ये मोठी धावसंख्या तुम्हाला गाठायची आहे आणि मोठी धावसंख्या गाठण्यासाठी तुम्हाला मात्र समोरच्या गोलंदाजावरती तुटून पडायचं आहे, कारण त्यानंतर तुम्हाला निश्चितपणे एक संधी जरूर मिळेल. मात्र तत्पूर्वी बॅटिंगचा सराव करण्यासाठी हे 18 चेंडू तुम्हाला महत्त्वपूर्ण असतील. 8 षटकामध्ये तुमच्या गोलंदाजाने खराब कामगिरी केली आणि त्याचा फटका तुमच्या संघाला बसलाय. मात्र त्याची कसर या ठिकाणी बॅटिंगमध्ये तुम्हाला भरून काढायची आहे. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि तब्बल 73 धावांची आवश्यकता. डोंगरा एवढी धावसंख्या. मात्र डोंगर चढताना ताठ मानेने वर चढा, कारण कोणतंही यश तुम्हाला सहजासहजी तुमच्या डोक्यावरती सोनेरी मुकुट राखू देत नाही आहे. आणि तुम्हाला जर सोनेरी मुकुट राखायचा आहे तर डोंगर चढून ही धावसंख्या तुम्हाला पार करावी लागेल. स्विंग अँड मिस, बऱ्यापैकी चेंडू गुडलिंग स्पॉटच्या जवळपासचा, बॅट हवेत फिरली जाते. विकेट किपर बाकीचं सोपस्कार पूर्ण करतोय. अंकुर सिंगने अवघ्या 24 चेंडूचा सामना करत तब्बल 60 धावांचा पाऊस या मैदानावरती पाडला आणि त्यानंतर मात्र त्याच्या त्या फलंदाजीमुळेच बॅकफुटवर ढकलला गेला तो समोरचा संघ. नितेश हा गोलंदाज ऑफस्टमच्या बराच बाहेर विकेट किपरला चकवतोय, बॅट्समनला चकवतोय. पंचांचा वाईडचा इशारा येतोय. वाईडच्या या टोटल मिळतील 5 धावा आणि या 5 धावांनी धावसंख्या मात्र पुढे सरकते येते 59 धावांवरती. 127 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. अजूनही निम्म्या धावांचा टप्पा गाठला जात नाही आहे. क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं मैदानावरती तुम्ही जे कराल त्यावरती तुमचं भवितव्य अवलंबून असतं. तुम्ही काल काय केला, त्याच्या अगोदरच्या दिवसात काय केला, त्याहीपेक्षा वर्तमान काळात तुम्ही कशा पद्धतीने आपल्या आघाड्यावरती काम करता त्याच्यावरती विजय आणि पराजय हा तुमचा निश्चित असतो. परत एकदा आडव्या बॅटचा फटका, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक मिडॉनच्या दिशेने चेंडू जातोय. परती होईल तोपर्यंत केवळ सिंगल मिळते. सिंगल बरोबर एकूण धावसंख्या 60 वरती परावर्तित होते. अजूनही 67 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. तब्बल 127 धावांचं एक भलं मोठं आव्हान या क्वालिफाईड 1च्या सामन्यामध्ये. जो जिंकेल तो थेट फायनलमध्ये, जो हरेल त्याला एक संधी असेल एलिमिनेटर राऊंडमधील विजयी झालेल्या संघाविरुद्ध क्वालिफाईड 2 मध्ये खेळण्याची. परत एकदा थोडासा आखूड पद्धतीचा चेंडू, गॅप मधून चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी बऱ्याच वेळानंतर निघतोय हा चौकार. म्हणजे निम्मा टप्पा गाठला जातोय. ही अपेक्षा होती ती 4थ्या षटकात, मात्र तो निम्मा टप्पा गाठला जातोय. तो 6वं षटक अर्थात बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक या मैदानावरती सुरू असताना. 127 धावांचा पाठलाग आणि आतापर्यंत अवघ्या 64 धावा धावफलकावरती 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत एकदा खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न. पंचांचा इशारा वाईडचा. ऑफस्टमच्या बराच बाहेर असलेला चेंडू वाईडने एकेरी धावेची भर पडते. धावसंख्या पोहोचते ती 65 धावा धावफलकावरती. 127 धावांचा पाठलाग करताना नितेश परत एकदा बॉलिंग मार्कवरती आपल्याला दिसतोय. रोहन सालगावकर थोडासा सेपल होतोय. ऑफस्टमच्या बाहेर हवेमध्ये खेळतोय. चेंडू उंच उडतोय, कारंजा उडतोय. 3 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये चेंडू पडतोय. स्वतः गोलंदाज झेल घेण्यासाठी गेला होता, मात्र त्याच्यापासूनही बराच दूर चेंडू. तोपर्यंत केवळ 1 धाव मिळते. एकेरी धावेने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 66 धावा धावफलकावरती 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 127 धावांचा पाठलाग या मैदानावरती होताना
नितेश परत एकदा बॉलिंग मार्कवरती दिसतोय. मित्रांनो, ज्या म्हटलं जाचं ज्याची वेळ चांगली त्याची संपूर्ण कारकीर्द चांगली. जर तुमचा वेळ खराब असेल तर तुम्ही झाडावर जर जाऊन बसला तर खालून येऊन कुत्रा तुम्हाला चावल्याशिवाय राहत नाही. परत एकदा नितेश बॉलिंग मार्गवरती आडव्या बॅटचा फटका, बॅक टू द बॉलर, सुरेख क्षेत्ररक्षण, फॉलो थ्रू मध्ये निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. मी म्हणेन या ठिकाणून सामन्यामध्ये परतणं थोडंसं कठीण वाटतंय. मात्र पुढच्या सामन्यात तुम्हाला संधी मिळेल क्वालिफाईड 2 मध्ये, तोपर्यंत फलंदाजीची संधी करावीच लागेल. फलंदाजीचा सराव या ठिकाणी तुम्हाला करावा लागेल या मैदानावरती. एक मोठ्या क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन या TennisCricket.in च्या माध्यमातून लाखो प्रेक्षक या क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्ताने आपल्याशी जोडले गेलेत. परत एकदा नितेश बॉलिंग मार्कवरती आपल्याला दिसतोय. परत एकदा कव्हरच्या दिशेने एक सुरेख फटका, डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या पाठलाग केला जातोय. यावेळी मात्र चेंडूची सर्च होते, चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी. चौकाराने धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 70 धावावरती. आता उरलेत या इनिंग मधील अवघे 12 चेंडू आणि 12 चेंडूत अजूनही 57 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. सामन्यात जय पराजय कसा होईल याहीपेक्षा तुम्ही मैदानामध्ये लढला कसे, मैदानामध्ये तुम्ही काय केलंय यावरती क्रीडा रसिकांच्या नजरा असतील. आणि त्यानंतर मात्र आजच्या दिवसाचा जर विचार केला तर सर्वांच्या तोंडी एकाच खेळाडूचं नाव आपल्याला येताना दिसेल, तो म्हणजे अंकुर सिंग. गोलंदाजीमध्ये त्याने अतिशय, फलंदाजीमध्ये 24 चेंडूत 60 धावा कुठल्या, गोलंदाजीमध्ये अतिशय सुरेख गोलंदाजी करत 2 गडी तंबूच्या दिशेने रवाना केलेत. ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स कसा असावा आणि आपल्या संघाला संकटमोचकाची भूमिका त्याने बजावावी ते दाखवून देतोय. मराठीच्या समालोचनानंतर थोडं वळूया आता मालवणीच्या आकाशवाणी केंद्रावरती. देव बरा करो गावल्यानं जाऊया मैदानावरती. क्वालिफाईड 1 चो सामनो, आडव्या बॅटचो फटको मारूचो प्रयत्न, चेंडू मात्र जाता मेडन, चेंडू जाता पोलांडो, निर्धाव चेंडू समाप्त होता. अंकुर सिंग बद्दल सांगूचा झाला तर आज सकाळी रूम मधून निघताना कोणाचा तोंड बघून इल्लो या त्याकाच माहिती असताना. सामना संपल्यानंतर आमका सांगूक हरकत नाही, कारण यानंतरच्या होणाऱ्या सामन्यासाठी त्याच माणसाचा तोंड बघूची जबाबदारी असतील ती दुसऱ्या खेळाडूंची. परत एकदा आडव्या बॅटचा फटको, चेंडू मात्र जाता मेडन, चेंडू जाता पोलांडो आणि तुम्ही आमच्या उजव्या बाजूक बघतात भोपूचे आवाज, कॅरेबियन बेटावरती इल्याचो भास निर्माण करणारो ह्यो आवाज तुमका बघूक मिळतलो तो त्यांच्या संघाच्या समर्थकांचो. एक मोठी देखणी क्रिकेट स्पर्धा या मैदानावरचा विचार केलो तर परत एकदा तसोच चेंडू, बॅट फक्त फिरयता. मालवणी भाषेत एका म्हटलं जाता बॅट्समन फक्त वलयता. चेंडू जाता मेडन, चेंडू जाता पोलांडो. धावसंख्या मात्र एखादा डंपर चिखला धृतान बसावं तशा पद्धतीने धावसंख्या स्थिरावलेली फक्त 70 रन्स वरती. आता फक्त गरज असा ती या डंपराक टोचन करूची. परत एकदा स्लोवर 1 पद्धतीचा चेंडू, फ्लाईट थोडीशी दिलेलो हे चेंडू डीप कव्हरच्या दिशेने खेळला जाता. केवळ सिंगल मिळता, सिंगल बरोबर धावसंख्या मात्र पुढे सरकता. धावसंख्या पोचली ती बऱ्याच कालावधीनंतर 71 रन्स वरती. 127 धावांचा पाठलाग करूचो असा म्हणजे मालवणीत म्हटला जाता मुलाम्याचा नाना आणि तालाशिवाय गाना एका सध्याच्या दुनियेत कोणच विचार नालाय. हवेत खेळलेला फटको, कारंजा उडता, आणखी एक कलाम लागता, 100 गडी तंबूच्या दिसेन डीजे. जर 23 आणि दुसरं सीझन आणि या जर मैदानावरती बघू गेल्या 4 दिवसापासून तुमका या मैदानावरती रंगीबिरंगी कपड्यामध्ये खेळणारे खेळाडू दिसतात. म्हणजे जेणेकरून मे महिन्यात मध्ये होणारी IPL ची स्पर्धा त्याच्याऐवजी ही मिनी IPL ची स्पर्धा तर या मैदानावरती भरली जाऊन नाही मा हाच भास करून निर्माण देणार ही क्रिकेट स्पर्धा या मैदानावरती बघू मिळतात. आणि ती लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची किमया TennisCricket.in च्या माध्यमातून गौरव सावंत यांचे तमाम सहकारी साकारताना दिसत आहेत.
परत एकदा हलक्याच हाताने खेळून काढलेला चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने जाता चेंडू जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक उचलता तोपर्यंत एकेरी धाव मिळता आणि एकेरी धावेन धावसंख्या मात्र 7 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 72 धावा धाव फलकावरती. या षटकात अंकुर सिंग केवळ 2 रन्स खर्च करतात आणि एक गडी तंबूच्या दिशेने रवाना करतात. भव्य अशी ही क्रिकेट स्पर्धा मित्रांनो. जर तुम्ही TennisCricket.in माध्यमातून यूट्यूबशी जोडले गेला असाल तर ही स्पर्धा बघा, ट्रॉफीज बघा. या स्पर्धेतले ट्रॉफी जर बघितलात तर एखाद्या मोठ्या 20-25 लाखाची क्रिकेट स्पर्धा असतात तशा पद्धतीचे ट्रॉफी आणि तशा पद्धतीचं आयोजन या मैदानावरती तुमका बघूक मिळतला. गोवा राज्यातील ही सर्वात मोठी क्रिकेट स्पर्धा, संपूर्ण दर्जेदार आयोजन, कॉमेंटेटर दर्जेदार, लाईव्ह दर्जेदार आणि मान्यवर सुद्धा दर्जेदार अशी क्रिकेट स्पर्धा या मैदानावरती बघूक मिळतात. जाऊया शेवटचा षटक अर्थात इनिंगचा सांगता करणारा, ज्याका मालवणी भाषेत भैरवी घालणारा षटक आणि शेवटचा षटक घेऊन येतात तो प्रदीप पाटील. फलंदाजीमध्ये जास्त काय करू शकत नाही, मात्र गोलंदाजीमध्ये हे 6 चेंडू अर्थात 72 धावा धाव फलकावरती. अजूनही बऱ्याच रन्सांचा पाठलाग करूचो असा, मात्र 6 चेंडूंचा उघ्या खेळ बाकी असा. मोठो फटको कारण जो उडता डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात, मात्र बॅकवर्ड पॉइंट वरती चेंडू जोपर्यंत जाता अडवले जाता एकच धाव मिळता. एकेरी धावेन या सामन्यात बद्दल बोलायचं झाला तर सामनो केवळ औपचारिकता शिल्लक असलेलो अशा पद्धतीतलं सामनो. या इराद्यान प्रेक्षक मैदानावरती उभे ठाकलेले त्यांच्या दृष्टीनं भ्रमनिरास करणारो ह्यो सामनो. हवेत खेळलेलो फटको कारण जो उडता सुदर्शन सारखो चेंडू फिरता क्षेत्ररक्षक चक्को देत चेंडू डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने सीमा पार जाता 4 रन्सासाठी. 4 रन्सान धावसंख्या मात्र पुढे सरकली ती 77. सातक्याचो डबल गेम या आकड्यांच्या खेळात आज सुट्टी असा, उद्या सातक्याचो डबल गेम खेळाक हरकत नाही. बॉलिंग मार्कवरती परत एकदा गोलंदाज दिसता प्रदीप. यॉर्कर लिंक पद्धतीचा चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने खेळलेला फटको क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये तैनात. परतीची जोपर्यंत फेक तोपर्यंत केवळ एकच धाव. आता उरलेत या षटकातले केवळ 3 चेंडू आणि धावसंख्येचा जर विचार केलो तर न सांगलेलाच बरा. फलंदाजाबद्दल बोलायचं झाला तर एकच खेळाडू फक्त अमेयान 27 रन्सांची खेळी केली. बाकीचे खेळाडू तू चल मैं आया अशा पद्धतीची फलंदाजी करत केवळ हजेरी लावण्याचं काम आणखी कलाम लागता, आणखी एक गडी बाद होता. कोळी गीता खूपच फेमस असतात. गोव्यातली कातरा लागली न नाचणार सुद्धा लागता आणि कोळी गीता लागली तर न नाचणाऱ्याच्या अंगात सुद्धा देवी संचारता असा बराच वेळ बघूक मिळता. म्हणून मैदानावरती ती मोठमोठे जेव्हा क्रिकेट स्पर्धा असतात गोवा राज्यात तेव्हा कातारा लागतात आणि महाराष्ट्रात मोठमोठे क्रिकेट स्पर्धा असतात तेव्हा कोळी गीतांचं तुमका बागुल भोव नाचताना दिसता. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असा. प्रदीप एक विकेट आपल्या संघासाठी प्राप्त करता आपल्या खात्यामध्ये. फुलटॉस चेंडू आडव्या बॅटचा फटको परत एकदा मिळान मिड विकेटच्या दिशेने जाणारा चेंडू अडवला जाता एकच धावेन. आता मात्र उरलो शेवटचो अर्थात इनिंगची भैरवी करणारा चेंडू, इनिंगची सांगता करणारा चेंडू. रोहन स्ट्राईक वरती दिसता. हे चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर. पंचांचा इशारा वाईडचो, ज्याका मालवणी भाषेत बादल चौधरी कायम म्हणतात बघता भजी आणि मागता वडे. एका रनचा धावसंख्या मात्र पुढे सरकली अवघ्या 79 रन्सवरती. 80 रन्सवरती आणखी एक गडी बाद होता. म्हणजे इनिंगची सांगता होता केवळ 80 रन्सवरती ही पहिली इनिंग संपता. म्हणजे तब्बल 46 धावांनी एका मोठ्या विजयासह फायनल मध्ये प्रवेश करता तो.
order at the number 3 position. Took all the pressure on himself, take the responsibility on his shoulder, and a beautiful half century that has fetched him even a cash prize of 5,000 rupees. And while bowling, he has started the bowling as well. Bowled a beautiful over, first over, and a wicket on the very first delivery, that too a priceless wicket. That also have fetched him another 2,000, so total 7,000 cash prize to be given by the owner of KKG Knight Riders. Ahmed Khan will be giving that cash prize after the Man of the Match trophy. So presenting you Ankur Singh, Man of the Match of the qualifier one. What a player to be included in the team. A better all-round performance, was not able to do much with the bat in the previous half. And even Ankur, take your cash prize of 7,000 rupees. 2,000 for blastering 50 and 5,000 for taking that wicket, priceless wicket. अंकुर एक मिनट, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, हालांकि लीग स्टेज में उतना ज़्यादा मौका नहीं मिला आपको, तो आज पूरा देखने को मिला, आपका खेल भी देखने को मिला और पूरा ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिला। कल रात क्या सोच रहे थे शाम को वापस होटल पे जाके? सर रात को तो हमने आराम से चिलिंग किया, ज़्यादा मैं सोचता नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं मतलब नॉर्मल रहता हूँ, सिर्फ यही खुद से बात करता रहता हूँ कि मतलब मैं कितना पॉजिटिव रह सकता हूँ ग्राउंड पे और प्लेयर्स को कितना रख सकता हूँ। और जो कि क्वालिफायर था, शायद उतना प्रेशर नहीं था क्योंकि और भी एक चांस मिल रहा है जो टीम लूज हुई थी, लेकिन अगर जीत जाते हैं तो आराम से आप बैठ के फाइनल तक आराम मजा ले सकते हैं। तो टीम मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था? नहीं सर, हमारे टीम ओनर्स और हमारी टीम के प्लेयर्स मतलब बार बार ये बोल रहे थे कि अगर हारते हैं तो एक चांस और था, और मैं लिटरली उन लोगों को यही बोल रहा था कि एक ही चांस है, आप जीतोगे तो इसके बाद 2 मैच आराम मिलेगा आपको। सो हमने वही प्लान किया, और रही रात की बात तो मुझको नींद नहीं आ रही थी, मैं ये सोच रहा था यार मतलब कितना और मेहनत करना है ग्राउंड पर और कितना हम कर सकते हैं मतलब बैटिंग बॉलिंग में, और अप्लाई और हम जीते। और आप अपने ओनर के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बहुत ही इंडिविजुअल प्राइजेस भी रखे हैं आपके, जो क्या बोल रहे हो, मेरे को अभी शब्द नहीं आ रहे हैं, पहली बार हिंदी में कर रहा हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वहाँ कैश प्राइजेस भी रखे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आपके फ्रेंचाइजी और आपके ओनर के बारे में? नहीं, बहुत अच्छे ओनर हमारे अली भाई हैं, मतलब एकदम चिल रहते हैं, आपने देखा होगा ग्राउंड पे मतलब पूरा एंजॉय करते हैं। वो ऑलवेज आके ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं अंकुर भाई ऐसा करना है वैसा करना है, वो हमेशा बोलते हैं कि आपने 100% दो, सो थोड़ा क्रिकेट हमारे लिए ईजी हो जाता है। Okay, Ankur, not going to make you halt over here. Congratulations. That was Ankur Singh for his beautiful, wonderful all-round performance. Man of the match, Ankur. So after the qualifier one, now it's time for the eliminator, first eliminator. Two teams trying to book their players to play qualifier number 2. Oxford Titan and Dynamic Royals. Requesting 12th man of both the teams to kindly report at the commentary box. So we have got the 12th man of Oxford Titans requesting the 12th. Okay, that's a slight correction. We are requesting the 12th man of Oxford Titans to kindly join our scorer
Viraj Tendulkar, who is doing all the strats. Lot many individual prizes, you can see, lot many trophies which have been handed over to you. So for the batter, all the batter, kindly note, we can see a big logo of CEZ at the opposite end, that is at the stadium end towards the long on region. If any batter hits a 6 on that fish logo, then you are going to fetch a cash prize of 5,000 rupees. So requesting the 12th man of Oxford Titans, please come and assist our scorer with the names of your player. So now let's begin Eliminator number 1. So the team to reach the finals is KKG Knight Riders, courtesy a good all-round performance from Ankur Singh. Handy with the bat and handy with the ball as well. 100% in all three departments that made him the most valuable player of qualifier number 1. And even he has been fetched by the special prizes that have been kept by the sponsor. So requesting Oxford Titans to kindly send your only 12th man, because that has been already discussed during the toss, and even umpires have clearly informed that 12th man should be sitting near the commentator, this scorer. Okay, so this is confirmed from the officials that 12th man is going to sit with the scorer and the 13th man will be taking the water if it is required for the players. So all these have been already discussed. So requesting the captain of Oxford Titan, kindly send your 12th man, which is already marked on the list.
So now the settlement has been done. And let's begin with the eliminator. Two teams are trying their very best to get a win. And if we see the proper format, then this is actually the quarterfinals. After this, the team winning will play another match to reach to the finals. First delivery, low full toss, batsman shy check. Oh my dear! Bunty Patel, I can't believe my eyes. Safest fielder. The ball was coming down. Maybe he may have thought that it may travel the distance, but it was dropping at the very last moment. And easy chance has been dropped as Shai Sheikh survives. What could have been a wicket on the very first delivery has been dropped. Low full toss. Ball has been struck away from the fielders towards the long on region. Akshay Zogre, very quick on his feet, good throw, but till then, Sarfraz Nawaz is safe inside the crease at the non-strike is in. So meanwhile, we welcome Javed Sheikh, proprietor of Nizami Fisheries. Welcome you, sir. You can have a seat at the dais. So actually there was a check for the height as it was a full toss delivery, but it's safe. And here it goes as a legal delivery, so 8 runs on the board. Another good strike along the carpet. A strong character at the mid-off region. Fields the ball, throws it back to the bowler. No chance of any run. This goes as a dot delivery. So far, 3 legal deliveries in this over. Another big swing and a miss. Missed by the batsman, missed by the keeper. But the fielder at the short third man said, but the captain is very alert. No chance of any run. Meanwhile, another cover drive straight to the fielder. Chance of a run out. Good throw at the keeper's end, but Sarfraz Nawaz runs like cheetah between the wickets, very quick onto his feet. And now a single that takes the team total to 9. So now Sarfraz Nawaz is on the striking end for the very first time in today's day. So let's see what he can do. Against him is another shrewd bowler, left arm orthodox bowler Aniket Sanap. Good Yorker, one is the call. Even the fielder is relaxed. None other than Rupesh Gaonkar knew that it is going to be a single. So a single to end over number 1. So after completion of the first over, team total is 10. Without any loss of wicket. There was a misfortune for Aniket Sanap as catch has been dropped on the very first delivery and it in turn resulted in a maximum. मातशे कळवणे आसा हांगा जे स्पेक्टेटर बोर्डाच्या मुखार बसल्यात हे सगळे स्पॉन्सर बोर्ड आसात ते हांगा युट्यूबार फ्लॅश जातात सो मातशे थंयच्यान उठून बोर्डाच्या फाटल्यान वयचे एक कळवणी एक विनंती आसा जे स्पेक्टेटर हांगा जे एडवर्टायझींग बोर्ड आसा तेजे मुखार आसात मातशे फाटल्यान वयचे कित्याक हांगा जे बोर्ड्स आसात ते पेड बोर्ड्स आसात आनी सगळ्यांचो एडवर्टायज आसा तो युट्यूबार जावपाक जाय अशी
क्लबाचे ह्यो अधिकारी आसा तेंची मागणी आसा. देव बरें करूं आमची मागणी आयकल्ल्या बद्दल. अजुनी थोडे हांगा दिश्टी पडटात. मातशे एक रिक्वेस्ट तुमकां, एडवर्टायझींग बोर्ड आसा तेज्या मुखार बसचे न्ही, कित्याक हांगा लायव्ह आसात आनी हे जे एडवर्टायझींग बोर्ड आसा ते युट्यूबारूय येतात. देव बरें करूं. Second over of the inning, and it is also compulsory power play as match is played for 8 overs. 2 overs will be compulsory power play, and in which there will be one batting power play as well, which will be decided by the team from over number 3 to over number 7. If captain or the batsman doesn't call, then 7th over will be compulsory. Again, change in pace, wanted to guide the ball towards the fine leg, no proper connection, and good work from the keeper Munna Sheikh. Restrict the batsman from a single. So slow and steady start, still going at the healthy run rate of 10 runs per over. Sarfraz on the striking end, aiming to take a single and give strike as much as possible to Shahid Sheikh. Meanwhile, another good delivery. After hitting the deck, ball moved towards the batsman, straight into the hands of keeper. So mixing up his delivery, sometime it's leg cutter, sometime off cutters, creating a doubt in the mind of the batter as what is going to come next to him. So this is a situation, a dilemma created by Bunty Patel. Another good delivery, slightly overpitched, but equally well played. Slight fumble. Are they going for again? 2 was the call, but denied by Sarfraz as he was not alert. May not have judged it properly and don't want to take any risk because this is a crucial situation where they need to keep their wickets. A brand new full toss ball which is capable of traveling the distance quite comfortably. Second over in progress, power play over in progress. Meanwhile, a good cover drive. Meanwhile, requesting the spectators not to move in front of the side screen when a batsman is batting from the opposite end. A single takes the team total to 11. So far, just a single in this over. Beautiful over. Progress by Bunty Patel, and this is a handsome strike. Inside out, over the extra cover. What a hit from Shahid Sheikh. The moment he has arrived at the striking end, took a ball to take that inside out strike out of his armory. With that, team total moves to 15. So gradually moving to the healthy run rate of 10 runs per over. 15 on the board. Final delivery. Meanwhile, a big swing and a miss. Good over continues in the third over as well, and the second over of Aniket Sanup. So shrewd bowler, mixing up his length variations can be observed. In the first over, he has given 10 runs and now starts with a dot delivery. Another good delivery, cuts the ball straight to the short third man fielder. Captain fields the ball on a drop. 2 dot balls so far, and he has been able to keep Shahid Sheikh quiet at the moment. Third over in progress. 16 on the board. Good strike, although 2 fielders have been patrolling straight down the ground. Fielder from
long off fields the ball. A single to rotate the strike, and that brings Sarfaraz at the striker's end. So far, Sarfaraz Nawaz is quiet with the bat. Have given maximum strike for Shahid Sheikh as far as possible. Let's see whether he can do something, because third over in progress and 17 is the score on the board. More 5 overs to be bowled after this over. Another good strike. Is it going to be caught? Fielder jumps, could not stop the ball from crossing, and I can't believe Akshay Zogre, the fielder, normally is the safest pair of hands, but I've mistimed his jump, misses the catch, and ball traveled the distance. Second unfortunate moment for Aniket Sanap. First, it was dropped by Bunty Patel towards the cow corner region, and now towards the long on region by Akshay Zogre. Two safest fielders could not do anything. Another hit, and the ball will travel the distance. Spectators are running to catch the ball, but that prize was only during the first match. With that, team total moves to 29. And now Sarfaraz Nawaz taking all the proceedings in his hand. 2 sixes from 2 deliveries. Can he make it 3? Another straight drive, just slightly away from bowler towards the long off. Are they going for the second? 2 was the call, but denied at the very last moment. A single to end over number 2, and look at the reaction of bowler. Not happy with the effort, with the fielding effort. What could have been catches have been dropped, and those unfortunate catches have even given 6 runs. So team total moves to 30. 3 overs completed, 30 without any loss of wicket. So here we have heard in Hindi, we have heard in Marathi, Malwani, English, and I've been asked by one of my friend that at least 1 over, if you can, then please deliver in Konkani. So this 4th over, let's try our own language. पळूया चौथी ओव्हर कोण घेऊन येता तो. चौथ्या ओव्हरीचो खेळ आता सुरू जाता. 3 ओव्हरीन 30 रन जाल्ले आसात. एकूय विकेट हांगा घेवपाक यश पावलें ना फिल्डिंग टिमीक. कीर्तेश किनळकार चौथी ओव्हर घेऊन येता स्टेडियम एंडांतल्यान. स्ट्रायकर आसा सरफराज नवाज. पळोवया या मैदानार कितें घडटा तें. 2 बॉलान 2 सिक्सऱ्यो मारिल्ल्यो हेच्या पयलींच्या ओव्हरीक. तोच गडी आसा स्ट्रायकर. मुन्ना शेख आपल्या पंगडा खातीर हांगा फिल्डिंग आसा ती सजावट करता तें पळोवंक मेळटा आमकां. आनी खूब असो टायम घेतिल्लो आसा हांगा फिल्ड लावपाक. अंपायर्स तेजी दखल घेतात, मागतात कॅप्टनाक जाता इतल्या बेगीन सुरू करया. इतलो टायम आमकां वगडावपाक मेळना मैदानार. बऱ्यांतलो बॉल पयलो बॉल तितलोच बरो खेळिल्लो आसा. कवर हेच्या दिशेन स्वीपर थंय बॉल आडायता, परत थ्रो करता किपरा मेळ्यार 1 रन हांगा काडिल्लो आसा. 1 रनान जो स्कोर बोर्ड आसा तो फुडें वता तो 31 धावांचेर. आणि त्या एकेरीन आता स्ट्रायकर येता शाहीद शेख. हो एक बरो असो कडेगाज बॅट्समॅन जावन आसा. पळोवया कितें करता तो. आता म्हळ्यार तेणें 1 सोकान 1 चौको मारिल्लो आसा. परत एकदा नो बॉल हांगा काडिल्लो आसा मेन अंपायरान.
जो खेळपाक जो राखीव जागो आसा तेच्या भायर जर बॉल घातलो जाल्यार वो नो बॉल डिक्लेअर जाता आनी तेच आमकां पळोवपाक मेळटा हांगा जे आमी व्हायट लायन जी मारल्यात पिचीच्या सायडींतल्यान तेच्या भायर हो बॉल पडून हांगा नो बॉल जाहीर केल्लो आसा. फ्री हिट वता शाहीद शेखाक आणि तितलोच सुंदर असो सको पळोवंक मेळटा. बऱ्यांतलो बरो कनेक्शन जाला फिल्डर बाउंड्रीच्या भायर. बरो एफर्ट अजून एक सको गेलो ना. बरो एफर्ट हांगा पळोवंक मेळ्ळा फिल्डराचो. बंटी पटेल एक सको हाडूंक शकलो ना पूण हांगा बऱ्यांतलो बरो एफर्ट. आपल्या संघा खातीर जवळ जवळ 4 रन आडिल्ले आसात. सो हांगा स्क्रीनार आमी चेक करतात. थर्ड अंपायर सिद्धेश नायक बाबू हांगा स्क्रिना मुखार आयिल्लो आसा आनी आतां पळयतात हो सको जातलो काय फक्त 2 रन हांगा ह्या पंगडाक वता ते. फ्री हिट बॉल आशिल्लो. बरो यत्न केल्लो आसा डीप मिड विकेट रिजनान. बंटी पटेलान एक बरी उडी मारून हांगा बॉल अडोवपाचो यत्न केला. पळोवया तो सफल जाता काय. विरुद्ध पंगडाक 6 रन्स वतात ते आमचे थर्ड अंपायर आसा ते हांगा सामके दोळ्यान तेल घालून स्क्रीन पळयतात आनी रोखडेच हांगा डिसिजन येतलें. पळोवया कितें येता तें. सो सामके टच एंड गो अशें हे हांगा सिच्युएशन आयलां. अंपायर्सूय सामके दोळ्यान तेल घालून पळयतात. टायम घेतात कसलीच चूक जावपाक जायना म्हणून. कित्याक हांगा हो खेळ आसा तो अंकाचो 1-2 अंक अशे तशे जाले जाल्यार मागीर खूब फुडें फरक पडपाक शकता. सो हांगा पंचाचो निर्णय आयल्लो आसा आनी बंटी पटेलान 4 रन आसा ते आडयल्ले आसा आपल्या पंगडा खातीर. बऱ्यांतली बरी फिल्डिंग हांगा पळोवंक मेळिल्ली आसा. सामको टायमार हांगा उडी मारून एका हातान बॉल जो मैदानाच्या भितर दवरपाक यश पावला बंटी पटेलाक. बऱ्यांतली बरी फिल्डिंग बऱ्यांतले बरें क्षेत्ररक्षण हांगा पळोवंक मेळ्ळा आमकां आनी आपल्या टिमी खातीर 4 रन हे आडयल्ले आसात सेव्ह केल्ले आसात बंटी पटेलान. सो 2 रन वतात बॅटिंग टिमीच्या खात्यान आनी ह्या 2 रनान संघ फुडें वता तो 34 धावांचेर. चवथे षटक सुरू आसा हांगा 34 धावां स्कोर बोर्डार. बऱ्यांतलो बरो यत्न फिल्डराच्या माथ्या वेल्यान बॉल वता तो बाउंड्रीच्या भायर कव्हर क्षेत्रांतल्यान. कोणाकूच कांयच चान्स ना फक्त पळोवपाक हांगा सगळे फिल्डर बॉलाक पळयतात आनी तेतूंतल्यान हांगा आमकां चौकार चौको पळोवंक मेळटा. त्या चौक्याच्या मदतीन स्कोर बोर्ड आतां धांवता तो 38 धावांचेर 38. बऱ्यांतलो बरो खेळगडी बऱ्यांतलो बरो खेळ दाखयता हांगा चवथ्या ओव्हरीन.
मातसो शॉर्ट ऑफ लेंथ घातिल्लो बॅकफुटार येवन मारला आणि तो गेला ज्या स्क्रिनाच्या भायर. स्पेक्टेटर हांगा हात वयर करून दाखयतात पण सांगपाक सामकें एकदम दुख्ख जाता. एक हातान कॅच आसा ती फर्स्टूच मॅचीक प्राइज दवरिल्ले. आता फक्त तुम्ही तुमचो कॉन्फिडन्स वाडयात आणि तुमची स्किल दाखयात. देव बरें करूं. असो सको आणि ह्या सक्यान स्कोर फुडें वता तो 44 डबल 4 हांगा आमकां स्कोर पळोवंक मेळटा स्कोर कार्डार. अप्रतिम खेळ. बऱ्यांतलो बरो फटको बॅकफुटार आयलो आणि शॉर्ट आर्म जॅक म्हणटात तेका इंग्लिशेन तसलो प्रकार हांगा पळोवंक मेळ्ळा. बऱ्यांतलें बरें कनेक्शन आणि तो बॉल वता बाउंड्रीच्या भायर. एक चौको एक सको हांगा आयला शाहीद शेख हाच्या बॅटांतल्यान. 2 बॉल निमणे 2 बॉल उरल्यात ह्या चौथ्या ओव्हरीचे. पळोवया शाहीद शेख कितें करता तो. एक चौको एक सको मारपाक यश फावो जाला शाहिदाक. आनीक शॉर्ट बॉल वयर गेला हांवें रुपेश गांवकार धरता कॅच आणि पयली विकेट. सगळ्यान मागडो प्लेयर हांगा पयलो झेल घेता. 21,000ची बोली लागलेली ह्या प्लेयराक. 7 नंबर जो आसा जर्सी रुपेश गांवकार कॅच धरता आणि शाहीद शेख परत पावला वळटा आपल्या तंबून. आणि तसोच आता मुखाल्ल्या सुवातेर नंबर 3 जो खेळगडू येता तो जावन आसा भूषण गोळे जेणे काल हांगा अशीच अप्रतिम फटकेबाजी केल्ली. सामकी रॉकेटां वताली ग्राउंडाच्या भायर आणि सक्याचेर सके पळोवंक मेळिल्ले त्याच्या त्या इनिंगान. पळोवया हांगा ह्या मैदानार कितें करता तो आसतलो स्ट्रायकींग एंडर. नवे रुल्स अशें सांगतात की जर खंयचोय बॅट्समॅन कॅच आउट जाला जाल्यार जो फुडलो बॅट्समॅन येता तोच स्ट्रायकर आसतलो. हांगा स्ट्रायक मदीं चेंज जायना. हे आसात मॉडर्न रूल. आणि हांगा निमणो बॉल घेवन येता किर्तेश किनाळकर. ह्या ओव्हरीन 13 रन्स दिल्यात आणि 13 रन्साच्या फाटल्यान तेका यश भेटला. 14 आयल्यात. एक नो बॉल. परत एकदा फ्लिक आणि तो बॉल वता सामको प्रेक्षकांमध्ये. येतानाच आपले कालचे फॉर्म हांगा कायम दवरता भूषण गोळे. तुमच्या मुखार हांगा सको भेटयता आणि स्कोरराक सांगता बरे बाबा 6 रन्स आमच्या खात्यान. आणि तेच बरोबर हांगा ऑक्सफर्ड टायटनाचे 50 जे धाव आसात ते पूर्ण जाल्यात. 4 ओव्हरी संपल्या आणि 50 धावा आमकां स्कोरबोर्डार पळोवंक मेळटात. सो फुडल्या सुवातेर आपयता आमचे मोगाळ अशोकजी नायक. मायक सोंपयता तेंच्या कडेन आणि फुडले विवरण जे आसा ते अशोकजी नायक हांच्या तोंडांतल्यान आयकुया. थैंक यू सागर। 4 ओवर का आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह बिल्कुल नॉकआउट का मुकाबला है, यहाँ पर आपको जीत महत्वपूर्ण है। जीत अगर मिलेगी आने वाला मैच होगा, और हार के सामने का अगर उसके साथ अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। 50 रन स्कोर बोर्ड पर एक शानदार शुरुआत। 27 रन बनाए शाहिद शेख ने, 2 चौके 2 छक्के लगाए। सरफराज नवाज के बल्लेबाजी में अब तक 2 छक्के, और आते आते एक बहुत ही लाजवाब शॉट देखने को मिला भूषण गोळे के बल्ले से। थोड़ी सी लेग स्टंप पर ओवर पिच गेंद थी, लेकिन बिल्कुल फ्लिक किया बड़ी खूबसूरती के साथ। एक नजाकत भरा छक्का डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर आते आते, और 4 ओवर के बाद टोटल 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ कमेंट्री बॉक्स की ओर से असलम शेख, सदगिरी नाइक, शिवचरण उर्फ बाबू दाबोलकर,
सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ स्कोरिंग की जानकारी देते हुए विराज तेंदुलकर और बिल्कुल शिवम हमारे साथ जो कि ऑनलाइन स्कोरर और टेनिस क्रिकेट डॉट इन की पूरी टीम आज कमेंट्री बॉक्स में जय भोसले, सर हरीश काकोडकर, सागर गोस्वामी और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत इस मैदान पर। सभी मान्यवर सम्माननीय अतिथि हमारे बिल्कुल बगल में बैठे हुए मंच पर विराजमान इस मैच का आनंद लेते हुए और तमाम जो कि दर्शक इस मैदान पर भारी संख्या में तादाद आज इस मैदान पर शाम के दौर में आज बिल्कुल हवा का झोंका नहीं दिखाई दे रहा है मैदान पर। दोपहर में पहला मुकाबला रहा, कड़ी धूप थी, गर्मी थी। हमारे कैमरामैन सूरज सर वो भी बिल्कुल हमारे मैच का लुत्फ उठाते मैदान पर और इसी बीच में कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी में परिवर्तन, बंटी पटेल दिखाई देते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर 5वें ओवर की शुरुआत। थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद, बल्ला छूटा हाथों से, देखना होगा गेंद डीप मिड विकेट पर निकली गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। हमारे डीजे मैन आपका भी साथ होना चाहिए इस सफर में। बिल्कुल ऋषभ पंत की स्टाइल में इस शॉट को खेला बल्लेबाज ने। 6 रन जुड़ गए, 6 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 56 पर टोटल, 1 विकेट के नुकसान पर। एकमात्र विकेट शाहिद शेख राइट आर्म ओवर द विकेट। बंटी पटेल एक बार फिर से लेग कटर आड़े बल्ले से खेला, इस बार ऑन साइड पर और जब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को आते उठाते फील्ड करते एक सिंगल बड़े आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। दो दर्शक बिल्कुल हमारे जो साइड स्क्रीन दिखाई दे रही है वहां पर ब्लैक साइड स्क्रीन, दोस्तों आपसे गुजारिश है थोड़ा सा अगल बगल में बैठ जाइए, इस मैच का आनंद आपको ही लेना है। लेकिन आप जो बिल्कुल स्क्रीन के नीचे बैठे हैं, जो ब्लैक बिल्कुल हमारे सामने विकेट कीपर के पीछे जो साइड स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोस्तों थोड़ा सा अगल बगल में हो जाइए, थैंक यू। तो इसी बीच में मैदान पर हेलमेट की मांग जो कि विकेट कीपर के लिए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 3 छक्के अब तक बल्लेबाजी में। सरफराज नवाज उर्फ चप्पू बल्लेबाजी पर, भूषण गोले के बल्ले से एक बड़ा शॉट 6 रन के लिए। उससे पहले विकेट के रूप में 44 रनों की साझेदारी बनी, एक अच्छी साझेदारी बनी। टॉस जीता, बहुत आजकल कम जो कि फैसले होते हैं टॉस जीतकर जो कि बल्लेबाजी करने का, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो कि फैसला मैदान पर कप्तान और पूरे टीम मैनेजमेंट का, टॉस जीता बल्लेबाजी करने का फैसला और एक शानदार शुरुआत मैदान पर। एक 20-22 कदमों का रनअप, लंबा रनअप बंटी पटेल। गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, शायद जो हलचल थी वहीं पर थोड़ा सा इसे लगा, लेकिन बिल्कुल लगभग बीट किया इस गेंद ने। आखिर में जो कि बिल्कुल जो कि थोड़ा सा लेग कटर गेंद जरूर थी, लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल चकमा गए इस गेंद के साथ। एक बार फिर से धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर, ऑफसाइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर हर्षद मातोंडकर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी फील्डिंग करते हुए डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। छोटी गेंद मिले इस बार, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, लाजवाब शॉट, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक सन्नाटेदार छक्का, 6 रन के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। गेंद है बल्ले पर जब लगते हैं जो कि बीचों बीच अगर लगते हैं तो बस ये गेंद सिर्फ लानी पड़ते हैं मैदान से बाहर। एक बहुत ही अच्छा शॉट और एक बार फिर से बंटी पटेल अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर दूसरा छक्का। भूषण गोले व्यक्तिगत 12 रन पर बल्लेबाजी करते हुए एक बड़े स्कोर की पहला मैच देखा आपने, थोड़ा सा एक तरफी मुकाबला रहा, लेकिन देखना होगा यह मुकाबला किस तरह से होता है दोनों के बीच में। फिर से लेग कटर, लेकिन इस बार गुडले स्पॉट पर थोड़ी सी उछाल मिली गेंद को। बल्लेबाज बिल्कुल जो कि मालूम था, बल्ले को हटाया, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। ज्यादा उछाल थी गेंद में और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। एक बार विकेट कीपर के साथ ऑफसाइड पर एक
शॉट थर्ड मैन पर लगभग फ्लाइंग स्लिप पर, एक कवर पॉइंट पर, एक स्वीपर कवर पर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक शॉर्ट पॉइंट लेग पर, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। ये फील्डिंग की जमावट मैदान पर। अल्टी पल्टी सफल रही इस बार, लाजवाब टाइमिंग। इस बार गेंद निकली डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। पांच ओवर का खेल समाप्त हुआ। आने वाले 3 ओवर 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। पहला मुकाबला रहा था 126 का टोटल, एक बड़ा टारगेट, भरत अरकस की शानदार बल्लेबाजी, अंकुर सिंह का अर्धशतक और अंपायर का इशारा कमेंट्री बॉक्स की ओर से, जो कि बैटिंग पावर प्ले का ओवर। शुरू में 2 ओवर पावर प्ले का खेल, तीसरे से 7वें तक एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर, और वही इशारा कमेंट्री बॉक्स की ओर अंपायर का दिखाई देता हुआ। फिलहाल स्कोर 67 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 67 लॉस ऑफ 1 विकेट, और वो पावर प्ले का ओवर गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए हर्षद मातोंडकर, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, एक बेहतरीन गोवा के ऑलराउंडर खिलाड़ी है। और इस टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूंगा, कई ऐसे खिलाड़ी गोवा के बिल्कुल जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, और जो कि गेंदबाजी हो, अपनी छाप जरूर छोड़ी है इन सभी खिलाड़ियों के साथ। फिलहाल देखना होगा सामने से फुल टॉस गेंद, एक बैठक शॉट डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, बिल्कुल गेंद निकलते हुए सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। ओवर पिच गेंद, इस बार मिड ऑन पर मौका बना कैच का, हाफ वाली पर लेकर खेला था इस बार, लेकिन मिड ऑन पर फील्डर के हाथों में सर्कल पर, और दूसरी कामयाबी मिलती हुई मैदान पर डायनामिक रॉयल्स क्रिकेट टीम को। और उनका साथ देने के लिए बारी 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 अब मैदान पर प्रीतम बारी बल्लेबाजी करने के लिए। कमेंट्री बॉक्स में हमारे बिल्कुल एक करीबी अजीज दोस्त अल्लाह बख्श का आगमन हो चुका है। थोड़े से नाखुश है क्योंकि शायद उनका जो बिल्कुल मनपसंद खिलाड़ी उस्मान पटेल वो नहीं इस टूर्नामेंट में, थोड़ा सा अल्लाह बख्श जरूर नाखुश है। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है और अच्छे इंसान है, मैं तो कहूँगा खिलाड़ी अच्छा है और उसी के साथ अच्छे इंसान है उस्मान पटेल।
जब मिलोगे तो बिल्कुल आपको भी पता होगा कि कितने बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन उससे भी कई ज्यादा इंसान है और वो होने चाहिए। फिलहाल सामने सफलता मिली हर्षद मातोंडकर को। पहली गेंद पर बड़ा छक्का लगा, लेकिन अपने आप पर बिल्कुल जो कि कमबैक किया अपने टीम के लिए। कहीं ना कहीं विकेट की सख्त जरूरत थी, नहीं तो ये मुकाबला लग रहा था पहले मैच की तरह एक बड़े स्कोर की कदम बढ़ा रहा है, लेकिन वहीं पर ब्रेक तो दिलाया अपने टीम को। और सामने न्यू बैटर प्रीतम बारी उनकी गेंदबाजी का सामना करने के लिए। आते आते कड़ा प्रहार, इस बार ओवर पिच गेंद, वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। आते आते बड़ा शॉट डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है और बैटिंग पीछे। हमने पहले मैच के साथ पहले दिन में दोपहर के सत्र में बात की थी, 6x6 क्रिकेट टीम ने कृष्णा सातपुते ने क्या मैदान पर एक इनिंग खेली थी, यादगार इनिंग खेली थी। और वहीं पर हमने बात की थी ये विकेट है बिल्कुल जो कि बल्लेबाजों को मदद कर रहा है। छोटी गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के से गेंद को स्टीयर किया। इस बार गली पर चौकर ने फील्डिंग गेंद को उठाते फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। अब बल्लेबाजी की बात कर रहे थे, यही इसी विकेट पर रोहन सालगांवकर ने भी कमाल किया है, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है रोहन सालगांवकर ने। और स्कोर जो कि इसके साथ वहीं पर रुका हुआ मैदान पर टोटल हो चुका है 79, 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, बिल्कुल बेहतरीन शॉट, इस बार कवर ड्राइव का बेहतरीन शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे भाई थोड़ा हमारे साथ ध्यान दो, आपका साथ महत्वपूर्ण है। 2 छक्के अब तक 16 रन पर भूषण गोले, 10 रन पर प्रीतम बारी। और अपने बॉलिंग बार पर एक बार फिर से छठा ओवर चलता हुआ मैच का, थोड़े से महंगे हो रहे, एक सफलता मिल रही इस ओवर में। ऑन साइड पर इस बार स्लॉग स्वीप का शॉट, बेहतरीन टाइमिंग इस बार, और फिर से गेंद निकलती हुई डीप स्क्वायर एक सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। सुंदर साउंड सिस्टम है, सुमधुर संगीत बीच बीच में आपके साथ जुड़ता हुआ। और स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर हो चुका है, 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 89 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 89 लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 विकेट वापस, शाहिद शेख शुरू में 27 रन बनाकर, उसके बाद सरफराज नवाज 29 रन बनाकर, 2 बड़े छक्के 1 चौका, 16 पर खुद के व्यक्तिगत भूषण गोले, और प्रीतम बारी आते आते 16 रनों पर। यूट्यूब पर कई दर्शक जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। संख्या बढ़ती हुई इस टूर्नामेंट के साथ यूट्यूब पर। और गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से। 7वें ओवर की शुरुआत, पहला मुकाबला रहा था 125-126 का टारगेट के साथ। क्या यह भी मुकाबला 100 से आगे निकलेगा, लेकिन देखना होगा आने वाले, अगर 2 ओवर अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग रही तो एक सामने टोटल निश्चित रूप से फाइटिंग टोटल होगा। अगर 100 से आगे निकलेगी तो थोड़ा सा दबाव होता है, लेकिन जब जब बड़े स्कोर के मुकाबले होते हैं शायद बिल्कुल कांटे के टक्कर होते हैं। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से। कृतेश, छोटी गेंद इस बार बैकफुट पर निकले, पुल किया, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर तेजी के साथ गेंद को आते उठाते फील्ड करते, फिर से सिंगल बन गया स्कोर के खाते में।
90 रन पर पहुंचा टोटल स्कोर। 7वें ओवर की पहली गेंद की समाप्ति मैदान पर। 11 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और देखना होगा ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम कितने रनों पर पहुंचते हैं निर्धारित 8 ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत ही शानदार आयोजन, साउथ गोवा प्रीमियर लीग पर्व दूसरा, डे नाइट का एक शानदार आयोजन। बस थोड़ी देर में सुरभि लाइट्स वो भी ऑन होगी मैदान पर और एलईडी स्क्रीन पर भी आप इस टूर्नामेंट का बीच बीच में जरूर रिप्ले के साथ मजा ले सकते हैं। कृतेश किंगड़ेकर अपने बॉलिंग बार पर, शॉर्ट पिच बाउंसर लेकिन लाइन पर भटके बिल्कुल, ऑफ स्टंप से दूर गेंद, अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा किया। स्कोर एक सिंगल के साथ आगे बढ़ा 91 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 44 रन की साझेदारी बनी, दूसरा विकेट 73 रनों के योग पर और वहीं से लेकर ये 2 बैटर मैदान पर, प्रीतम बारी और उन्हीं के साथ भूषण गोले बल्लेबाजी करते हुए और कृतेश किंगड़ेकर अपने बॉलिंग बार पर आगे निकले लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद स्लिप पर, फ्लाइंग स्लिप पर गेंद को फील्ड करते नॉन स्ट्राइक एंड से निकले थे रन के लिए, लगभग खतरा था रनआउट का लेकिन बढ़ते कदमों को रोका। इन वक्त अपने सामने जो कि मना किया, इनकार किया और तब तक जब तक गेंद आती गेंदबाज कृतेश के हाथों में अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित बल्लेबाज, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर 91, लॉस ऑफ 2 विकेट। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद इस बार सफल हुए थे बड़े शॉट के लिए, मालूम था स्लॉग ओवर है, आने वाली बल्लेबाजी बाकी है, कहीं ना कहीं 2-3 बड़े शॉट अगर लग जाए 100 से आगे निकलेंगे तो सामने प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा बल्लेबाजी पर, लेकिन उससे भी चालाक निकले गेंदबाज कृतेश किंगड़ेकर। बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, बिल्कुल अच्छी लाइन पर, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर कॉमेंट्री बॉक्स की ओर से अंपायर से गार्ड लेते हुए एक बार फिर से सामना करते हुए एक छोटा रनअप 7-8 कदमों का कृतेश का, और फिर से बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस लाइन पर होनी चाहिए गेंदबाजी क्योंकि यह स्लॉग ओवर का खेल है। बल्लेबाज तो हर गेंद पर कोशिश करेगा एक बड़े शॉट के लिए और ऐसे में बिल्कुल जब गेंदबाज बिल्कुल हरकत करते हैं, बहुत ही अच्छी गेंद करते हैं तो तारीफ दाद तो देनी पड़ेगी कृतेश को। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर खेल चलता हुआ 7वें ओवर का और स्कोर टोटल हो चुका है 91, लॉस ऑफ 2 विकेट। फुल टॉस गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर शायद डाविस लगा था लेकिन एक मुश्किल सा मौका, मैं तो कहूंगा हाफ चांसेस जिसे कहते हैं। अक्षय जोगड़े जो कि बेहतरीन फील्डर है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बिल्कुल अपने आप को झांक दिया था। एक आउटफील्ड बहुत अच्छा है, ग्रास है, नेचुरल ग्रास है और डाइस लगाया था लेकिन मैं तो कहूंगा बिल्कुल एक मुश्किल सा मौका था, हाफ चांसेस जिसे कहते हैं वो मौका था लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। और जब तक गेंद को फील्ड करते आप स्क्रीन पर बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से रिप्ले इस डाइस को, और स्कोर 92। पीछा किया था इस बार ऑफ स्टंप पर, यह गेंद कट करना चाहते थे, गेंद फिर से बल्ले से दूर निकलते हुए विकेट कीपर के हाथों में। खेल इसी के साथ एक बेहतरीन ओवर, 7वां ओवर, सफलता जरूर नहीं मिली लेकिन जो बड़े शॉट रोकने चाहिए थे वो रोके कृतेश ने अपने गेंदबाजी पर। ओके बोले अंतिम ओवर का खेल, स्कोर 92 रन, 92, 2 विकेट के नुकसान पर। दर्शन बांदेकर दिखाई देते हुए बगल में इस मैच का आनंद लेते हुए, क्या बहुत ही शानदार इनिंग खेली कल के आखिरी मैच में, बिल्कुल करीब लाए थे मैच को अपने आप को लेकिन आखिर गेंद पर जो कि मैच छूटा हाथों से, वो दर्शन बांदेकर इस मैदान पर मैच का आनंद लेते हुए। और देखना होगा अंतिम ओवर का खेल बाकी, स्कोर 92, लॉस ऑफ 2 विकेट। क्या होगा आखिरी ओवर में, लेकिन दाद देने पड़ेगी पिछले ओवर को, 7वें ओवर को। बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही पिछला ओवर कृतेश किंगड़ेकर का और लास्ट ओवर आखिरी ओवर मैदान में पहले इनिंग का।
आड़े बल्ले से खेला इस बार मिड विकेट पर फील्डर, क्या दूसरे के लिए निकलेंगे दोनों बल्लेबाज, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, लेकिन अपने आप को तुरंत संभाला, गेंद को उठाया, थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर और एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। 93 रन टोटल, 93, लॉस ऑफ 2 विकेट। नॉकआउट का मुकाबला यहां पर बिल्कुल एक दरवाजा खुल जाएगा एक टीम के लिए, और एक टीम को बिल्कुल निराशा के साथ अगले साल तक बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा, 365 दिनों तक इस साउथ गोवा प्रीमियर लीग जो पर्व तीसरे का। ओवर पिच गेंद, बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर है मिड विकेट पर फील्डर, बहुत ही शानदार फील्डिंग, पहला रन बड़ी तेजी के साथ दूसरे के लिए पलटे, लेकिन थ्रो उतना अच्छा नहीं हुआ। जब तक गेंद को कलेक्ट करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। जो दर्शक देरी से झुके हैं इस मैदान पर उनके लिए जानकारी, ऑक्सफोर्ड टाइटंस ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी, और अब तक स्कोर हो चुका है 95 रन, 95, लॉस ऑफ 2 विकेट, 95 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट इस बार, पुलर लेन की गेंद खोद कर खेला हुआ शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से थोड़ी सी फिर से हड़बड़ाहट और उसी का फायदा उठाते हुए सिंगल के साथ दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। विकेटों के बीच में बहुत ही शानदार दौड़, भूषण गोड़े और प्रीतम बारिक इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। आखिरी ओवर अक्षय जोगड़े गेंदबाजी कर रहे अंतिम ओवर में, यानी 8वां ओवर, स्कोर रुका हुआ 97, 97 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद इस बार फिर से, लेकिन थोड़ी सी शायद गेंद ने गिर की ली और फील्डर वहां पर बिल्कुल जो कि चौका गए। बैकअप हो रहा था मिड ऑफ पर, गेंद को फील्ड करते फिर से सिंगल जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 98 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 2 विकेट, 98 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर अक्षय जोगले सामने से, 2 बैटर भूषण गोड़े 2 छक्के 1 चौका, प्रीतम बारी 2 छक्के 1 चौका अब तक बल्लेबाजी में। और इस बार थोड़ी सी धीमी गेंद, देखना होगा वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर लगभग काउ कॉर्नर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, रन आउट का खतरा होगा मैदान पर। तीसरा विकेट चला गया, एक अच्छी साझेदारी बनी तीसरे विकेट के रूप में, और स्कोर बोर्ड पर टोटल 99 रन, 99, लॉस ऑफ 3 विकेट। दो छक्के लगाए, एक चौका लगाया अपने इनिंग में प्रीतम बारी रन आउट होकर। अब तक भूषण गोड़े 2 छक्के लगाते हुए एक चौका बल्लेबाजी में 22 रन पर, और उनका साथ देने के लिए न्यू बैटर विक्रम नाइक अक्षय जोगड़े गेंदबाजी पर स्पेल की समाप्ति की और इनिंग की समाप्ति की और यह मुकाबला 99 रन, 99, लॉस ऑफ 3 विकेट। और बैठक शॉट खेलना चाहते थे, एक पुलर लेन के गेंद ऑफ स्टंप को बीट करते हुए गेंद विकेट कीपर के हाथों में। तो इसी के साथ 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ पहले इनिंग का। ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शाहिद शेख ने बनाए 27 रन, सरफराज नवाज उर्फ चप्पू ने बनाए 29 रन, प्रीतम बारी 19 रन बनाकर और शानदार साथ दिया भूषण गोड़े ने, 2 छक्के लगाए, एक चौका लगाया अपने इनिंग में। अगर गेंदबाजी की बात की तो दाद देनी पड़ेगी, मैं तो बिल्कुल जो कि कौतुक करूंगा। 7वां ओवर कृतेश किनड़ेकर का, आखिरी ओवर अक्षय जोगड़े का, आखिरी 2 ओवर में एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा बल्लेबाजी में। पूरा टोटल 99 रनों का 99 का टारगेट रखा है सामने डायनामिक रॉयल्स क्रिकेट टीम के लिए 100 रन का, और देखना होगा ये 100 रन का जवाब मैदान पर देती है डायनामिक रॉयल्स या उससे पहले ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम इस मुकाबले को जीत जाती है। आइए जुड़ जाते हैं कमेंट्री बॉक्स में। दूसरी इनिंग की शुरुआत एक बिल्कुल मीठी अंग्रेजी की आवाज, एक शानदार कमेंट्री सर हरीश काकोड़कर और उन्हीं के साथ जय भोसले।
So to summarize the match, to summarize the first innings, Shahid Sheikh played a wonderful knock of 27 runs. Sarfaraz Nawaz with 4 sixes, a handy knock of 29. Bhushan Gore gave us some start early on with 22, and then Pritam Bari 2 sixes and 1 boundary, 19 runs. So all the top order batsmen have scored decent runs, and I personally feel if at all there is going to be a turning point of the match, and if Dynamic Royals are going to win this match, it were the last 2 overs. Last 2 overs, one from Kritesh Kindrekar and from then Akshay Zogre, Chirpu. Those 2 overs were so good that has kept Dynamic Royals alive in this match. If it was somewhere around 120, 125, just like in the first match, things could have been difficult here. But now it is around 12 runs per over, close to 12, 12.5, which is much better than having 15 runs per over. So Rupesh Gavkar and none other than Munna Sheikh. Rupesh Gavkar, highest bidded player in the auctions of for 21,000, and Munna Sheikh need not be bidded in the auctions because he's an outstation player and he has been invited here. He is in the squad of Dynamic Royals, played royally, and he is the reason that they are playing this Eliminator. What an innings that was. In 4 overs, the team was hardly 26 for the loss of 5-6 wickets, and he waited for their 5th and 6th over and scored a handy 50 plus runs, scored 69. In the end, they won by 3 runs. So only man who played for them in that game, and once again he is going to face the first ball. A class act, a wonderful player, and he's going to be a crucial wicket here for Oxford Titans. So again, slightly down the leg side, and umpire signalling it is wide. It's not easy for the umpire. The umpiring panel of Aslam Sheikh and Babu Dabulkar here, and Sadgiri Naik and Babu Naik are out adjudicating the third umpire's role. Scorer Vidaj Tendulkar, commentator Ashok Naik, Sagar Gosavi, today Jay Bhosle, and myself Harish Kakodkar. This time very nicely played. It's a very calculative player. I always tell all our Goan players, if at all you want to learn something from any of the batsmen, is Munna Sheikh. He's not bothered about that he's not getting the sixes at the start. If the ball is there to be hit, he'll definitely go and find his boundaries and sixes. But if the ball is good, nicely bowled by the bowler, he gives respect. But important point is he rotates the strike, and that's the key. Instead of bowling, taking dot balls, and pressurizing oneself, is better to take single, rotate the strike, and that also helps the other batsman at the non-striker's end. So opens the account with a wide, then a single off the bat. Pritam Bari. Pritam Bari has got Oxford Titans wickets. Harbari. Now also they will be hoping that he gives them the breakthrough in the first over itself, just like Ankur Singh gave to KKG Knight Riders. Rupesh Gavkar, a wonderful player. So again going straight down the ground, and many of these players know each other very well. Rupesh is very strong down the ground, that's why they have kept that long off. For many other players, they would have kept long on and mid wicket, but for Rupesh, they have kept long off. Now maybe they are thinking of getting him in the covers. Tactical game, a tactical ploy, and being in the game, sometimes reading the players, sometimes reading the game, it also adds on to the captaincy, also adds on to the value of the player. Oh, that was a wide. It was a loose ball here. Had the chance, Rupesh. Even though it could have fetched him extra run, he should have gone for that because he could have got 6 runs. Such balls you don't get from the bowler like Pritam Bari. Huge crowd. Today is a Sunday, Super Sunday, and all are at Fatoda. This time didn't time it that well, but getting a single to mid-on. Also like to thank the sponsor, the title sponsor sportsninja.in, the co-sponsor is Mr. Mushtaq Bab Ahmed, Shagun Hotel, who have the counter here for last 3 days, supported by US Pizza, Amstrad, 6 Star 6, Wildfire Energy Drink, Al Barka Hotel, E-Hab Interiors,
SES Engineering, Yusha Stores, Alstone, Star Fisheries, Edmund Bob Fernandez, Akash Fish Mill, Quality Exports from Kukalim, Jersey Partners, Savli, Goa. Once again going for that swing on the leg side. And that would have been a safe shot actually. There's a man in the deep mid-wicket cow corner region, one at backward of square leg. Since the ground is big, even though you keep 3 or 4 players, there are enough gap between both these fielders. So you can bisect, you can find the gaps, you can certainly earn some runs. This time wonderfully, watchfully played. It's not necessary that the asking run rate is 12 runs per over, so you are going hammer and tonk right in the first over. You can always watchfully play what the bowler is doing, and the sun is also going down. The lights are coming into full effect here, slowly and steadily, not at this stage. But a wonderful environment nevertheless. Cricket lovers I've seen, I was having a round on this ground, and lots of cricket lovers from all over Goa are here. Why not? They love this game. Many of the tennis stars of yesteryears are still here. Again, trying to lift it. Chance of a run out. Was it a chance of a run out? Rupesh played that shot onto the back foot, and from back foot he had to start his gear. CEO of Emo Bikes, Manish Jain. We welcome you, sir, to watch these stunning days of cricket. And this is Eliminator. Manish Jain, sir, is waving his hand. CEO of Emo Bikes, who have sponsored us, man of the series. And that Emo bike you can see on the stage. People are so glued. They are sitting everywhere and also on their bikes watching this match. Is the best tournament in Goa, is really the best. That's the standard that Goa has raised, and thanks to County Cricket Club of Fatoda for organizing and increasing the scale, increasing the magnitude of these tennis ball levels. Jersey partner Savli Goa, decorators Gauri Radio, light and screen by Surbhi. And online scorer Shivam Mishra, YouTube God of Savant here from Tennis Cricket, and DJ is by Dilip. These are the people, this is the team that has been working for you day and night to get this magnificent display of the game of cricket, and also nothing from nothing short of efforts from the organizers of County Cricket Club. They were working for months to get this for the people of Goa. So again going for that sweep, slog sweep over square leg region. The ball came way too slow. Bush and Gole, we have seen him mixing it up well. Sometimes he bowls that slower ball, leg cutter, similar to what Bunty Patel bowls, that leg cutter and that off cutter. Has done a pretty good job as far as batting is concerned. Hit some lusty blows. Rupesh once again. This time he strikes in the air and in the hand as well. He could not find the gap, and one more failure for Rupesh in this tournament. His bad form in this tournament continues. He had to go for that ball. He waited and went straight into the hands. You can see from the replay there, he hoiked it but did not get the elevation, and that's the reason why it just went straight into the hands. So first wicket down here, first wicket taken by Oxford Titans at the score of just 6. Second over in progress. So all the sponsors you can see on the screens, each and every name will come on slowly and steadily. Shagun is one of the co-sponsors. Wonderful lights. 8 towers are there here to give the lightning
at and the best focus possible to all the players so that the conditions are good to bat the field and also to bowl. So where this match is heading, this match right now, so far the start which has been given by Oxford Titans is certainly a pretty good start. They got the wicket of Rupesh, who is a hard-hitting player, hard-hitting batsman of the tennis ball. He's back in the pavilion. Now it's Preetham Sheth. So again, he was trying to go for that cut shot or a shot over extra cover region. Preetham Sheth hails from Madka, a very good, talented youngster. Has played one good innings, but it's about consistency. This is a big stage for him. This is the biggest stage that he has played for so far in his career. Once again, he misses it. Trying to hit that with lot of force, lot of power. And once you are doing that and giving dot balls, it not only adds the pressure on the dressing room but also on himself. You got a very good batsman, talented player at the non-striker's end. Once again, a wild swing. So far, not a single run has come of this over. What a lovely over. They are trying to have a wild swing, and it is happening like a wild guess here. Sometimes the ideas of the player might be right. Idea might be finding the gap between the square leg, but good ideas always die unless they are executed properly. This time he goes for the scoop shoot. Scoop shot and 4 runs, finally getting a boundary. He was trying that. This was a shot of good length and up and over the keeper. This is a safe shot, just like Suryakumar Yadav plays this. He has mastered that shot, and Preetham also tries that. So boundary finally, just 4 runs in this second over. After 2 is 10 for 1. So many of our guests are here watching this match in lights. This is the Eliminator, and whichever team wins here are going to play Al Zargam Royal Challengers. Their camp is also keenly watching, and in their minds they must have also made their mind which team is going to be better. But both the teams are pretty good. They are evenly balanced. Al Zargam, if they have to clinch the trophy, they have to win 2 matches in a row. And here, this sides, anyone who wins this match have to win 3 matches in a row to clinch the title, clinch the trophy. Beautiful trophy kept here in front. It's something different. It's not the usual trophies that we see. This is made of acrylic and wonderful looking shape. So a lot of thought, a lot of efforts, lot of ideas, new ideas being put by the team of GCC. Still, it is twilight, and the twilight light is also pretty good enough of sunlight to give enough cushion here for the batsman. In comes the next over. This time, no timing whatsoever. Just taking a single down the third man region, getting a single. Preetham will be the batsman. Preetham against Preetham. And you see the run up of Preetham Baria. Sometimes, most of the times when he comes to the running crease, he just pops up the ball from the left hand towards the right hand. Most of the bowlers I have not seen doing that. So he may be used to bowling from childhood like this, and that continues. But sometimes maybe he thinks that it diverts the minds of the batsmen. Some trick might be.
So far it has worked in his career. So far he has done a good job, not only in this tournament but also getting many man of the tournament prizes in different big games that he plays. Social worker Zamir Bab Ahmed is also the owner of SI Indians. And now today Zamir Bab is with Al Zargam Royal Challengers jersey. Oh, that was beaten by pace. Beaten by pace. He was way late onto the shot. This was a quicker ball here from Preetham Bari. Meanwhile, I'm talking about Zamir Ahmed. To tell all the viewers and spectators, Zamir Ahmed is the first Goan owner to be taking a full Goan team. Almost 80% are Goans to 10 PL. 10 PL is the biggest tournament that is called the World Cup of Tennis Cricket, and he is going to take Goan players over there to play in Surat. So wonderful from Zamir Ahmed. So doing a lot of things here, especially social work also, and also for the game of cricket. So far, just 2 runs of the 3 balls, and asking run rate climbing up and up. This is stoppage, and catch dropped. Catch is dropped, and who is that man? The last man on the ground to drop this catch is Mukhtar Qadri. He didn't time the jump that well as he would have liked. He maybe reacted a little bit late. He knows that he has committed a mistake here, and it is Munna Sheikh. Munna Sheikh it is. They have left the Tiger wide open and left him from the cage. And now the Tiger is wide open in the wild. Let's see whether he gets wild early or later on. This time, oh, good swing, but the bowling is also pretty decent. They are not allowing him to swing the bat. They must have studied Munna Sheikh. He favors that the backward square leg and fine leg region. More so, that is the same region that was pointed upon, that was hit for 6s. Peppered over there by Munna Sheikh. Now, strike rotate. Score is just 15 with 3rd over in progress. It's not moving at a pace that is required, but still 6 overs are left. Still ample of cricket to be played in this match. In fact, 5 overs. This is nothing short. There is a man in the deep. He comes and takes a... Oh, he drops it. 2 catches dropped in the same over, and Bush and Gole drops it. The 2 of the best fielders, best men, experienced players are dropping this catch. And Mukhtar Qadri must be saying, what has happened? What is happening here? So it's not going right. Catch is being dropped, and after completion of 3 overs, still the score has not gone up. It's just 16 for the loss of 1 wicket. Well, other teams also must be watching. When they go in for a toss, they will think whether to win the toss and electing to bat first. Because bowling first, teams are struggling to chase here. Normally in this tournament, whichever captain has won the toss deciding to field first, no hesitation, absolutely, but not the scenario today. Mukhtar Qadri was very smart, electing to bat first immediately after winning the toss. He knew that this was a time when lights also will come into full effect, and it's better to bat first. So thinking is very important in the game of cricket. You need to introspect, you need to learn, you need to propel yourself a little bit from the position that you are from the previous tournaments to these editions. Certainly going ahead with some sort of learning always helps. Just the 16, and in comes the 4th over. Asking run rate is way above. It is 84 runs required at this stage in just 30 balls. Yes, possible. Why not possible? Cricket has seen great comebacks. Munna Sheikh has seen himself playing good innings and can make a comeback. So they are trying to set the field here. Let's see.
I was talking about all the cricket lovers. Well, I have seen many good faces, my friends, and some of the players. Well, anyone who loves this game, especially tennis, they will come from any part. It's, the cricket ground is like a magnet to them. They get attracted so easily. Oh, and his ball. He missed a full toss ball. He was waiting for the slow ball, and Bhushan Gole was very smart. And that's it. Second wicket going down. The struggle of Pritham Seth is ended over there by a wicket. And Bhushan Gole starts the fourth over with a wicket of the first ball. Emo, I already taken the names and all the sponsors. SportsNinja.in, CEZ and Shogun Hotels. Sports Ninja, the title sponsors, co-sponsor CEZ and Shogun Hotel. It's a wonderful feel. People must have seen and people must have gauged which is a very good team, balanced team. KKG and Knight Riders are certainly having a balanced unit in bowling and batting department. Watchfully played down towards the point region. Just coming up first up, so Bunty Patel needs a good knock. Both these outstation players are on the crease at the moment, and outstation bowler Bhushan Gole is bowling. So fight between the outstation players at Fatoda in Goa. Are they waiting for one more bowling option? That is the third, fourth and fifth bowling option. That might be the idea, and once that comes, they will certainly go after the bowling with an aggressive instinct, aggressive mode. Bunty Patel, I know the fervor behind this man is with a great intent, intensity and passion. He likes to go ahead with that fervor. And a wide signal here. Pritham must be telling it has come back in, but umpire is telling it may be coming in after that guideline. So I have to see at the time when it crosses that guideline marked for me, not when it goes into the hands of the keeper. Oh, that is wonderfully lifted. Classy shot. What a lovely lift here. This is super batting from Munna Sheikh. That was slow, but he waited for his time and timed it beautifully down the ground. Cricket is all about timing. Look at the flow of the bat. Look at that flow of the bat. Just love this player when it is full flow. Is his six going to change the momentum here? He has read Bhushan Gole right from his hands that it was a slower ball. This takes the score to 24. Still lots of runs to get. Lots of runs. This time, magnificent. Super shot from Munna Sheikh. This is the class of this man. You cannot err from your length. Once you err from your length, then the ball is going to go in the dark, and we have to take that time to get a ball back in play. But the Fatodekas are smart. The Goans are smart. They want such action to continue, and they give the ball back in to the bowler. Score moves on to 30. 2 sixes. Munna Sheikh
slowly and steadily going from the second gear towards the fourth. Now the worry will be in the camp of Oxford Titans. Oh, that wild swing. This time he did not get the connect. Still gets a single, and till the time both these hard-hitting players, smart players are there on the wicket, Dynamic Royals will have high hopes, and also their big man Buddy is yet to come. Some point of time they will require his services. With the single, score moves on to 31. Fourth over in progress. Still not gone out of hands here. Still not gone out of hands for Oxford Titans, and still not out of the reach these required runs from Dynamic Royals. This is in the air. This is in the air. Someone catching it, but it is catching out of the ground, not inside the ground. High and long, an expensive over from Bhushan Gole comes to an end. This match has come alive here, absolutely alive through those 360s. I am just thoroughly enjoying my time in the commentary box. And now there will be a meeting soon from Oxford Titans. They didn't had to take the meetings in the previous 3 overs, but now with the intent loud and clear, and is buzzing here at Fathoda grounds. The buzz continues after completion of 4. The score is 37 for the loss of 2. The updates in Marathi. He will further tell all the spectators and viewers who are on Tennis Cricket these updates of the next 4 overs. In comes Sarfaraz Nawaz and in comes Jay Bhosle. हेलो, धन्यवाद हरीश। 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेलने की कोशिश, इस बार सरफराज है गेंदबाज। बहुत बड़ा टोटल 100 का आंकड़ा पार करना है, लेकिन देखना पड़ेगा। सरफराज है, चतुर गेंदबाज है, होशियार गेंदबाज है। मैदान के बीच में हमेशा कहा जाता है, चंदन को कहना नहीं पड़ता, वो चंदन है। चंदन की महक से ही पता चलता है कि चंदन मैदान के बीच में आया है। देखना है मैदान के बीच में सरफराज और उनके सामने लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मुन्ना शेख। इस बार खेल दिया है जमीन के सहारे, जो निश्चित रूप से डीप में खिलाड़ी तैनात है। क्रिकेट का माहौल इस तरह से बना चुके हैं मैदान के बीच में। ये प्रीमियर लीग, जब इंसान जन्म लेता है वो सोता है माँ की गोद में, जब उसका इंतकाल हो जाता है तो उसे दफना दिया जाता है मिट्टी के गोद में, और इसके बीच से जो गुजरता है उसे कहा जाता है जिंदगी का सफर। और वो जिंदगी का सफर सुहाना और सुंदर बनाने के लिए ऐसे प्रतियोगिताओं का आयोजन करना बेहद जरूरी है। इस मैदान के बीच में क्या माहौल बनाया है, चारों तरफ देखा जाए दर्शकों का भरा हुआ ये मैदान। मैच बीच मजदार में फंसा है और देखना है सरफराज उर्फ चप्पू, सामने है इस बार बंटी पटेल। और इस बार स्विंग एंड मिस, निकली विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। बहुत ही बढ़िया। हमेशा कहा जाता है कैचेस आपने 2 छोड़े हैं, शायद कहीं ऐसा ना हो जाए ये बल्लेबाज मारे कम और घसीटे ज्यादा। माहौल इस तरह से बन गया है मैदान के अंदर।
सरफराज उर्फ चप्पो फिर एक बार गेंदबाजी के लिए दूर वाले एंड से शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद इस बार खेल दिया थर्ड मैन की दिशा से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ अब टोटल पहुंचा 42 पर। 100 रनों का पीछा करना है। ऐसा लग रहा था वो 2 ओवर में रन नहीं बने जिसके चलते हुए 15-16 रन कम बने हैं, लेकिन जो है उसमें आपको लड़ना पड़ता है क्योंकि क्रिकेट में अगर मगर का कोई स्थान नहीं है। सरफराज फिर एक बार गेंदबाजी के लिए इस बार खेल दिया खुद कर निकाले हुई गेंद में मात्र मिलेगा सिंगल। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि क्रिकेट में अगर मगर को कोई स्थान नहीं। अगर मेरे चाची को मूंछें होती तो मुंह से चाचा कहता। ये कहने वाली बात जरूर है लेकिन मैदान के बीच में ये लागू है। बहुत ही बढ़िया सिंगल के साथ टोटल जो कि पहुंचता हुआ 43 पर 43। अभी भी 57 रनों की और आवश्यकता। यह है मुन्ना, नाम इनका मुन्ना है लेकिन कारनामे बहुत ही बड़े बड़े कर चुका है ये खिलाड़ी, लेकिन उनके सामने है सरफराज। आगे निकले खेलने के लिए जमीन के सारे विद द कारपेट के साथ लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में खिलाड़ी जब तक उसके फील्ड करता है 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा है 44 रन पर। 5 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है और 44 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। अब बचे 18 गेंदे और 18 गेंदों में जीतने के लिए 56 रनों की और है आवश्यकता। अब तक 56 यानी कि वो नाना पाटेकर की फील्ड, अब तक 56 की है आवश्यकता। मैच में क्या होगा किसी को पता नहीं चलता क्योंकि सपनों के महल हवा में नहीं टिकते। जब हवा का झोंका आ जाता है ना वो सपनों के महल चकनाचूर हो जाते हैं। अंपायर का इशारा बैटिंग पावर प्ले का। 18 गेंदे और 56 रनों की है आवश्यकता। आप देख रहे हैं साउथ गोवा प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2 और ये अंतिम दिन का एलिमिनेटर राउंड का ये मुकाबला। जो हारेगा उसका होगा पैकअप, जो जीतेगा वो करेगा टेकअप। हमारे साथ है विराज, बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग का काम कर रहे हैं, साथ साथ कंप्यूटर स्कोरिंग का भी काम करते हुए शिवम और पूरी TennisCricket.in की ये पूरी टीम जो है 197 देशों में इस प्रतियोगिता को लाइव दिखा रही है। और क्या चाहिए, दूध से नहाए हुए स्टेडियम में इस तरह से ये टेनिस बॉल क्रिकेट का माहौल मानो IPL प्रतिबिंबित हो रहा है इस मैदान के बीच में। गेंदबाजी में अब आ रहे हैं निकेत गांवकर, खुद के कोटे का पहला, टीम के ओर से छठा ओवर लेकर पावर प्ले का ये ओवर काफी मायने रखेगा। इस ओवर में अगर रन बने तो बात बनेगी, वरना शायद ऐसा कहना पड़ेगा बाद में रखवाली करने से फायदा क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत। 18 गेंदे और 56 रनों की है आवश्यकता। ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने से गेंदबाजी के लिए इस ओवर में शायद 16 या 20 का आंकड़ा इस ओवर में पार करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। तो दूसरी तरफ से फील्डिंग करने वाली टीम को 1 विकेट की सही तलाश है। इस बार उठा दिया, कहां निकले दूर, बहुत दूर, देकर जाएगी पूरे आधा डजन रन और छक्के के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए आधा फासला तय हो चुका है, आधा सफर तय हो चुका है, आधा सफर तय करना है। मैदान में आन बान और शान की लड़ाई, करो या मरो नहीं तो घर को चलो, इस तरह का यह मुकाबला मैदान के बीच में। इसलिए कहा जाता है बीच मझधार में फंसी नौका यूं ही पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। पहली गेंद पर एक तगड़ा स्ट्रोक देखने को मिला, गेंद बहुत निकली, तारामंडल को चीरते हुए 6 रन के लिए 50 का आंकड़ा पार हो चुका है। गेंद इस तरह से दूर जा चुकी है, उसको लाने के लिए फ्लाइट भेजनी पड़ेगी इतनी दूर। ये मुन्ना शेख ब्रांडेड छक्का है। मुख्तार कादरी शायद सोच रहे होंगे वो क्या है छूटा, शायद साझेदारी ये टूटनी चाहिए थी,
वो भूषण के हाथ से कैच छूटा, वो साझेदारी टूटनी थी। कहीं ऐसा इस तरह से आप खैरात में रन बांट रहे हो जैसे कि खुद के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपको लगाम कसनी है, रनों के ऊपर बांध लगाना है, रोकना है, वरना आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया, इस तरह की नौबत आ जाएगी मैदान के बीच में। हमारे और एक करीबी दोस्त आनंद और बद्री आ रहे हैं। मैं दो हंसों का जोड़ा हमेशा कहता हूं, मुख्तार कादरी और आनंद बद्री को। एक हंस मैदान के अंदर है, दूसरा हंस मैदान के बाहर से अब उनकी टीम का खेल देख रहा है। छठा ओवर है प्रगति पर। 17 गेंदें अभी भी बाकी है और 17 गेंदों में 50 रनों की और है आवश्यकता। मैच बन गया है, बन चुका है। किसके सपने साकार होंगे, किसने सपने टूटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। थोड़ा सा मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जो कमेंट्री बॉक्स के सामने दर्शक खड़े, थोड़ा सा बगल में आइए प्लीज। धन्यवाद। मैं खास करके शमीम का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। 12:30 बजे फोन किया इन्होंने, तुरंत तो फ्लाइट पकड़ के आना पड़ा क्योंकि बुलावा आया था। इस बार खेल दिया है, कवर के ऊपर से पीछा किया जाएगा, लेकिन गेंद करती हुई टाटा बाय बाय 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार चौका। अब रफ्तार पकड़ी है, अब रफ्तार पकड़ी है। चौके के साथ टोटल पहुंचा है 54 रन पर। रोके तो आखिर रोके कैसे, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल आए। एक शेर तो दूसरा बब्बर शेर, दोनों तरफ से पिटना तय है। फिर एक बार निकलते हुए गेंदबाज निकेत, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, ये बचने वाली गेंद, लेकिन वाइड का इशारा, अतिरिक्त सिंगल। टोटल पहुंचा है 55 कर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कटना तो आखिर बकरे को ही है। चाहे गर्दन सूरे के ऊपर रखो या सूरा गर्दन के ऊपर। विकेट फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। ओ इस बार खोद कर निकाले है, कहीं भी डालिए। आज तो मुझे गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। गेंद निकलती हुई सीमा पर, टोटल पहुंचा। देखना है अंपायर का डिसीजन। 4 रन और इस चौके के साथ टोटल पहुंचा 59 पर, 59 रन। मैच देखिए कहां फंसा था, कहां लेकर आए थे। 18 गेंदों में चाहिए थे लगभग 56 रन, लेकिन अब यहां पर शामत आई है। 15 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और जीतने के लिए रन चाहिए 41 रन। 15 गेंदे 41 रनों की आवश्यकता। देखिए आप पिच के ऊपर अगर नजर डालोगे, मैदान के बीच में चांदी रखी हो, इस तरह से प्रतीत हो रहा है वो पिच, इस तरह से शाइनिंग हो रहा है ये पिच। ये है सुरभि लाइट का कमाल इस मैदान के बीच में। अब जो कि क्लोज विकेट कीपिंग करेंगे तो आपको हेलमेट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर इनके पांव को आपको पकड़ना है तो आपको क्लोज विकेट कीपिंग करनी ही पड़ेगी। मुख्तार कादरी ने वो कैच छोड़ा था, वो काफी टेंशन भरा मालूम हो गया है। कहीं पेंशन लेने की जरूरत ना पड़े, इस तरह का ये मुकाबला इस मैदान के बीच में। हमारे विकेट कीपर के पीछे जो ब्लैक स्क्रीन है, वहां पर दर्शक जो खड़े हैं बैठे हैं, उनसे गुजारिश है प्लीज आप ये वहां से हटिए। आप है इसलिए इस प्रतियोगिता को 4 चांद लगे हैं, लेकिन आपके वजह से कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए आप वहीं से हटिए और दूर से मैच का आनंद लीजिए। धन्यवाद। इस वक्त मैदान के बीच में क्या चल रहा है? 15 गेंदों का खेल बाकी है, 41 रनों की आवश्यकता। निकेत निकले गेंदबाजी के लिए।
इस बार देखिए, ये है खौफ, ये है दहशत इस बल्लेबाज की मैदान के अंदर। वाइड का इशारा, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 60 रन पर। 40 रनों की आवश्यकता। शायद मुन्नाल के लिए हमको कहना पड़ रहा है, आपका शॉट तो कमाल का था, हमें सब कुछ कमाल लगता है, लेकिन रुकना है, इनके चरण को आपको छूना है और इनका विकेट आपको हासिल करना है, तभी मैच में वापस का द्वार आपका खुल जाएगा। और इस बार खिलाड़ी वहां पर तैनात, लेकिन सर के ऊपर से गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए। आज रोकना नहीं है मुझे, मैं हूं तूफान, और तूफान को कभी रोका नहीं जाता। जो जो बीच में आ जाता है उसे रोनते हुए तूफान निकल जाता है। और चौके के साथ टोटल अब पहुंचा 64 रन पर। यह है क्रिकेट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, गली में खेला जाए या दिल्ली में, 5 साल का बच्चा हो या 60 साल का बूढ़ा, जिसने क्रिकेट खेला नहीं, जिसने क्रिकेट देखा नहीं, उसने जीना सीखा नहीं। बहुत ही बढ़िया माहौल मैदान के बीच में। इस बार खोद कर निकालना चाह रहे थे, सिंगल तो जरूर निकलेगा। सरपरा तेजी के साथ आए, दूसरे के लिए पलटे, दो जब तक थ्रो आ जाता। देखिए बहुत ही बढ़िया विकेट, रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर देखने को मिले। दोनों के बीच में चुरा लिया ये दूसरा रन। मानो विकेट के बीच में दो बैटर नहीं, हिरन दौड़ते हुए नजर आ रहे हो। 2 रन के साथ टोटल पहुंचा है 66 रन। मैच अभी भी जिंदा है, मैच में अभी भी जान बाकी है। देखना है रोमांच किस तरह से बढ़ता है इस मुकाबले के दौरान। दर्शकों की निगाहें पूरी मैदान के बीच में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उससे ज्यादा मैच कैसे समाप्त हो जाएगा, कौन दिलों के ऊपर राज करेगा, किसके सर के होगा जीत का सेहरा, किसके गले में पड़ेगी हार की माला। फुल टॉस गेंद खड़ी हो गई है, क्या विकेट मिल सकता है? सरफराज, और ये प्राइस विकेट, ये विकेट निकले मुन्ना शेख, निकले पेवेलियन के गले। बहुत ही बड़ा विकेट निकला। इसलिए कहा जाता है, जो इंसान सोचता है वो कभी होता नहीं। 41 रनों की ये शानदार पारी समाप्त हो गई है। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। इस तरह की बल्लेबाजी मुन्ना शेख ने की है मैदान के भीतर। क्या इस वक्त अपने टीम को बीच मजदार में छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मैदान के अंदर आ रहे खुद कप्तान सैयद बद्दी, गोल्डन आर्म, खड़े खड़े छक्कों की बारिश करने वाला यह खिलाड़ी अब मैदान में दाखिल हो चुका है इस वक्त। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं, ओवर समाप्त हो चुका है 6ठा। अब बचे 12 गेंदे और 12 गेंदों में जीतने के लिए 34 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदे और 34 रन। हमेशा कहा जाता है क्रिकेट में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, जिसका बल्ला जिस दिन चला वो बल्लेबाज बड़ा हो जाता है। जिस गेंदबाज ने विकेटें निकाली, कंजूसी गेंदबाजी करी, उस दिन वो गेंदबाज बड़ा हो जाता है। अगर आपका दिन खराब हो तो आप पेड़ के ऊपर बैठे हो तो भी कुत्ता आकर काट के चला जाता है। 12 गेंदे और 34 रनों की आवश्यकता। मनोरंजन करते करते मैच में भी आपको तुरंत लेकर आऊंगा, क्योंकि आप मैच देखने के लिए आए हैं। पूरा टेंशन आपका दूर हो जाएगा इस मैदान के बीच में। यही तो खासियत है इस साउथ गोवा प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2 का ये आज का अंतिम दिन। गेंदबाजी में विक्रम, 12 गेंदे और 34 रन। स्ट्राइक पर है बंटी पटेल। ये इस खिलाड़ी ने क्या बेहतरीन कारनामा करा था, इनके बारे में जरूर बताऊंगा। उड़पी प्रीमियर लीग का पहली बड़ी गाड़ी पटकाने वाला ये खिलाड़ी मैदान के अंदर बंटी पटेल।
इस बार खेल दिया खड़े खड़े मिड हेलीकॉप्टर, गेंद निकलते हुए कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। ये होना चाहिए आन बान और शान की लड़ाई में। टोटल इस छक्के के साथ पहुंचा है 72 रन पर। जीतने के लिए 11 गेंदे 28 रनों की है आवश्यकता। मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। जो दिल के मरीज है वो कृपया इस मैच को ना देखे, हमारी सिर्फ आवाज सुने, रिस्क हमारा नहीं है। ये ऐसे मुकाबले हमेशा देखने के लिए दर्शक आ जाता है दूर दूर से। फिर एक बार शॉट ऑफ लेंथ की गेंद, मौका था बड़ा शॉट लगाने का लेकिन लगी नहीं, चढ़ी नहीं बल्ले के ऊपर, गेंद निकली 1 रन। अंपायर का इशारा लेग बाइट्स का आता हुआ। अंपायर के बारे में चंद लाइनें कहना चाहूंगा। अंपायर इस तरह से खड़े हो गए हैं, उनको सब नियम पता है, सब बल्लेबाज पता है, सब अनुकूल वातावरण पता है, लेकिन मैदान के अंदर परिस्थितियों के साथ अंपायरिंग करते हुए डिसीजन देना ये खाने की बात नहीं है। अगर किसी को यकीन ना है जरा करके देखिए, एक मुकाबले में पसीना छूटेगा, कहां कहां से छूटेगा पता नहीं चलेगा। ओहो माइंड ब्लोइंग, व्हाट अ शॉट! यह है सैयद बद्दी ब्रांडेड सिक्सर। हम यूं ही किसी की तारीफ किया नहीं करते, क्योंकि यह छक्का लगाया, खड़े खड़े लगाया, और टोटल इस छक्के के साथ मैच का टोटल पहुंचा है 79, 79 रन पर। सिर्फ चाहिए 21 रन। मैच कहां था कहां आ गया है देखिए। इसलिए कहा जाता है 21 रनों की है आवश्यकता। 9 गेंदों का खेल बाकी है, 21 रनों की आवश्यकता। मैच बहुत ही बढ़िया। फिर एक बार, इस बार खेला चढ़े ऊपर, ओ बहुत ही बढ़िया कैच, विकेट का पतन, कैप्टन चले मैदान के बाहर। भोपो की आवाज कैरेबियन बेट के ऊपर से हमारे दाहिने तरफ से। क्या मैच में ये ट्विस्ट है? क्या मैच में फिर एक बार मजा आ जाएगा? क्या मैच में फिर एक बार करवट बदलती हुई नजर आएगा? मैदान के बीच में आप देख रहे हैं 8 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और जीतने के लिए 21 रनों की और आवश्यकता। यहां पर जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट मुन्ना शेख का निकला, लेकिन बंटी पटेल अभी भी मैदान में मौजूद है और न्यू बैटर मैदान के अंदर धीरे धीरे दाखिल हो रही है। हर्षद मातोंडकर, गोवा राज्य का एक और सितारा, और इस मैदान के ऊपर इस दूध से नहाए हुए स्टेडियम पर देखिए सितारे जमीन पर। आज 5वां दिन और लगातार चार दिन आपने देखा, दर्शन बांदेकर का जलवा देखा इस मैदान पर, बंटी पटेल का देखा, मुख्तार कादरी का देखा, सरफराज का देखा। माफ कीजिए, थोड़े से बातों बातों में दिनों का पता ही नहीं चलता है। आपके टूर्नामेंट भी इतनी बढ़िया है कि दिन कितने हुए हमें भी पता नहीं है। उत्साह भरे वातावरण में कभी कभार ऐसा हो जाता है, जो गलतियां होगी वो मेरी होगी, जो अच्छाई होगी वो आपकी होगी शमीम भाई, और आपकी हो जिस की भी है। चलिए मैदान पर 8 गेंदे 21 रन। ओ ये बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। इसलिए कहा जाता है सुबह का भूला अगर शाम को वापसी करे तो उसे भूला नहीं कहते। 7 गेंदे और 21 रन, और बद्दी का वो विकेट इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मुख्तार कादरी अब इस मैच को नहीं छोड़ना चाहेंगे, कसकर पकड़ना चाहेंगे, एक आध और विकेट लेना चाहेंगे, लेकिन मैच बहुत ही रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार खड़ी हो गई है गेंद, दूरी नहीं है, विकेट के नीचे, गेंद के नीचे, और एक विकेट। जैसा मैंने कहा वैसा वहां पर विकेट निकला। 6 गेंदों का खेल बाकी, 21 रनों की आवश्यकता। बजाओ डीजे।
ऑर्गनायझर्स की आता ही मॅच सोंपली, फक्त 5 मिनिटाचे गॅप असतले, 5 मिनिटाचे. ताजे नंतर जी दुसरी मॅच जातली ती रोखडीच 5 मिनिटां नंतर चालू जातली. प्लीज नोट, चढ गॅप काय आसपाचे ना आणि चढ रेस्ट आसपाचो ना. 6 गेंदों का खेल बाकी है, 21 रनों की आवश्यकता है. सोने का निवाला किसके मुंह में चला जाएगा, या सोने का निवाला मुंह तक आते आते किसी का हाथ लग जाता है और मिट्टी में गिर जाता है. ये दिखाने वाली ये 6 गेंदे है. 6 गेंदों में चाहिए 21 रन. और गेंदबाजी के लिए देखिए किसके हाथ सौंपी है गेंद. गोल्डन आर्म चैंप जिसे कहा जाता है, और जिसने कई बार ऐसे विकट परिस्थितियों में अपने टीम के सर के ऊपर जीत का सेहरा बांधा है. सरफराज नवाज के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा. छह गेंदे 21 रनों की आवश्यकता. दर्शक बड़ी तादाद में आ रहे हैं, आते जाएंगे. मैदान के बीच में ये दर्शकों का सागर उमड़ता हुआ नजर आ जाएगा. लेकिन इस वक्त मैदान पर चलिए, अच्छी गेंद तो नहीं है, ऑफ स्टंप से बाहर. वाइड का इशारा आ रहा है अंपायर का. अतिरिक्त सिंगल. 6 गेंदे 20 रन. ये है न्यायपालिका. इसके ऊपर कोई न्यायपालिका नहीं है ना, इसके ऊपर आप अपील कर सकते हैं. सरफराज नवाज हर संभव प्रयास कर रहे हैं आप मैदान के बीच में गेंदबाजी करते वक्त. 6 गेंदे 20 रन. ओ इस बार हवा में खेला है, लेकिन ग्रिप में खिलाड़ी तैनात नहीं है. खिलाड़ी को काम बचा है सिर्फ बाउंड्री लाइन से बाहर से गेंद लाने का. 4 रन निकले. 5 गेंदों में चाहिए अब 16. 5 गेंदे 16 रन. मैच देखिए, दर्शकों से दिखाना चाहूंगा. देखिए किस तरह से चौका लगा है, किस तरह से गेंद निकले सीमा पर. किसी ने सोचा नहीं था मैच यहां तक आ जाएगा, ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी. इसलिए इस मैच की क्रिकेट के बारे में कहा जाता है मुर्दों के शरीर में जान डाल देता है क्रिकेट. पांच गेंदे 16 रन. यह है इस मुकाबले का समीकरण. इस बार फिर एक बार बटके, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, फिर एक बार वाइड. ये दबाव होता है. मातशे त्या हांगा कॉमेंट्री चलता, मातशे सायडीन रावात प्लीज, कारण तांकां दिश्टी पडनात प्लीज. आणि होर्डिंग्स आसा त्याच्या मुखारी मातशे रावनाका, तुमकां रिक्वेस्ट करता. 5 गेंदों का खेल बाकी है, 15 रनों की है आवश्यकता. इस बार उठा दिया, क्या विकेट मिलेगी? जी नहीं. ये गन निकले 6 रन के लिए, पूरे आधा डजन रन. बंटी ने बजा दी यहां पर घंटी. बहुत ही खतरे की घंटी इस मैदान के बीच में. 4 गेंदों का खेल बाकी है, 9 रन की है आवश्यकता. आणि म्हाका दिसता खरें सांगपा म्हणल्यार बॉल वयर गेलो तो बॉल सकयल आयलो तो दिश्टीच पडूना. जबरदस्त हिट. ये तो टेक ऑफ हो गया. जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है ना तो ऊपर ऊपर चला जाता है, वो नीचे तभी आता है जब पैसेंजर को नीचे होता है. 4 गेंदे 9 रन.
मैच कहां से कहां लेकर आए हैं देखिए, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा वो 2 ओवर में रन नहीं बने आखिर के, अगर 10-15 रन वो 2 ओवर में बनते ना तो मैच का नतीजा कुछ और होता। फिर एक बार कहना चाहूंगा क्रिकेट में अगर मगर को स्थान नहीं होता। चाची वाला डायलॉग तो सबको पता है। देखना है ये 4 गेंदे और इस बार खेला क्या लाजवाब स्ट्रोक, देखिए ये फ्लाइट 6। This is the match of the tournament. The match of tournament undoubtedly, and witnessed by more than 5,000 crowd. Not only here but lakhs of viewers are watching it live on Tennis Cricket. पिछले साल में सांगेम प्रीमियर लीग ने इस 3 ओवर में 50 रन निकाले थे। बंटी पटेल मैन फ्रॉम गुजरात, ये फ्लाइट डिलीवरी गेंद गोली की रफ्तार से निकली सीमा पार। इससे पता चलता है ये चंदन है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ इस बार गेंद निकले, मैच यहां पर समाप्त, मैच समाप्त हो चुका है। गेंदें बची है वो लेकर चले जाइए। बाकीचे कोण ना भाई, होय बाकीचे वसपा मेळना फक्त प्लेयर्स वचपा अलाउड आसा, फक्त प्लेयर्स. Stunning match, outstanding match, unbelievable comeback we have seen in this game of cricket. Super innings from Bunty Patel, and Oxford Titans are absolutely stunned. Thank you. Totally stunned. बंटी पटेल तुम्ही रंग लाओ छियो, बंटी पटेल तुम्ही रंग लाओ छो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और तो इसका कोडकर। Thank you Jay. Well, I am in Dynamic Royals camp. Syed Badi, what a victory, what a magnificent victory. I think this victory would have lifted your team up. Yeah, Alhamdulillah, we won this match. This was a very important match. Like it was a good total, and we were knowing that Munna Bhai and Bunty was there, myself was there. Then match will be in our side. If we are there, we can win this match. Munna Sheikh, how well he's playing, and he's getting you close to the victory. And this time it is Bunty Patel, stunning finish, outstanding finish. If you had asked before the start of the final over, I think 70% would have, 80% would have said match would have been won by Oxford Titans. This is, I guess, this tournament's best match and an unbelievable comeback. They know how to, like, they were knowing how to play ball to ball, and the target was not that big. Like the first match it was 120, and then it was 100, and they were having calculation in their mind. So we were calculating as per, and the plan went. And congratulations to you, and I now join your team and enjoy. There is a buzz, and they are so excited. They are themselves one match. आता हांगा जे बसल्यात तांकां रिक्वेस्ट करता, ह्यो प्लेयर्साचे डगआउटाच्यो खुर्ची ह्यो मातशे प्लेयर्सां दिवच्यो प्लीज रिक्वेस्ट करता. इट आर प्लेयर्स चेअर्स, ह्यो खुर्च्यो
प्लेयर्साच्यो आसात मातशे प्लेयर्साक परत डगआउटान दिवच्यो. So meanwhile requesting one of the member of GCC, Zubair, to please come near the commentary box. Zubair, you are requested by the team members to come at the commentary box. पात्रांव जे आसा ते प्लेयर्सां खातीर केल्ल्यो त्यो डगआउटाच्यो खुर्च्यो मातश्यो तांकां परत दिया कारण प्लेयर्सां डगआउटांतल्यान वचपाक जाय. सो तुमकां रिक्वेस्ट करता मातश्यो खुर्च्यो मातश्यो दियात कारण प्लेयर्सांक तेंच्या डगआउटाच्यान खुर्ची काडल्या आनी लोकांनी हांगा येवन बसल्यात. सो वाट पळयता. So meanwhile a request is going out for the captain of Royal Challengers and Dynamic to be ready for the toss, as only 5 minutes will be given as a break time. So now let's move towards the presentation arena, as we have to hand over the man of the match for the prolific performance. So requesting Shri Manish Jain, please come at the presentation arena and kindly do the honors. And we don't have any much choice, as all the spectators have witnessed a beautiful all-round performance, and what a finish for the match. 21 runs were required from 6 deliveries, and good power hitting from the batsman. And even requesting Shri Alulia Di Costa to kindly join our guest, as the man of the match will be given jointly by Manish Jain and Alulia Di Costa. Without much time, requesting Bunty Patel to kindly come up and take your man of the match trophy from the guest, as you are the superstar in the Eliminator. What a performer. Good with the ball. And what a prolific batting that we have seen in the depth over. 21 runs were required, and you made it look so easy. It's not easy in the lights, but what a player that we have seen. So here's Bunty Patel receiving the man of the match trophy. Definitely will be with his personal photograph, as well as the pictures will be uploaded later. मातशे जोरान ताळयो मारया. एक बरो परफॉर्मन्स पळोवंक मेळ्ळा हांगा सगळ्यांक. So Bunty Patel receiving the man of the match trophy from the dignitaries. Bunty, if you can please join me for a while. बंटी, ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, आप ही बताओ आपको क्या कहना है इस मैच के बारे में? कुछ नहीं, हम लोग थोड़ा बैकफुट गए थे जब मुन्ना भाई का विकेट गया था तभी, और बड़ी भाई भी आउट हो गए थे, और लास्ट ओवर में 21 रन था. मतलब पॉसिबल ऐसा नहीं था, मुश्किल था, और अच्छा खेले और हम लोग जीते. और सिचुएशन भी उतना अच्छा नहीं था जब आखिर 4 ओवर बचे थे, लगभग 50 के ऊपर रन चाहिए थे. तो दिमाग में क्या चल रहा है, कौन से बॉलर के पीछे जाऊं, कौन से बॉलर को सेफ खेलो, या कैप्टन से क्या बातचीत हुई, कौन सा मैसेज आया था, कैसा खेलना है, क्या स्ट्रेटेजीज बनी थी? जब 50 रन का स्कोर
चेस करने थे, तब मुन्ना भाई और मैं बैटिंग कर रहे थे। तब मुन्ना भाई के साथ यही डिस्कस हो रहा था कि हम लोग 24 बॉल है, सिर्फ 6 बॉल अच्छा खेलेंगे, 6 सिक्स मारेंगे, मैच जीत जाएंगे, 3-4 बाउंड्री मारेंगे, मैच जीत जाएंगे। और हमारा यही स्ट्रेटजी था। तो और बात करें आखिरी ओवर की, 21 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में। तो मैं आपसे ज्यादा नहीं पूछूंगा, आपने जो कमाल किया और वो बैकफुट पंच, क्या लाजवाब शॉट था। आपको ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक इन द क्वालिफायर्स। मीनवाइल 5000 रोहित स्पोर्ट्स क्लब. So now here's a cash prize of rupees 5,000 for prolific performer for Bunty Patel from Rohit Sports. And to give away this cash prize, Shekhar Pillai has joined. And even requesting Munna Sheikh to please come, as you have also been awarded a cash prize from Rohit Sports. ना 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 चलेगा। हम लोग हर साल शेखर भाई, एगी भाई, लल्ला भाई थे, उसी की टीम में आते थे। और अच्छा हुआ आज वो लोग मैच देखने आए और हम लोग का लक भी आ गए साथ में। So, requesting Munna Sheikh, if you can come up, as there is also a cash prize for you from Rohit Sports for your small cameo that have helped to chase down the target. Munna Sheikh, please come at the presentation area and receive a special prize for you, which is given by Rohit Sports. And to give this prize, here we are having Shekhar Pillai, a good personality. I must call him a critic because he has all the updates and gives each and every detail about the game. शेखर पिल्ले भाई, आप आए हो तो आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। सो आपके क्या विचार है इस टूर्नामेंट, इस ऑर्गेनाइजर्स के बारे में? गाउटी क्रिकेट क्लब, इनका ये दूसरा एडिशन है जो साउथ गोवा प्रीमियर लीग। इससे पहले हुआ था वो म्यूनसिपालिटी पंचायत था, लेकिन 2 साल से साउथ गोवा प्रीमियर लीग। आपने हर एक मैच देखा है, आपको हम यहाँ से देखते रहे हैं, आगे नहीं आते हैं, अपने जो बच्चे लोग हैं उनके पीछे बैठ के हर एक मैच देखते हैं। सो आपको क्या कहना है इस ऑर्गेनाइजर टीम के बारे में? टेरिफिक, इतनी भीड़ और इतना बढ़िया माहौल बनाया है। अब पूरा श्रेय जो जिसने ऑर्गेनाइज किया है गाउंटी क्रिकेट क्लब को जाता है। एक्चुअली पहले बरस हमने भी एक टीम लिया था, तो अब हम पछता रहे हैं कि क्यों हम पीछे चले गए। सो नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिलता है तो आ जाएंगे फिर से। पर्सनल प्रॉब्लम होने की वजह से इस बार हमने भाग नहीं लिया, लेकिन जो भी मैचेस हो रहे हैं सब टेरिफिक मैचेस हो रहे हैं और परफेक्ट ऑर्गेनाइज। और इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतना बड़ा इवेंट करना कोई इजी बात नहीं है। हल्का सा भी अगर क्वेश्चन मार्क तो भूल जाओ, ऑर्गेनाइजेशन इतना बढ़िया है, लाजवाब, नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। Thank you, Shekhar, for your kind words. And definitely this will boost the morals of the organizers. Now, requesting the captain who are going to play qualifier number 2, Dynamic Royals and Royal Challengers, kindly come for toss. Al Zargam, Royal Challengers. So the break is only for 5 minutes. So requesting captain of Al Zargam Royal Challengers and a captain of Dynamic Royals, kindly come for the toss. So here we can see a tall and a handsome stride body marching towards the commentary box for the toss, and even the captain of
Al Zargam Royal Challengers. Ajay Kewat gradually marching for the toss. So requesting Srimani Jain to kindly join us for the toss ceremony. So two captains are here, Syed Bari and Ajay Kewat. Both are from the same region of Goa, playing against each other normally. They always be the part of the same team, but here divided by different teams. So let's see who is going to give the call. Hits is the call from Ajay, and the coin has gone on the floor. Let's see. Tails it is. Syed Bari, congratulations, as you have won the toss. So what is your decision? We'll field first. So any particular reason that you have opted to field in this much needed situation? Last match also we fielded, so this match also we have to go to the same strategy, and will go with the same strength. Still, all the spectators are yet to see the prolific Syed Badi. Let's see what happens. I'm not going to take much time. Best of luck, Syed Badi. Ajay, you have not been good for the toss as you have lost, but it is not the concern as still the match is on. So what is going to be your plan? We wanted to bat first only, so toss was not important. We were knowing if Badi won the toss, they will elect to field only, so it's good. And what will be the figure in your in your mind as you have to set the target? What will be the good for your bowlers that are going to restrict in the second innings? For evening session, the balls not travels, so we'll try to score 80 plus at the night time. We'll see. Okay, best of luck. So news from the center. Syed Badi has won the toss and they have decided to bowl first. So meanwhile, our guests have to say a few words. I wish both the teams all the best and may the best team win today. Thank you. Thank you, sir. Now it's time for a small memory. Thank you. The news from the center. Syed Badi, captain of Dynamic Royals, have won the toss and decided to bowl first. सो क्वेश्चन्स आसतले तुमचे खातीर एक एक क्राउड जे आसा हांगा आसा थंय आसा हांव एक एक करून वता सगळ्यांत पयलो क्वेश्चन ह्या क्राउडा खातीर क्वेश्चन आसा अजून पर्यंत टुर्नामेंटाचो ओवरऑल जर रन्स काडले जाल्यार हायेस्ट रन गेटर कोण म्हाका रन्स नाका कोण प्लेयर आसा ताचें नांव सांगचें नांव सांग खूब जाण खंयच्यान नांव सांगतले सो म्हाका दिसता मातशें नांव सांग तुजें नांव सांग रे जुनेद कोण कृष्णा सतपुते रॉंग रॉंग कोण यतीन नायक मुन्ना शेख रॉंग आन्सर
बेगीन सांगात. पळय परत एकदा लास्ट चान्स दिता. हांगा यो आनी नांव सांगात. सगळे 10 नांव सांगतात. एक रोकडो यो हांगा यो हांगा यो हांगा यो हांगा यो. पयलीं तुजें नांव सांग. प्रदीप तुझे प्रदीप पाटील तुझे नाव. तुझे नाव सांग मरे. प्रदीप पाटील. अरे अफरीदी अफरीदी ऑल द वे फ्रॉम शारजा. अफरीदी शारजाचो मेंबर तो ग्रुपाचो. अरे अफरीदीन आन्सर दिला. आन्सर प्रदीप पाटील. प्रदीप पाटील हे एब्सोल्युटली रायट आन्सर. प्रदीप पाटील सध्या हायस्ट स्कोरर आसा आणि हे गॅटोरेड स्पॉन्सर जाता आणि वता शगुन शगुन हॉटेल आणि हे स्पॉन्सर केल्ले. सो परत एकदा आणि एकदा दुसरो याच करा खातीर. ओके लोएस्ट टीम टोटल खंयच्या टिमीन काडला. खंयच्या टिमीन काडल्या लोएस्ट टीम टोटल खबर आसा. बेगीन सांग. लोएस्ट टीम टोटल तुझे नाव सांग पयलीं. अल्ताफ. कोणे काडल्या खंयच्या टिमीन लोएस्ट टीम टोटल. बेंगलोर ऑल जरगाम रॉयल चॅलेंजर्स म्हणटा तूं. ए IPL हय गोंयच्या IPLान तो IPL पावलो. कोण आसा ह्या टुर्नामेंटाक लोएस्ट टीम टोटल. बेगीन सांगा. यो 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 बाब यो 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 बेगीन यो. नाव सांग. तुझे नाव सांग पयलीं. श्री ओजस. श्री ओजस. तुझे तुका खंयच्या टिमीन कमी सगळ्यात कमी स्कोर काडला. 10 सरकार. 10 सरकार. धाड सकाळ म्हणटा तो ना बाब. रॉंग आन्सर. जुबेर बाब. क्राउडा दिवया यो बाब सांग. नाव सांग. सोका पोडशी. तुझे नाव सांग पहिले. तुझे सांग. आन्सर. अरे हांगा रे बाबा ह्या टुर्नामेंटाक रे. हय नाव सारखे सांगा. तुझे नाव कितें. So requesting the officials to kindly take over the situation and let's start the match. नाव सांगा. पंजाबाची टीम आसली तशें नाका. टुर्नामेंट करता नाव करता. येस. Requesting the fielding team captain to kindly set your field as quick as possible. आन्सर अजून कळना. सरपंच बाब कितें खबर आसा. कोण सागर. आन्सर कितें. सर इंडियन्स. आन्सर रॉंग आन्सर. चान्स दिल्लो. परत एकदा हांगा येता. बेगीन सांग. रॉयल किंग्स. एब्सोल्युटली रॉंग आन्सर. सांग बेगीन सांग. अजून चान्स आसा. तुम्ही आता इतले टिमी इतले टुर्नामेंट फॉलो करता जाल्यार तुमकां नांव एटलीस्ट कळपाक जाय. बाब मातसो मुखार यो. तुजें नाव सांग पयलीं. समीर शेख. आन्सर कितें. SI इंडियन. एब्सोल्युटली रायट. SI इंडियन्स आणि 36 रन काडिल्ले ह्या टुर्नामेंटाचो सगळ्यात कमी टोटल. स्पॉन्सर केल्लो आसा शगुन कॅटरर्स शगुन हॉटेल जे फाटल्यान आसा त्यांनी स्पॉन्सर केल्लो आसा. Requesting the fielding team captain, anyone the officials, umpires to kindly take the charge. Let's start with the matches. One more match to be played after this match. Match is played for 8 overs and it takes more time. So this is a request from the organizers. मागता जे लोक हांगा साइड स्क्रीनाच्या मुखार बसल्यात प्लीज मातशे थंयच्यान सायडीन सरात. हांगा बॅट्समॅनाक खूब डिस्टर्ब जाता. एक रिक्वेस्ट आसा क्लबाचो. ह्या सुंदर अशा खेळाक आमी साथ दिवया. आमच्यान जाता तशी मदत करया आणि ह्या खेळाक आतां सुरवात करया.
Shuffling down the leg stump, wanted to cut the ball into the vacant area. No proper connection. Good shrewd bowler. Aniket Sanap judging what is going to happen as a batsman is trying different ways. So meanwhile we welcome Shri Maulana Ibrahim, proprietor of Quality Exports and one of the major sponsor for this tournament. We welcome you, sir. Meanwhile, a lovely strike guided the ball towards the fine leg. A slog sweep in act. Boundary takes the total furthermore to 5. So pretty calculated, predetermined strike. Again plays safe, don't want to take any risk. A wide Shocker has been treated with respect and a dot ball to end first power play over. So after completion of one, score is 5 without any loss of wicket. So all 10 wickets are intact. Definitely captain must have planned the strategy. Play safely to the better bowlers and wait for the odd ones to hit. If you get set out in the middle, then there are plenty of options later. Once you see the ball like a football, you can hit the ball wherever you want. That must be the strategy of the batting team. Meanwhile, bowlers are not going to give so easy to really go after them. First was a very, very decent over from Aniket Sanap. Has given just 5 runs in that. Not able to take any wicket, but nonetheless have restricted the run flow. And now this is the second power play over. Bowled by Bunty Patel with a long run up, mixing up his deliveries. And Faldin Kazi is on the striking, and he has been a prolific player in the recent past. Have won many man of the series, man of the match, best batsman awards. Full up pitch, delivered, no ball. It's a goal and what a hit. Straight over the bowler's head. Bunty Patel watches the ball going past the boundary rope. Total 5 runs added to the total 10 on the board. And a no ball that will give Ferdin more liberty to really attack the bowler. So let's see what is going to happen as this match is about to progress. Still a legal delivery to be bowled in the second power play over. 10 runs on the board. Faldin Kazi looking very confident now. Could not do much in the qualifier 1, but now his bat is doing the talking. Again cuts the ball away from the fielder. It is racing away. Fielder from the deep. Long off. Gathers the ball. Meanwhile, couple of runs. Wonderful, wonderful technique. Wanted to hit the ball into the gap, not getting the proper power behind that shot. And with this couple of runs, score moves to 12. So all eyes of the dugout of Al Zargam Royal Challengers will be on this batter. Meanwhile, wanted to slog sweep. No connection, ball travels safely to the keeper. No signal from the umpire. This goes as a dot delivery. A pretty healthy contest happening out between Faldin Kazi and Bunty Patel. Two big names in this tennis ball cricket world. Change in pace, equally well played. Flicks the ball, guides it towards the cow corner region. Fielder from the circle gathers the ball. Meanwhile, chance for a single. Knows that a boundary has come, now playing sensible. Concentrating on singles and doubles. Waiting for the opportunist moment to hit the ball again. With that, team total moves to 13. Second over in progress, 13 on the board. Bunty Patel gradually on to his run-up mark.
Another good deceiving delivery, ball coming towards the batsman after hitting the deck. Karan More wanted to cut the ball, thought this is going to be a leg cutter, but disguised well by Bunty Patel, delivers unexpected delivery. And dot ball to be seen in this over as well. Score is held at 13. At the moment, the run rate is at just 6.5 runs per over. Fuller pace delivery, leg cutter, ball going away from the batsman, safely into the hands of the wicketkeeper, Munna Sheikh. The brilliant brain behind the stumps, guiding his bowlers as how to carry on in the bowling department and how to get those much needed dot deliveries. Good combination, good setup, and good support for each other. Dance of a catch, oh my dear fielder was waiting at his spot. This is where basics of cricket are required. You need to take this start, my dear. That's the basic of the fielding. Take start, be quick, and take your chances. Meanwhile, a dot ball, a single to end the over. Virat Tendulkar is a very sharp brain, doing all the stats and immediately corrects me that it was a single. Sometime we do test our own people as how alert they are, and even the teams and even the audience. So after completion of 2-14 without any loss of wicket. DJ. Soon as he is finding the better track, he has many tracks, but the track should be as per the situation, and our DJ is very shrewd in that. Meanwhile, we move forward towards the third over, going to be bowled by Aniket Sanup. Again a good delivery, it continues from Aniket Sanup onto the body of Faldin Karan More. Single in form of a leg by, and that brings Faldin Kazi at the strikers end. We have seen prolific batting of Faldin Kazi in the initial stage in the league format. But so far in this much important matches, Faldin Khan is yet to make that prolific performance. Maybe taking his own chances. Here we go. Low full toss, wanted to hit the ball towards the mid-wicket region, not getting the proper connection. Even Aniket Sanup takes off the pace on this delivery. So Faldin has to wait for an hour to strike that ball. And with that single, again the team total moves to 16. Meanwhile, a convincing strike. There's a chance of a catch. Rupesh Gavkar takes it. Takes a beautiful catch, and
of a proper track, and as the fall of the wicket he has played the beautiful lyric that depicts the situation out in the middle. Tapka re tapka, that is fall of the wicket. Wonderful track and beautiful track as per the situation played by DJ Deepak. So let's see what is going to happen out in the middle. Aniket Sanap able to take a wicket. Karan More back to the pavilion by scoring individual 5 runs. Team total is at 15. As the catch was taken, as per the new rules, incoming batsman will be at the strike's end. Navdeep Gaonkar has been promoted. Let's see what he can do. Another away going delivery has been pitched, a wide Yorker. So consecutive dot balls can be seen after a single, a wicket and a dot. Again plays watchfully, drives the ball straight back to the bowler. Look at the quickness of Aniket Sana. Fields the ball onto his follow through, which is not that easy. A big guy bends at the right time, fields the ball. Another dot delivery. Final delivery of this third over and the quota of Aniket Sanap. Is it going to be the over spoiler? Meanwhile, oh my dear, the big fish has been caught. Navdeep अपनी बारी है. Let's see, is it going to be which team that is going to play the finals, as both the teams are looking very, very confident. The man in pink has won the Eliminator 1, so their confidence will be much, much higher compared to the team that is batting at the moment, as they have lost the qualifier 1 and now in a hunt to somehow win this match and take the revenge. Is it going to possible? That we are going to come to know after this match. Meanwhile, fourth over, let's see who is going to be the in charge to bowl the fourth over. 3 overs, just 16 runs on the board and 2 wickets back to the pavilion, and both the wickets are taken by Aniket Sanap in his second over. And what a over it is. The third over, that is the second over of Aniket Sanap's quota, has given only 2 runs, but that 1 run will be going to the extras as it was leg by. Just a run from Aniket and 2 wickets. Kirtesh Kinalkar has been introduced by the fielding captain. What an over that we have seen that Kirtesh has bowled in the previous match, that is the Eliminator. Second last over has given only 2 runs in that, and that has changed the course of that match. So let's see what he can do in this match, as Faldin is at the striker's end. Shifts his balance on the back foot. Cut shot is on there. The fielder won't be able to stop the ball from crossing the fence. What a lovely cut shot. Playing as per the situation. This is a sign of a terrific batsman. With that boundary, now finally scoreboard moves further to
20. So Kirtesh has been welcomed with a boundary. Even the fielder was plotted to stop that boundary, but the power that have been generated by Faldin on that cut shot makes the ball to travel quickly away from that fielder. So here's the next delivery of the fourth over. Kirtesh to deliver from stadium end. Switch it, better connection away from the fielder, this time towards the left hand side. And it travels the distance quite comfortably as well. Sixer, what a player. Faldin taking his time. A wonderful example that we have seen, a boundary and a switch it for a six. Another strike along the carpet, but straight to fielder at the covers. So no chance of any run. And with this, team total is at 26. So far 10 runs from this over. Faldin at the striker's end. All eyes on Faldin. Another good delivery, a hint of helicopter in act. Guides the ball towards the cow corner region and immediately calls for the second. Wonderful batting display by Faldin. A boundary and a sixer has come. Now playing sensible. Knows that he has got the score that he wanted. With that couple of runs, score moves to 28. So Faldin taking his time before he takes the guard at the striker's end. Maybe want everything to be perfect. Short pitch delivery, slight left side, the off stump, stretch of arms by the umpire. So wide and extra to be added to the total. With that extra, team total moves to 29. So this is quite expensive over if we compare the other three. So runs are flowing now. Fuller pitch delivery, ball has been hit in the wicket zone. Fielder running after, not to stop. The ball inside the boundary rope. And the ball will be brought from outside the boundary rope. Boundary, the run flow continues. With that boundary, team total moves to 33. And we have seen the effect of 33 in this tournament as well. Most occasion it was a fall of the wicket. Let's see what is going to happen at this juncture. 33 on the board, fourth over in progress. Oh my dear, still the score is at 33 as it goes as a dot delivery. So this concludes over number 4 after completion of 4. Score is 33 for the loss of 2 wickets. And now it's time for me to take a little break and give rest for my throat, as I would like to invite Ashok J. Naik with your sweet voice in the national language.
33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक ओर से ओपनर बैटर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे, 3 चौके 1 छक्का अब तक लगाते हुए फरदीन काजी बल्लेबाजी पर, और उनका साथ देने के लिए श्रेयस कदम मैदान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, हर्षद मातोंडकर आते हुए स्क्रीन पर खुद का पहला टीम का 5वां ओवर जारी रखते हुए गेंदबाजी करने के लिए। बहुत अच्छी शुरुआत इस बार ऑफ स्टंप पर, थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद, कट होकर थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक डॉट गेंद के साथ हर्षद मातोंडकर गेंदबाजी को शुरुआत करते हुए। इस बार फिर से थोड़ी फुलर लेन की गेंद, सफल हुए थे ज्यादा, बहुत जल्दी पिक किया था गेंदबाज हर्षद मातोंडकर ने। एक फुलर लेन की गेंद और गेंद फिर से एकदम जो कि निकलते हुए विकेट कीपर के हाथों में। जोरदार बल्ला जरूर घुमाया लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। स्कोरबोर्ड पर टोटल स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर मैच का चलता हुआ। स्लोवर वन ढीले हाथों से खेला, गली पर फील्डर गेंद को थ्रो किया, शायद बिल्कुल करीबी मामला बन सकता था मैदान पर अगर डायरेक्ट हिट लगती तो, लेकिन बहुत ही अच्छा तालमेल, लॉन से करने से तेजी के साथ निकले थे फरदीन काजी। एक सिंगल को बना दिया स्कोर के खाते में और एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 34 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। करण मोरे सस्ते में बिल्कुल 5 पर। नवदीप गांवकर जिन्होंने खाता नहीं खोला, पहला विकेट 16 पर, दूसरा विकेट 16 पर, लेकिन वहीं से लेकर छोटी सी साझेदारी मैदान पर बनती हुई इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। 5वां ओवर, पहला मैच बड़े टोटल का रहा, दूसरा मैच लगभग 99 का। और इस बार वेरिएशन बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्लोवर वन इस बार थोड़ा सा ज्यादा फ्लाइट दिया था हर्षद मातोंडकर ने, अब थोड़ा जल्दी खेल बैठे इस बार बल्लेबाज, और एक डॉट गेंद। बहुत ही अच्छा ओवर अब तक चलता हुआ हर्षद मातोंडकर का। टीम का 5वां ओवर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम। और इस बार मिस टाइम शॉट देखना होगा, अपने फॉलो थ्रू में निकले, गेंद के नीचे आते कैच को पकड़ते हुए और एक बड़ी कीमती सफलता दिलाते हुए अपने टीम को हर्षद मातोंडकर। तीसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। मैदान पर उस साझेदारी को तोड़ा हर्षद मातोंडकर ने, अपने पॉलो थ्रो में कैच को लपेटा। फरदीन काजी वापस 25 रन के एक बहुत ही शानदार इनिंग, 3 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया और मैदान पर आ चुके जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, वो खिलाड़ी मैदान पर, ऑलराउंडर खिलाड़ी रोहन सालगांवकर आ चुके मैदान पर। स्कोरबोर्ड पर टोटल 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। खेल चलता हुआ 5वें ओवर का। डायनामिक रॉयल्स और अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स, ये 2 टीम आमने सामने। फाइनल में कौन प्रवेश करेगा बस थोड़ा समय जरूर बाकी है, लेकिन उससे पहले पिछला मैच बहुत ही शानदार कमाल की बल्लेबाजी बंटी पटेल की, और इस मैच में हर्षद मातोंडकर अपने फील्डिंग को थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहे हैं। वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लगभग फील्डर को तैनात। फिर से स्लो ओवर वन खेला, इस बार गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर फील्डिंग में, लेकिन अपने आप को संभाला, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, जब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 35 रन। एक अच्छे ओवर की समाप्ति, जिस ओवर में बिल्कुल रनों पर रोक लगा दी, एक कीमती विकेट चटकाया, फरदीन काजिन को वापस किया और 5 ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ। 7 रन के साथ रन बनाते हुए मैदान पर अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम। स्कोरबोर्ड पर टोटल स्कोर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
शानदार सफर रहा साउथ गोवा प्रीमियर लीग, एक यादगार टूर्नामेंट। क्या पिछला मैच रहा, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही। शुरुआत बढ़िया की, मुन्ना शेख ने 41 रन बनाए, बंटी पटेल ने बनाए 40 रन। लेकिन उसी के साथ मैं दो नाम जरूर लूंगा जिन्होंने गेंदबाजी में आखिर में स्लॉग ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। कृतेश किनलेकर और अक्षय जोगड़े, ये दो नाम तो लेने पड़ेंगे क्योंकि आखिरी जो 12 गेंदे को खेल हुआ उस 12 गेंदों पर एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा। एक 10-15 रन कहीं ना कहीं पीछे हो गई ये टीम, तो ये दो गेंदबाजों को भी दाद देनी पड़ेगी। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन सामने से। अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी उछाल मिली, लेग कटर गेंद बाहरी किनारा लेते हुए गली पर निकले, थोड़ा सा ओवरथ्रो जरूर रहा था, बैकअप हुआ मिड ऑन पर, और जब तक गेंद को फील्ड नहीं करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 36 रन टोटल 3 विकेट के नुकसान पर, 36 लॉस ऑफ 3 विकेट। खेल चलता हुआ मैच का छठे ओवर का, आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी। लेकिन अब तक की अगर चर्चा की जाए, बिल्कुल सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है, अच्छी फील्डिंग हो रही है मैदान पर। विकेट कीपर क्लोज विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो हेलमेट की मांग हो चुकी है और हेलमेट बिल्कुल जो कि मैदान पर विकेट कीपर के लिए। बंटी पटेल सामने से गेंदबाजी के मोर्चे पर अपने बॉलिंग मार्ग पर। पहला ओवर बहुत ही अच्छा रहा था, उन्होंने भी बिल्कुल रोक लगा दी। पावर प्ले में पहले ओवर में कमाल की थी अनिकेत सनप ने, 4 रन दिए। दूसरा उनका ओवर 2 विकेट चटकाए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, थोड़े से महंगे जरूर जो कि जरूर साबित हुए कृतेश किनलेकर, लेकिन उसके बाद फिर से कमबैक मैच में। बिल्कुल थोड़ा सा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे थे, अंपायर ने रोका था बंटी पटेल को और वापस निकले एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्लॉग स्लिप का शॉट, लाजवाब टाइमिंग इस बार, एक बैठक शॉट डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। थोड़ी सी स्लॉट में गेंद मिली और मिड विकेट पर एक बहुत ही जबरदस्त शॉट, 6 रन के लिए। इस बार छोड़ा जाने दिया, बहुत ही अच्छी जो कि विकेट कीपर के पीछे फ्लाइंग स्लिप पर गेंद को रोका, वाइड बॉल का इशारा, अंपायर का, एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 43 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर, 43 लॉस ऑफ 3 विकेट। खेल छठे ओवर का, बंटी पटेल सामने से स्टेडियम के ओर से गेंदबाजी पर अपने बॉलिंग मार्ग पर, अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार कट करना चाहते थे श्रेयस कदम, लेकिन गेंद के लाइन से बल्ले से गेंद दूर थी, थोड़ी सी लेग कटर, फिर से एक बार विकेट कीपर के हाथों में गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अपसाइड पर एक कवर पॉइंट पर, एक डीप कवर पॉइंट पर है फील्डर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, एक लॉन्ग ऑफ पर, ऑन साइड पर एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वेयर लेग, एक शॉर्ट फाइन लेग। ये फील्डिंग की जमावट मैदान पर। इस बार खराब गेंद, पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद मिली, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट और एक बेहतरीन छक्का ऑन साइड पर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। और इन 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 49 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा अब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है यह स्कोर। इस ओवर में बंटी पटेल की गेंदबाजी पर 2 बड़े शॉट लगे ऑन साइड पर, जो शुरू में बिल्कुल थोड़ा सा कम लग रहा था स्कोर, अब आगे बढ़ रही है मैदान में बल्लेबाजी में अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम। 49 टोटल, 49 रन, 3 विकेट पर, 2 छक्के, 13 पर खुद के व्यक्तिगत श्रेयस कदम,
रोहन सलगावकर नॉन स्ट्राइकर इन पर 2 रनों पर बंटी पटेल राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। ये फिर से थोड़ी सी ऑप्टम पर छोड़कर पीछा किया था, कट करना चाहते थे लेकिन गेंद बहुत दूर थी बल्ले से, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। शानदार शुरुआत फरदीन काजी ने की थी जो 25 रन बनाए, लेकिन उसके बाद साथ नहीं मिला। लेकिन उसके बाद ये बल्लेबाज खास करके इनके ऊपर दारोमदार है मैच में, मैदान पर श्रेयस कदम। और इस बार गेंद खड़ी हो गई, देखना होगा स्क्वायर लेग बाउंड्री से फील्डर ने लंबी दौड़ लगाई, हाथों में गेंद को कैच को लपेटा और चौथा धक्का लगता हुआ टीम को। थोड़ी सी छोटी गेंद थी, खेला था इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर। रूपेश गांवकर बहुत ही शानदार फील्डिंग मैदान पर, तेजी के साथ आते गेंद को कैच करते और बड़ा धक्का लगा, बड़ा विकेट वापस निकला। तो थर्ड अंपायर के और कॉल आ चुका है। थैंक यू। तो थर्ड अंपायर का इशारा, फेयर डिलीवरी, तो जाना पड़ेगा बिल्कुल वापस। बिल्कुल हम यहां पर स्वागत कर रहे। आइए सर। सर एडमंड फर्नांडिस जिनका यहां पर आगमन होता हुआ, सर आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपसे रिक्वेस्ट है, आइए सर मंच पर तशरीफ रखिए। सम्मानीय अतिथि हमारे मंच पर, आप सभी का स्वागत। जो उपस्थित दर्शक है मैदान पर पूरे चारों ओर, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत। और विकेट नंबर 4 वापस, 2 छक्के और एक सिंगल के साथ श्रेयस कदम 13 पर सफलता मिलती हुई आखिरकार। थोड़े से जो महंगे साबित हो रहे थे, 2 छक्के लगे थे लेकिन उसके बाद सफलता दिलाते हुए अपने टीम को, और टोटल स्कोर वहीं पर रुका हुआ जो कि 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। खुद का दूसरा कमेंट्री बॉक्स की ओर से, टीम की ओर से 7वां ओवर जारी रखते हुए हर्षद मातोंडकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, और मैदान पर न्यू बैटर अमेय दामशेखर। रोहन सलगावकर 2 पर, अभी अभी आउट होकर वापस 13 पर श्रेयस कदम। और स्लो ओवर 1 पुलर लेन की गेंद, इस बार एक रन के लिए निकले। देखे होगा नॉन स्ट्राइकर इन पर पहला निशाना लगाना चाहते थे, लेकिन जैसे देखा अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित, और इस सिंगल के साथ 50 रन जो कि पूरे होते हुए 50 रन 4 विकेट पर। खेल जारी 7वें ओवर का। हर्षद मातोंडकर लेग बाइट के साथ 1 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। रोहन सालगावकर का साथ देते हुए अमेय दामशेखर न्यू बैटर मैदान पर, और हर्षद अपने बॉलिंग मार्ग पर। और फिर से स्लो और 1 टॉप एज लगा, शॉट फाइन लेग पर, फील्डर बिल्कुल हाथों में गेंद, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई हर्षद मातोंडकर को 5वां विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम का। खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, लेकिन बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी गेंद, एक मिस टाइम शॉट और एक आसान सा मौका बना शॉट फाइन लेग पर। सफलता मिलती हुई जो पहले ओवर में अपने पहले स्पेल में 1 विकेट चटकाया था, अब दूसरे स्पेल में जो 7वां ओवर मैच का, और आते आते जो कि दूसरी गेंद पर एक सफलता मिली। स्कोर 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब तक की अगर सफल बल्लेबाजी की तो फरदीन काजी ने बनाए 25 रन, 13 रन बनाए थे श्रेयस कदम ने। और देखना होगा
न्यू बैटर मैदान पर आते हुए अनुष केरकर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, वो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। देखना होगा स्लॉग ओवर में कहीं ना कहीं, अगर पहला मैच आप सभी ने देखा 125 का टोटल, दूसरा मुकाबला रहा था वो 99 रनों का टोटल, 100 का टारगेट था। क्या शानदार मैच रहा, आखिरी ओवर पर चला गया मुकाबला। और देखना होगा ये तीसरा मैच है, कहीं ना कहीं शायद एक 75 के 80 के आसपास पहुंचते हैं या नहीं। अगर इससे कम स्कोर में सीमित किया, लेकिन कम टोटल के मैच अक्सर बहुत ही अच्छे होते हैं, बड़े टोटल वो भी मुकाबले बहुत ही शानदार होते हैं। फिलहाल अनुष केरकर सामना करेंगे हर्षद मातोंडकर के गेंदबाजों का। दूसरी सफलता मिली हर्षद मातोंडकर को अपने बॉलिंग मार्ग पर, लेफ्ट हैंडर बैटर सामने और उनके लिए राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। फील्डिंग में परिवर्तन लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए, लगभग हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, 3 फील्डर है तैनात लगभग बाउंड्री लाइन पर। तेज आते हैं, स्लो ओवर 1 करते हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस विकेट पर। एक सिंगल बन गया आते आते, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं था। सामने से लिमिट ऑफ पर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा 51। विराट तेंदुलकर हमारे साथ बिल्कुल शानदार स्कोरिंग की जानकारी बीच में देते हैं। और राइट हैंडर बैटर के लिए ओवर द विकेट हर्षद मातोंडकर। 7वां ओवर मैच का चलता हुआ। इस बार थोड़ा सा अपेश खेला, हवा में एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ पर खेलना चाहते थे, डीप कवर पर फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, लेकिन जब तक गेंद को थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में जुड़ते हुए, और इन 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 53, 53 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। डायनामिक रॉयल्स टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला। बहुत अच्छी गेंद, नकल गेंद, आखिर में बिल्कुल जो कि उंगलियों की करामत की थी हर्षद मातोंडकर ने। लेग कटर थी एक, जो कि लगभग ब्लॉक होल में कट होकर बाहर की तरफ निकली। खड़े खड़े बिल्कुल कोई फुटवर्क नहीं था बल्लेबाज का, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्लेबाज को बेट करते हुए एक बार फिर से निकले विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही शानदार स्पेल, बाहरी किनारा लेती हुई गेंद निकली गली की तरफ, सिंगल बनेगा स्कोर के खाते में। सिर्फ एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा, और एक अच्छा ओवर, जिस ओवर में एक बड़ी सफलता हासिल की, रनों पर रोक लगा दी। 2 ओवर का उनका कोठा निश्चित रूप से समाप्त हुआ, लेकिन दाद देनी पड़ेगी। शानदार गेंदबाजी, 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 7 रन, 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 5 रन और 2 विकेट। बहुत ही बेहतरीन स्पेल इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। तो देखते देखते खेल 7 ओवर का समाप्त हुआ, और 7 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 54, 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर, आखिरी ओवर का खेल मैच का अभी भी बाकी। ये ओवर अगर एक टीम की और मैं बात करूंगा जो डायनामिक रॉयल्स की, आपको ये ओवर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अगर सामने बात करूंगा अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम के लिए, कम से कम 2 या 3 तो बड़े शॉट लगाने ही पड़ेंगे इस मैच में। एक 65-70 का टारगेट फाइटिंग टोटल बन जाएगा मैदान में, लेकिन देखना होगा आखिरी ओवर में कितने रनों पर पहुंचती है अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम। अक्षय जोगड़े अंतिम ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओवर पिच गेंद इस बार लॉफ्ट किया, गेंद को ऑन साइड पर, डीप स्क्वायर पर फील्डर, लेकिन इस बार गलती कर बैठे मिस फील्डिंग करते हुए, और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। मान्यवर कक्ष में आगमन होता हुआ सर एडमंड फर्नांडिस जिनका आगमन होता। सर आपका बिल्कुल तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत इस साउथ गोवा प्रीमियर लीग में, जो पर्व दूसरा। 3-3 ओवरसीज खिलाड़ी हर टीम में शामिल, और इसी बीच 4 बहुमूल्य रन, थोड़ी सी मिस फील्डिंग और वहीं पर चौका, और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 58 लॉस ऑफ 5 विकेट। तेज गेंद इस बार ऑफ स्ट्राइक पर सफल हुए थे, खेलना चाहते थे एक बड़ा शॉट,
लेकिन उतना ज्यादा मौका नहीं दिया, एक सिंगल बन गया फिर से स्कोर के खाते में। अपने फॉलो थ्रो में आते गेंद को फील्ड करते, पहला सोचा था थोड़ा सा निशाना लगाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर बैकअप बहुत दूर है, दूसरा रन बनेगा अगर गेंद नहीं लगे स्टंपों पे तो, और वही सोचकर जो कि एक सिंगल 59 59 टोटल 5 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर सामने अनुष केरकर अक्षय जोगड़े, एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर, खास करके फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, और लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए राउंड विकेट आते हुए अपने बॉलिंग बार पर दूर वाले छोर से फातोडा स्टेडियम की ओर से। धीमी फेंकी गेंद प्लेड ऑन हुई, इस बार बल्ले का भीतरी किनारा लगा, बोल्ड हुए, छठे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। और मान्यवर कक्ष में आगमन होता हुआ सर शाहिद शेख जिनका आगमन होता हुआ। शाहिद सर आपका बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से इस साउथ गोवा प्रीमियर लीग में, आपका बहुत बहुत स्वागत। सीजन दूसरा 2023 और पूरे भारत भर में बिल्कुल जो कि एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल होते हुए एक शानदार क्रिकेट, सुरभि लाइट्स एलईडी स्क्रीन पर भी बिल्कुल इस क्रिकेट का मजा, TennisCricket.in से भी बहुत से सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का, आज आखिरी दिन रात का सफर, आने वाला अंतिम मेगा फाइनल का मुकाबला अभी भी बाकी और देखना होगा। न्यू बैटर और एक आ चुके हैं मैदान पर। आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल TennisCricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल TennisCricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल TennisCricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Did well with 25, and then it was just mobile number 05001000, and a pretty good knock in the end. 1-6 from Nihal Bind, but not a big total being posted here. But you never know, under lights anything can happen. 69 is the target. So if Al Zargam Royal Challengers can take early wickets, this match can be interesting. We have seen low totals are always difficult to chase. Important man here for Al Zargam is going to be two players, special two players, Munna Sheikh and Bunty Patel. When you see a match like that, which was won by Dynamic Royals, what happens is the team spirit in that camp suddenly lights up, and everyone wakes up. Yes, they feel that this is their tournament to win here, because we have won a match which was almost close to impossible to win that, and they have made a strong comeback. And once that happens, the momentum certainly was with them, and they have done a very good job in bowling department. Now up to the batsmen to shine and chase this down, which is not a great total, but certainly if the bowlers bowl well in the right areas and the fielders reciprocate the same feeling, you can certainly defend this one. Thank you, Ashok Naik sir. It was always great to share the commentary box with you in many of the tournaments. We have learned a lot from your commentary. Let's see what is the field set here for Munna and Rupesh. Rupesh, the highest bidded player for 21,000 in the auction. But here is an opportunity. So far, it's not done that well compared to the standards that Rupesh has in himself. And as a Goan commentator, I feel that some of the Goan players should shine brightly at this stage. The big stage provided by GCC to the Goan players to showcase their talent. Rupesh has also played outside Goa in tournaments in Karnataka, Maharashtra, and done a very good.
So here is Rupesh and Munna. An opening pair right throughout from the first game till this point of time. But the opening pair has not given them a great start. But Munna Sheikh is the man who has been the cadastral man and the catalyst here, who does the role very well and waits for his time. And that's how when you see a player like Munna Sheikh, everyone needs to learn from him. And especially when you are in the dressing room, just talk to him. And there are lots of prizes. You can see a board at long off region. There is a C Easy, who is one of the co-sponsors, Mushtaq Bab Ahmed. If you hit that logo, only the logo, you will get a cash prize of 5,000 rupees. Big prizes announced. Already we have seen Ankush Singh taking 7,000. 2,000 rupees cash prize was won by him by scoring a 50, and then next 5,000 it was a cash prize. If Fardin Qazi was being taken out in the first over, he takes him out in the very first ball and takes a cash prize of 5,000 from the owner Ahmed Khan. So lots of cash prizes, and here is the first ball of this run chase of 69 runs. Very nicely played, wonderful shot played off the front foot, the drive in the covers. So single to start the proceeding. This is the way that he plays. He plays this game in a calm and composed manner, not taking any risk. Treasures his wicket, gives it a tag, gives it a value. That's what every batsman should do. KKG owner Ahmed Khan is having a walk, and he'll be seeing this match closely. This is in the air and up and over the mid-off fielder for 4 runs. This was a full toss ball bowled by Satish Yadav, and Rupesh takes advantage of this power play overs, hitting it above the head of that fielder. Certainly with the total that is on the board, they cannot afford to bowl loose balls, especially short balls, full toss ball. And power play overs are enough advantage, as most of the fielders inside. These 2 overs certainly will set the pace. If these 2 overs go right here for the batting side, they will take this momentum up and forward. Whereas the bowling side, if they can take 2 wickets, this game will be on. Once again, this time played it in the point region, straight to the fielder Ramey Damshekar, patrolling that region. Well, for any of the cricket lover, just like marriage, when the bride is beautiful, here also on this ground, when it's totally lighted, all the towers, this ground is looking beautiful like a bride. Oh, lovely shot, full toss, ample of room, ample of space, just glided down in the gap between the point and short covers fielder. No risk whatsoever in that shot. 2 boundaries for Rupesh in this over so far. Still not get the particular line that he would like. They should concentrate on the right channels. If they are bowling the full toss with so much open spaces, it's going to be too easy for the batsmen. Oh, wonderfully bowled. Good comeback by the bowler, right in the block hole. So need to fight. Alzargam Royal Challengers need to fight. It's just that low total on the board should not play in the minds. Just take their chances, even the half chances. They have to take the wickets. That's the key here. This is played nicely. He finds the gap very well and times the ball superbly. There were 2 men. One was in the mid-on region and one was at deep square leg. No chance for both these players. 3 boundaries taking the score to 13 runs after completion of first over.
The required run rate at the start of the innings was around 9.5. So they have got much more than that in the first over, 13 runs. A very good start here for Dynamic Royals. And if you see the batting of Rupesh in this tournament, he was playing some cross-batted shots, and that's where he found the fielders on the edge of the boundary ropes and gave away his wicket. This time he's playing calm and composed nature, and he knows even if I play a down the ground shot without taking any risk, I am going to get value for my shots. So he's learning from his mistake. In comes Rohan Salgaonkar, the best bowler for this team so far in this tournament. Wide signal here by umpire, way to outside off stump. Well, the keeper and bowler feels that it was inside, but umpire is rightly judged it. Where are the fielders? One at deep square leg region, one is in covers. Two men on the edge of the boundary ropes. Once again, good calling there from the non-striker's end. Rupesh was to run at the non-striker's end, or the danger end, you can say the striker's end. They don't want to risk a wicket at this stage. This time also a drive. There is a man in the deep which will fetch him only a single. The singles can do the job in between the boundaries, or a six for loose balls will do the job here for Dynamic Royals. Munna Sheikh is the key, and I feel in the commentary box they have to make him do something different away from his game. And if they are able to do that and they are successful, they can stay in the hunt, they can stay in the race of this qualifier too. This time very nicely bowled, just outside off stump. This is the line that he has concentrated so far. Very good bowler and performed excellently for them. The only bowler to shine brightly, and even in yesterday's bowl out, he was the only one to hit the wickets for Al Sargam Royal Challengers. So I'm trying that big shot, chance of a run out, direct hit was required, and there is a backing. So it's going to be just a single. They need to shy, yes, they need to shy, they need to take the chances. Wickets are the only keys here to open the lock. There are 10 keys to be opening this one lock of entering into the finals. Still now they have not opened a single one. Score moves on to 16 with that single. Going for the switch hit, finds the fielder. Didn't get the elevation. He just wanted to lift that ball over that fielder's the area of fielders backward of point, almost 3 and 1 in short extra cover. Lovely over so far from Rohan, bowling in the right channel. He has lifted that well, no time, Rupesh. Chance of a run out, but Rupesh makes it well in the end. The calling of Munna Sheikh was loud and clear from the striker's end. He knew how well he has timed it. He is straight to the man at mid-on region and says no to Rupesh. And the dot ball will finish over number 1. This over has gone totally in favor of the bowling side, Al Sargam Royal Challengers. And once again, this bowler bowls an economical over, just that he could not pick up the wicket. After completion of 2, the score is 16 without loss.
53 runs required in 36 balls. So Ajay Kewat, captain of the side, has come on to bowl from the far end to Rupesh. Appeal from Ajay, but no appeal from behind the wickets, and especially from keeper. Keeper is the first one to know whether there is an edge or not. It's more sort of excitement. Nothing more. Starts off very well here. Ajay Kewat bowled in the good length area, and the ball slightly moving away. But this bowling attack of Al Sargam Royal Challengers does not have that much of variations, or does not have that much of changes as far as spin or the left armers are concerned. Goes for the big one once again. Very nicely collected by keeper. 2 dot balls in a row. Rupesh once again trying to hike that over mid-wicket region. No connection. It's every dot ball will lift the spirits of Al Zargam supporters and also the players. They will feel that yes, we need to bowl a few more dot balls and bind up this batsman. This time flick on the leg side. Munna Sheikh says just a single is enough. Don't take the risk. Single is enough. And he once again tells Rupesh go back in the crease. So now what is the strategy? Two players are having a talk to the bowler. So far he have done a very good job. And don't bowl in the strong zone, strong areas. Munna Sheikh likes to hit that in the square leg, backward of square leg region. Anything slightly short, he is ready to pouch onto that. So where is the line and length going to be from the bowlers? 4 men behind the wickets, starting from the backward of point region towards the gully, and short third man and short fine. Oh, he tries to favor that region. He tried hard, but the bowling is also pretty good. Bowling outside, not bowling in his zone. If it was slightly straighter, he could have got that swing and the timing to hit that in the square leg region. We have seen many sixes hit by Munna in that square region. This time he does not connect. Cricket is all about application of mind and converting that mind into a fruitful result, bowling in the accurate zones. This time he swings it well, finds a gap, looks like no. Good piece of fielding on the boundary rope, just restricts the batsman to a single. Applauded by everyone on the ground. So this crowd here at Fathoda Stadium very well knows that it's not only about sixes and the wickets that has been taken by the bowlers, but good fielding is also appreciated. The cricket lovers likes to see good game of cricket, intense game. The fervor of intensity and passion is what drives cricketers to come on this ground, thronging, watching these cricketers, star cricketers from outstation and also from Goa playing at this venue. This is in the air. This should be 6 runs. This is high, and this has gone many rows back. First big blow in this run chase, right in the slot, and directly hit in that cow corner region, and a mammoth strike from the bat of Rupesh.
needs to come here at this point of time without a wicket being lost. There is no pressure whatsoever. Lukesh has hit 3 boundaries and 1 6, whereas Munna Sheikh playing on just 3 in 6 balls. The partnership at the moment is 24 in 18 balls. That is 3 overs completed. The crowd also looking very closely. They have kept their eye on this match. They just want one moment. That's lovely bowling. Lovely bowling. Chance over on a direct hit required, and it was attempted well there by the fielder, but good backing. Just a single. Munna Sheikh so far taking no risk whatsoever. Just like the same innings that he plays every time. He knows that the asking run rate is not much, and he can cover up with just 1 over. He knows there are weaknesses, there are loose holes. He's the thread here. He's the thread where all the other players are binded into. This thread needs to be broken. This thread of Dynamic Royals needs to be broken here by Al Zargam Royal Challengers, the Munna Sheikh. Otherwise, they are going to do it playing simply just like this. A shot played down the ground for a single. No risk, nothing whatsoever. Taking the score to 26. So Rohan Salgaonkar has been given the job once again to continue and bowl in the right channels, pile up the pressure, only piling up the pressure, and just hoping, they are just hoping here that some miracles happen. Miracle in the form of a wicket of Munna Sheikh, maybe playing a risky shot and giving his wicket. So far not even a single boundary and a 6 on his name in the 4th over. Rohan Salgaonkar continues. Is it wide? Yes, it is. Definitely a wide ball. So 1 to the extra, taking the score to 27. Viraj Tendulkar is the scorer, hailing from Sandwadi. Has done a fabulous job. Clean handwriting, clean job right from the first day. Gaurav Sawant from Tennis Cricket is also assisting every time with the updates and the achievements of different players. On the cross-batted shot, but finds the fielder. Straight in the hands, 1 bounce. Just a single once again. Checking the ball here. Maybe he feels that he has timed it well, but still not going the way that he would have liked to. Both the openers are on the crease. That's a good sign. That's a positive sign here for Dynamic Royals. Once again trying that cross-batted hoik, and once again a dot ball here from Rohan Salgaonkar. Once again the timing part is missing. Once again another single. You can see Rupesh is itching to go for that big one, but he's just itching on the bat as well. It's not middling the ball. The sweet spot is missing right now. Another single taking the score to 29, 4th over. Last ball to be bowled. Very good from Rohan Salgaonkar, and he needs to finish well. Finish well with maybe a wicket. Wicket will be icing on the cake. This time in the air, will it be taken? Fielder takes the catch. Rohan, take a bow. Absolutely stunning bowling. I need to appreciate this man. He was magnificent right from the first match, and he's magnificent today as well. You have kept this match alive, Rohan Salgaonkar, and kept the hopes of all the supporters of Al Zargam Royal Challengers, and also your 11 players who are playing on the crease right now.
is it going to be the twist around? Munna Sheikh, the man who has scored wonderful knocks and weighted game. This time he departs on the last ball of the fourth over. The game is still alive and the match will continue, and we'll see the run chase in the fifth over as well. Well, we always thought that sky is the limit, but as human beings, we have explored the universe as well. And with man's imagination, with your dedication and commitment, this exploration will continue. And also, I think something needs to be explored here, and some innovation, some magical thinking to be done by the bowlers. Now you have got a wicket of Munna Sheikh. Now you feel that if you get a wicket of Bunty Patel, you can come back. Rupesh is someone who you cannot bind for quite long time. Once one or two balls is certainly the one who is going to go after the bowlers, and you have to feel, you have to think positive. Yes, we are still in the race, still in the game. 29 runs on the board with 4 overs bowled, and in comes the fifth over. Satish Yadav has been given the job here to bowl from the far end. Keep piling the pressure, keep pushing them hard. Don't give any easy runs. This time the golden strike, absolutely a golden strike. What a time Rupesh is coming to the party here. Rupesh has waited and waited and waited, and finally joining the party. Learned something from Munna Sheikh, and he's doing it on the ground. At high roll, it is Ajay Kewat, the captain of the side, has come on to bowl and has been welcomed with a magnificent swing of the bat on the Kaukana region for a 6, taking the score to 35. This time, good comeback, very good comeback. Well, as a bowler, there will be some human errors, there will be some errors, and batsmen will take the advantage, but the guts of yours and the zest within has to come in front, and he says, yes, I have been hit for a 6. Now is the time I have to show my courage and make a comeback. This time driven nicely, fielded very well, and throws it to the keeper. Very good throw, straight in the hands. So just a single. Rupesh was putting the pressure on the fielder, but the fielding has been good today, at least in this match of Al Sargam Royal Challengers. Enjoying this match from the commentary box, and certainly I would like to thank GCC Fatoda for giving me also the opportunity to showcase my talent in the commentary box, and enjoying the time for last 3 days. And it's a beautiful Sunday and a beautiful match. So doing something different, which we are not used to here, Bunty Patel. It was all together a different innings when the cards were against them. All the cards were against Dynamic Royals to win that match, and they have toppled the cards, they have toppled the norms, and won that match. Now he knows he doesn't have to do anything silly here. Just takes a single, gives a strike to Rupesh. This time he strikes. Rupesh is striking it beautifully. The highest bidded player in the auctions is coming to the rescue of Dynamic Royals.
What a beautiful strike. Clean swing of the bat. He's always been a clean striker. And the swing of the bat takes the ball over the boundary row for another 6 for him. Look at that shot. I thought it is going straight into the hands of that covers region fielder. He was left with no chance. This is sheer timing, sheer grace, sheer elegance from the classy batsman of Goa, Rupesh Gaonkar. And I will leave the commentary box at this stage when Dynamic Royals are doing a fantastic job timing the ball. Rupesh is single-handedly taking them home closer towards the victory laps. Let's see whether that 100-meter hurdle will be crossed here by Rupesh with a partnership of Bunty Patel, or he needs services of other batsmen to cross that line. And the barricade has been laid here for both the teams after completion of 5. The score is 47. आता है इस दुनिया में, और यहाँ पर कोई चमत्कार करना पड़ेगा गेंदबाजी करने वाली टीम रॉयल्स टीम को। देखना है सामने वाली टीम के, तो रुपेश ने छक्के छुड़ा दिए हैं। क्या 2 छक्के 1 चौका 38 रन बनाकर खेल रहा है। एक खिलाड़ी सेना बराबर मैदान के भीतर, और साथ साथ उनका साथ निभा रहा है पिछले मैच का हीरो बंटी पटेल, मैन फ्रॉम गुजरात। यहां से अगर विकेट चटकाए नहीं तो काफी देर हो जाएगी मैदान में आते आते। इस वक्त ये विकेट की मांग करती है उनकी टीम, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए सेट बल्लेबाज रुपेश अभी भी मैदान में है, उनको आखिर तक लड़ना पड़ेगा। बात अगर रन और गेंदों की जाए तो 18 गेंदें और 22 रनों की है आवश्यकता। मैच बनेगा या नहीं ये आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि समय से परे बलवान इस दुनिया में कोई है नहीं, और समय के पिटारे में क्या छिपा है इंसान को पता नहीं होता। अगर ये इंसान को पता होता ना तो इंसान प्रयास करना छोड़ देता और घर में बैठ के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा करता। देखना है सपना सच होने के लिए मैदान के भीतर लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, गिरना पड़ता है, उठना पड़ता है, फिर दौड़ना पड़ता है। देना है यहां पर किसके हाथ में बल्ला है, और सामने गेंदबाजी के लिए अनुष केरकर। इस खिलाड़ी के बारे में क्या कहने। और इस बार खोद कर निकाली हुई गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड करते दूसरे के लिए पलटना चाह रहे थे, लेकिन मना कर दिया। यहां पर रुपेश ने बंटी पटेल को 1 रन खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचता हुआ 48 रन पर। अनुष केरकर की बात की जाए, वो सांगेम प्रीमियर लीग का मुकाबला कोई नहीं भूल पाएगा। बॉल आउट का वो मुकाबला था और निर्णायक गेंद थी अनुष केरकर के हाथ में, और इस खिलाड़ी ने बॉल आउट में सीधा विकेटों के ऊपर 2 बार दे मारा और अपनी टीम को फाइनल में लेकर गए थे। और वही अनुष केरकर मैदान पर क्या अंकुश लगा पाएंगे गेंदों के ऊपर, क्या अंकुश लगा पाएंगे रुपेश की बल्लेबाजी के ऊपर, ये आने वाला समय तय करेगा। समय की बात है, कल जो हुआ उसे भूल जाइए। आने वाले समय में क्या करेगा, आपके हाथों में क्या लिखा है, हाथ की लकीरें क्या कहते हैं, इसके ऊपर निर्भर होना चाहिए।
इसलिए कहा जाता है नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। फिर एक बार अनुष, ओ ये बेहतरीन गेंद, टिप्पा गिरने के बाद तो जिसे टेनिस बॉल बाउंस कहा जाता है, गेंद निकलते विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। इसी की बात की जाती है कसौट भरी गेंदबाजी, जो गेंदबाज करता है ना उसकी सराहना की जाती है मैदान में और मैदान के बाहर भी। देखना है अनुष केरकर किस तरह की गेंदबाजी करते बची हुई गेंदों पर। ओ फिर एक बार ये ऑफ स्टंप यॉर्कर, सीधी निकली गेंद, बल्ला आने से पहले गोली की रफ्तार से विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। दो गेंदें डॉट निकली, पहली गेंद के ऊपर निकला था सिंगल, टोटल है 48। अभी भी अगर रनों की बात की जाए तो ढेर सारे रन चाहिए, मैच बन सकता है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। मैच बनाना, काम बनाना, बिगड़ना ये इंसान के हाथ में है। इंसान के लकीर के ऊपर सिर्फ नसीब की छाया हो जाती है। और इस बार खेल दिया हवा में जरूर, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील्ड करते सिर्फ मिलेगा सिंगल। अब तक की इस ओवर की बात की जाए, एक कंजूसी गेंदबाजी, एक नपीतुली गेंदबाजी, टोटल इस सिंगल के साथ 49 पर पहुंचा हुआ। थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया है, अभी भी 20 रनों की और आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। ये छठा ओवर है, प्रगति पर 14 गेंदों का खेल बाकी, 20 रनों की आवश्यकता। पिछला मैच आपने देखा था कितने रन चाहिए थे, आखिर की 3 ओवर में कितने रन बने, 3 गेंदें बाकी बची। लेकिन ये लो स्कोरिंग के मुकाबले हमेशा हमने टाइड होते हुए देखे हैं, रोमांचक होते हुए देखे हैं। इसलिए तो 5 साल से बच्चे से लेकर 60 साल तक बूढ़े तक इस क्रिकेट के ऊपर फिदा होते हुए दर्शक हमने देखे हैं। इस बार थोड़े से भटके, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड रेखा से बाहर, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ, सिंगल के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए डायनामिक रॉयल्स। अनुष केरकर अब तक टिक टाक गेंदबाजी, थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं। ये वाइड जो थी उसके ऊपर 50 का आंकड़ा पार कर लिया है, टारगेट है 69 रनों का। वैसा तो आसान लगता है मैदान पर। ओ ये खुद कर निकालनी चाहिए, मिनी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, बल्ले को लगे, जिस विकेट का तलाश थी वो विकेट आखिरकार अनुष केरकर निकालते हुए, इसी को कहा जाता है चंदन। अनुष केरकर ने एक 22 विकेट निकाले, बंटी पटेल को चलता कर दिया, 2 रन बनाकर वापस खेमे की ओर मायूस चेहरा लेकर निकलते हुए पिछले मैच के हीरो इस मैच में मात्र खासा कमाल दिखा नहीं पाए। बहुत दूर से ही सलाम है। मैदान पर जब तक आपका बल्ला चलता है, लास्ट बॉल टू गो। तो गेंद की मांग की जा रही है, मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो जो आपकी फरमाइश है वो सभी फरमाइश आज की रात में पूरी कर दी जाएगी। कल किसी फरमाइश को सुना भी नहीं जाएगा, क्योंकि आज का रात, आज की शाम आप सभी के नाम। क्रिकेट का माहौल इस मैदान के ऊपर इस तरह से छाया हुआ, जहां जहां नजर फेरी जाए वहां वहां सिर्फ दर्शक ही दर्शक है। इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना बड़ा ग्राउंड है, इतने बड़े ग्राउंड के ऊपर इतना बड़ा क्राउड है।
अभी भी 13 गेंदों का खेल बाकी, 19 रनों की आवश्यकता। मैच बीच मजदार में फंसा है। 50-50 का जो कि मौका है दोनों टीमों के लिए। किसकी झोली भरेगी, किसकी झोली खाली हो जाएगी और किसके लिए 365 दिनों का इंतजार होगा, वो दुखद इंतजार होगा। ये कांटा 365 दिन चुभता रहेगा। कहां हमने गलती करी है, कहां हमें मैच हमारे मुट्ठी में था, वो फिसल गया रेत की तरफ। ये देखने वाली बात तो है, ये 13 गेंदें क्या रंग लाती है। अनुज केरकर ने काम तो कर दिया है और कप्तान आए खुद सैयद बद्दी मैदान के अंदर। इस तरह से मैच बीच में फंसा हुआ है कि बड़े शॉट से रन बनाए जाए, सिंगल डबल के ऊपर अहमियत दिए जाए, विकेट बचाकर रन बनाए जाए। इस सिचुएशन का ये मुकाबला, 13 गेंदे 19 रन, क्या होगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में भाकित करना हमेशा गलत माना जाता है। और इस बार उठाकर खेले, गेंद देखिए गोली के रफ्तार से हवा से बाता करते हुए निकलती सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। और 12 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। आवश्यकता थी और वो बड़ा शॉट निकला, खड़े खड़े के लिए सैयद बद्दी, गेंद हवा से बातें करती हुई सीधा कमेंट्री बॉक्स के नजदीक के सीमा रेखा बाहर, 6 रन के लिए। और वही सा मैच अब मात्र पूरी तरह से हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। डायनामिक रॉयल्स की बल्लेबाजी भारी भरकम है, 12 गेंदे 13 रन और गेंदबाजी के लिए सतीश यादव को याद भरी गेंदबाजी करनी है। सामने बल्लेबाज रूपेश, ओ इस बार खेल दिया, बल्ले के निचले हिस्से को लगी गेंद, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जब तक फील्ड करते 1 रन खाते में जुड़ता हुआ। बहुत ही बढ़िया, आसान तो जरूर लगता है मुकाबला मैदान के अंदर खेलना लगातार बार बार, और इस तेज गर्मी के बाद इस शाम के वक्त थोड़े से ठंडे वातावरण में बाहर बैठकर आसान है कहना, लेकिन जब अंदर जाओगे ना तब छूटेगा पसीना, कहां से छूटेगा पता नहीं चलेगा। 11 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और 12 रनों की है आवश्यकता। और इस बार आड़े बल्ले के साथ गैप में गेंद, जी नहीं, खिलाड़ी वहां पर डीप में तैनात, गेंद को फील्ड करते और एक सिंगल। 10 गेंदों का खेल बाकी है, 11 रनों की आवश्यकता। वो एक छक्के ने काम कर दिया, वरना दबाव में आ जाता। लेकिन कप्तान इसे कहा जाता है जो सीना तान मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे, और वही कर दिया सैयद बद्दी ने। और इस बार खेल दिया फिर एक बार रूपेश ने मिडान की क्षेत्र, मिडान लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक लॉन्ग ऑफ पर फील्डर फील्ड करते 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 59 9 गेंदे और 10 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदे 10 रन, मैच में क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। एक आध विकेट मैच में वापसी कर सकती विपक्ष टीम, एक बड़ा शॉट मैच पूरी तरह से
आसान बनाने वाला रहेगा। सामने है कप्तान सैयद बद्दी, जिनके बल्ले से एक छक्का आते आते देखा था पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर। वही बल्लेबाज मैदान के भीतर इस वक्त अपनी टीम की नैया को पार लगाने की कोशिश करता हुआ। ओ इस बार स्विंग एंड मिस, जगह से खेलने की कोशिश, टिप्पा गिरने के बाद कांटा बदला, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। अब गेंद बची है 8 और रन चाहिए 10। 8 गेंदे 10 रन, एक आध और डॉट गेंद निकाली जाए, यही सोच होगी फील्डिंग करने वाली टीम को। तो दूसरी तरफ से एक बड़ा शॉट के साथ आसान आखिरी ओवर में बनाया जाए इस मुकाबले को, यह सोच होगी कप्तान सैयद बद्दी की। क्या होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। ओ इस बार देखना है अंपायर का इशारा वाइड आता हुआ और 22 का एक सिंगल, यानी कि कुल मिलेंगे 2 रन। 2 रन के साथ टोटल पहुंचा 61 पर। ये मैच में टर्निंग पॉइंट, हमेशा करवट बदलता हुआ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। दूध से नहाए हुए स्टेडियम के ऊपर रोशनी देखिए किस तरह से नजर आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल जो आईपीएल खेला जाता है ना, वही सितारे इस जमीन के ऊपर उतरे हो। एक तरफ राजस्थान रॉयल्स की जर्सी भाती हुई तो दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जर्सी नजर आती हुई। शायद कुछ बातचीत कर रहे हैं अंपायरों के साथ, शायद देखना है क्या अंपायर का फैसला हो जाता है। शायद खिलाड़ी थोड़े से परेशानी में आ रहे हैं, चोटिल हो चुके हैं, जिनके लिए सब्स्टिट्यूट फील्डर अंदर आते हुए। अब बची है 8 गेंदे 8 रन। आनंद बद्री ये भी आज यहां पर दिखाई दे, बहुत 3 दिन से, लेकिन मुझे बहुत सालों के बाद दिखाई दिए। ओ इस बार खड़ी हो गई है, क्या इसमें दूरी है? दूरी है जी नहीं, सीधे हाथ में विकेट का पतन, रूपेश आउट। डीज चालीस रन बनाकर एक अच्छी मुकाम तक अपने टीम को लाकर वापस चले गए रूपेश। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, आला बल्लेबाजी मैदान के बीच में देखने को मिली। न्यू बैटर हर्षद मातोंडकर मैदान के अंदर दाखिल होते हैं। अब बचे हैं 7 गेंदे और जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता। क्या ये मैच में और एक आने वाला ट्विस्ट है? क्या ये सिर्फ झांकी थी? पिक्चर अभी बाकी है, रोमांच अभी बाकी है। क्रिकेट है मेरे दोस्तों, कोई नहीं कह सकता, और भाकित करने वाला हमेशा क्रिकेट में गलत हुआ है, गलत साबित हुआ है। ये हमने कई बार देखा है, बार बार देखा है। ओ इस बार खेलना चाहते थे, अल्टी पल्टी निकले, रनआउट का खतरा। ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, लेकिन खुशकिस्मत रहे, वापस आए पॉपिंग क्रीज में। ओवर समाप्त हुआ यहां पर 7वां। अब 6 गेंदों का खेल बाकी है और 8 रनों की और है आवश्यकता। हमारे चैनल TennisCricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल TennisCricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल TennisCricket.in को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल TennisCricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल TennisCricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल TennisCricket.in को समय और इंतजार कर रही है उनके लिए टीम जो कि क्वालिफायर 1 का मुकाबला जीतकर काफी देर से इन 4 टीमों की 3 टीमों के बीच में लड़ाई देख रही थी। अब यहां से कौन आएगी शायद देखने वाली बात होगी। मैच किसी ने सोचा नहीं था, ये 68 रनों का टारगेट 69 रनों का टारगेट था। इस तरह से मुकाबला आखिरी ओवर तक चला जाएगा। लोग शायद समझ रहे थे शायद ये मुकाबला 5वें 6ठे ओवर में समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूं, जो इंसान सोचता है ना वो कभी होता नहीं है, क्योंकि समय से परे बलवान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और 8 रनों की है आवश्यकता। मुकाबला ऐसा हो कि हारने वाले से ज्यादा जीतने वाले की नहीं, जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले की चर्चा हो, इस तरह से मुकाबला घटना चाहिए। और यही देखने के लिए दर्शक आते हैं मैदान पर, तालियां बजाते हैं विकेट गिरने के बाद, तालियां बजाते हैं छक्के लगने के बाद, तालियां बजाते हैं चौके लगने के बाद, और तालियां बजाते हैं 100% एफर्ट देने वाले खिलाड़ी के साथ। 6 गेंदे 8 रन और आखिरी ओवर डालने के लिए श्रेयस कदम। हेलो और इस बार लेग स्टंप के ऊपर देखिए, इसको खेल दिया फाइन लेग की दिशा में, पीछा किया जा रहा है, क्या गेंद निकल जाएगी? ले जी हाँ, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। शायद ऐसा लग रहा था गेंद रुक जाएगी, सिंगल आएगा। अब 5 गेंदों का खेल बाकी है और 4 रनों की है आवश्यकता। इसे कहते हैं पहले से ही मंदी और उसमें आटा गिला हो जाना। इसे कहते हैं आमदनी 58 और खर्चा रुपया। 5 गेंदे और 4 रनों की आवश्यकता। ओ ये है कप्तान, ये कप्तान चला सीना तान, क्या लाजवाब फिनिश कर दिया है। इसे कहते हैं कप्तान है, इसे कहते हैं कप्तान जो जीत दिला के मैदान में बाहर आ जाता है सीना तान। बहुत ही बढ़िया सैयद बद्दी, लेकिन बहुत ही शानदार मुकाबला हुआ। फाइनल में प्रवेश करने के लिए आपको बधाई, ढेर सारी बधाई। कुछ देर के बाद ही पता चलेगा इस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होगा। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करी अपने टीम के लिए। एक तरफ ऐसा लग रहा था कि लड़खड़ा रही है पारी, लेकिन एक तरफ से डटे मैदान के बीच में एक खिलाड़ी सेना बराबर, 1 मैन आर्मी। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच, 1 एंड ओनली 40 रन्स विद मैच, रुपेश गावकर, मैन ऑफ द मैच, सेकंड क्वालिफाइड मैच। प्लीज वेलकम रुपेश गावकर। धन्यवाद।
मातशे विकेटी कडेन वचनाकात रिक्वेस्ट सगळ्यांक ग्राउंडार ओनली प्लेयर्स एंड अंपायर्स एंड ऑफिशियल्स आर अलाउड.
जिखून फायनलीक वेल्ले आसा. सागर गोसावी if at all you are here मातसो लागीं यो हांगा. रुपेश एक बऱ्यांतली बरी इनिंग्स जशें तुका म्हाका दिसता हायेस्ट बीड केल्लो 21,000 खातीर तुकाय खंय प्रेशर आसतलो कित्याक जेन्ना हायेस्ट बीड कोणाकय करता तेन्ना आपल्याचेर मातसो प्रेशर आसता की आपणें बरें परफॉर्म करपा जाय आनी तुवें रायट टायमार परफॉर्म केलें आनी तुजें कॉन्फिडन्सूय ह्या इनिंग्साचेर फायनली खातीर वाडलां आसतलें. हय थँक्यू. चड देव बरें करून हांव लल्ला म्हणटा कित्याक तेणी म्हाका सांगलें की सारको रावन खेळ. हांव सदांच म्हणटालो कित्याक तुजो टॅलंट आसा पूण फर्स्ट ज्यो मॅचीस चलताल्यो तेन्ना तूं रिस्क घेवन शॉट खेळटालो आनी बाउंड्रीचेर आवट जातालो. ओदोळ पळयतालो की तूं सारको डेडिकेशन आनी कमिटमेंट जो बॉल आसा त्याच मारता ना जाल्यार ग्रावंड शॉट्स खेळटालो. कितें चिंतून आयिल्लो खेळटा आसतना? पयलींच लाला सांगपालो रावन खेळ, तूं पिचीर उरल्यार स्कोर ऑटोमॅटीक येतलो म्हणून सांगतालो. तूं हरशीं म्हाका भायर मेळटा तेन्ना खूब उलयता मरे माचेर मायकाचेर मातसो कमी कित्याक? सगळें नॅचरल. ओके रुपेश म्हजो एक बरो फ्रेंड आनी बरो खेळिल्लो आसा आनी आपल्या टिमीक फायनलीक व्हेला. रुपेश म्हणटा फायनलीकय आपूण एक असोच सादेसो खेळ खेळटलो आनी अहमदाबाद खानाक हात दिवपा वता फायनली खेळनाका म्हणून.
खंयची एजन्सी म्हळ्यार जे स्पॉन्सर्स आसा त्यांची नांवां आमकां जाय. स्पॉन्सर्स को स्पॉन्सर्स दोन मेन को स्पॉन्सर आसा ताजे नांवां जाय. नांवां सांग आनी प्रायज व्हर. आनी कोणी आसा जाल्यार येवपा जाता नांव सांगपाक. बेगीन सामकें इजी आसा. सकाळच्यान 3 दीस जाले सांगता. म्हाका खबर आसा इजी आसा. तुमकां खबर आसा जाल्यार यो आनी सांग. नांव सांग बेगीन. दोन को स्पॉन्सर दोगांची नांव जाय. आसा कोण ह्या सायडीच्यान? ह्या सायडीच्यान कोण आसा? यो बेगीन यो. ओनर्साक सगळे वळखता पूण तांची जी एजन्सी आसा तांची जी कंपनी आसा ताजें नांव सांग बिकॉज दे आर द को स्पॉन्सर्स ऑफ दीस टुर्नामेंट. यो बाब यो. तुजें पयलीं नांव सांग. अभिजीत. खंयचो? मडगांवचो. मडगांवचो. ओके. दोन्ही को स्पॉन्सराचें नांव सांग. सीजी आणि शगुन. एब्सोल्युटली रायट. सीजी आणि शगुन हॉटेल जाणी हे प्रायज स्पॉन्सर केल्ले आसा आनी तुका परबी दिता अभिजीत. हे तुका माउंटन ड्यू. माउंटनाचेर चडनाका दव खूब पडटा. डायनामिक रॉयल्स मातशे बेगीन येयात. प्लीज कम फास्ट. डायनामिक रॉयल्स टीम प्लीज कम फास्ट. सय्यद बदी please come fast. Our guests are waiting. All the teams, all the 11 players or extra players, please come fast. And KKG, Sanket and Ankur, Bharat, please do the lineup. Captain, please take the lead. Macha lineup karat, begin fast. So KKG Knight Riders are going on the field. परत एकदा डायनामिक रॉयल्स तुमका कॉल वता. चड डिले करनाकात. बदी बाय मातशें बेगीन कर प्लीज. Yes, all the players of Dynamic, your captain is here, leading from the front. Yes, Dynamic Royals, match begin here. Please come fast. Dynamic Royals players, please come fast. Dynamic Royals, fast players.
मातशे बेगीन येयात. Royals, your captain is here, and half the team is here. Match begin your Dynamic Royals. Please do it fast. हांव रिक्वेस्ट करता GCCचे मेंबर करीम भाई, सिनियर मेंबर इस्माइल, प्रेसिडेंट शमीम भाई, प्रमोद, सेक्रेटरी मोहसिन, अमीर भाई आणि सगळ्यांनी आमच्या आयच्या दिसाचे मुखेल सोयरे भौमानेस्त विजय बाब सरदेसाई तसेच मौलाना बाब इब्राहिम, गेस्ट ऑफ ऑनर आमचे मुश्ताक बाब अहमद आणि अमीन खान हांकां सगळ्यांक सन्मानान वेदिकेचे सकयल हाडचे आणि ग्राउंडार आता जी फायनल जातली ताजी एक बारीकशे हँड शेकिंग सेरेमनी तशेंच एक नॅशनल एंथम प्ले करतले आणि मागीर टॉस उडोवन फायनलीक सुरवात जातली. सो आमचे मानेस्त श्री विजय बाब सरदेसाय फातोडेचे आमदार आणि तशेंच तांचे बरोबर आमचे स्पॉन्सर्स को स्पॉन्सर्स हांगा सगळे येतात ह्या फायनलीक. एक इम्पॉर्टंट मॅच, इतलो बरो टुर्नामेंट घडला आणि लास्टाक KKG नायट रायडर्स आणि डायनामिक रॉयल्स हे फायनलीक पाविल्ले आसा. So get sir. Sir, requesting starting from the captain of KKG Night Riders, Gopal Gaus. Gopal Gaus sang तुझ्या प्लेयराची. So the guys wishing the players of KKG at and now is the turn of captain Sayyid Badi, the captain of so guys wishing them good luck. Here are the umpires, Western Lucas, Sagar Gosavi, Babu and Aslam Sheikh. Teams starting from captain here. So म्हाका दिसता आता लाइन अप चालू आसा. बद्दी, सय्यद बद्दी आणि तुझी टीम यो हांगा स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन करात. DJ मास्टर रेडी राव. ऑन काउंट डाउन नाउ फ्रॉम 5. हांगा जितले जाण बशिल्ले आसात तांकां रिक्वेस्ट करता मातशे जाग्याचेर उबे रावात.
आणि तशेंच कोणे कॅप जर घाला जाल्यार ते कॅप मातशे काड. सगळ्यांक रिक्वेस्ट आमी नॅशनल एंथम प्ले करतले. प्लीज स्टँड अप फॉर द मातशे कॅप काडात. बोलो भारत माता की वंदे मातरम. सर एक फोटोशूट करपा बारीकसो. ना पयली फोटोशूट करया आनी मागीर टॉस करया. ओके सर. यस टीम्स जी अशें या अशें बेगीन या फास्ट प्लीज कम हियर. टीम फोटो एंड बदी फोटो हांगाड बेगीन फास्ट. डायनामिक रॉयल्स मातशे यो. एक फोटो तो बनता है. फाइनल में पहुंच गए हैं. So Budibhai and Gopal Gaon start the toss. So a big final is 2.0 Premier League. Sir. Yes, this is the chance here. Gopal Gaon.
Yes, it is a big smile. Kide? We'll bowl first. We'll bowl first. These are the light conditions. So I think you must have decided in the team meeting that winning the toss, you will elect to first. No, all the other matches also we won bowling first, so this match also will bowl first. You are definitely upbeat compared to other teams. You have won a match which was almost lost. So now 2 wins under the 2 matches. What is the mood in the camp? We are just motivated, and every match like we are like pumped up now. So hopefully, inshallah, we'll give our best in this match also. Their bowling is also quite good. So they have got 5 good bowlers and the variations as well. What sort of total you feel you need to restrict them? Thinking any totals, but like we have to play well. This is a final important match, so we will play all the overs. We'll bowl and restrict. That was a big step. Good luck to you. Wishing you good luck. Gopal, तू टॉस जिखीत जाल्यार म्हाका दिसता तुवें बी फिल्डिंग येता आशिल्लो. ना डेफिनेटली आमी बॅटिंग करतले आसले. कित्याक लास्ट मॅच सुद्दां आमी बॅटिंग केल्लेली, एक बरो स्कोर काडलेलो आमी. हे मॅचीक सुद्दां आमी ट्राय करतले की एक बरो स्कोर आमी काडटले. म्हणजे दिस इज द फायनल मॅच, सो बरोच प्रेशर आसतलो. इट्स नॉट डिफिकल्ट टू प्ले द फायनल्स. आणि जशें तुमची बॉलिंग लायनअप पयली जाल्यार बेस्ट बॉलिंग लायनअप, कित्याक एक लेग स्पिनर आसा, एक लेफ्ट आर्म मिडियम पेसर आसा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो कट करता तो आसा, एक रायट आर्म मिडियम पेसर आसा, एक बरी वेरिएशन्स आसा. सो तुका दिसता की जो टोटल तुमी काडटलो तो तुमी डिफेंड करपाक शकता? ही 8 ओव्हरीची मॅच आसा. एक्चुली सगळेच बरे प्लेयर आसा आमचे, पण फक्त दीस मॅटर करता. तो फक्त पर्टिक्युलर त्या बॉलराचो दीस बरो आसपाक जाय, बिकॉज एवरी वन इज प्लेयर हियर. आता जेन्ना फायनल खेळटा थिंकिंगान वचपाक जाय की एवरी डे सारकें मरे. डेफिनेटली आमी आमचे 100% दितले मॅच जिखपाक. सो गुड लक. म्हाका विजय बाब मागीर आमी माचयेर उलोवया. आनी आतां लोकूय म्हाका फातोडेकरान अख्खे गोंयचे लोक हांगा पाविल्ले आसा आनी तांकां फायनल पळोवपाची इच्छा आसा. आनी सराक खबर आसा, सर म्हणटा भाशण आतां नाका, मागीर पळोवया. लोकांक भाशणां नाका चड, लोकांक गेम पळोवपाक जाय. आनी सरान सांगलां मॅच चालू करुया. Final is going to start. So Dynamic Royals captain Sayyid Abadi Uzama has won the toss and deciding to field first. That's the news out from the center. So तुमकां सगळ्यांक विचारता, जे म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयच्यान हांगा लोक आयिल्ले आसा, म्हापशेच्यान, वास्कोच्यान, पेडणेच्यान, दारबांदोडा, सावड्ड्या, कुडचड्यार, केप्यां, मडगांव, सालसेट, तशेंच बाकीचे जितले वाठारे आसा, पणजे धरा तुमी, तालिगांव, सगळ्या वाठारांतले लोक जे क्रिकेट मोगी आसा ते हांगा पाविल्ले आसा. आर यू ऑल एक्सायटेड फॉर द फायनल्स? येस? आर यू ऑल एक्सायटेड? जोरान पेपारे जोरान जावनी. आयचो लास्ट दीस, मागीर वाजोवपाक मेळपाना. फोर्स जोरान लागपा जाय. सो म्हाका दिसता सगळे लोक पयल्या बॉलाची वाट पळयता. टॉस जाल्ले आसा, सगळे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट जाल्ले आसा आनी आतां जातलो फायनली. आनी ताजो वतलो पयलो बॉल. डायनामिक रॉयल्स येतले फिल्डिंगेक आनी बॅटिंगेक वतले KKG नायट रायडर्स.
बंटी पटेल मला डायनामिक रॉयल्स. सो फुल सपोर्ट बंटी पटेल डायनामिक रॉयल्स. जबरदस्त सपोर्ट हा डायनामिक रॉयल्स हा जबरदस्त सपोर्ट या कॅम्पातला. पुढे या. रिक्वेस्ट करता मातशे अंपायर्स तशेंच डायनामिक रॉयल्स कॅम्प मातशे बेगीन या टीम. एकदा सपोर्ट कोणाक आवाज जोरान जावपा जाय. लास्ट दीस पळय कित्या 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 आसा तो फोर्स जावपा कितें आसता फोर्स लाया जोरान भितर. कोण कोण सगळ्यांनी एकच आवाजान सांगपा जाय सपोर्ट कोणाक. डायनामिक रॉयल्स बंटी पटेल सपोर्टर्स. बंटी पटेल सपोर्टर्स सगळे हांगा. सो म्हाका दिसता चडसो सपोर्ट डायनामिक रॉयल्स ह्या सायडीच्यान. फुडें या एकटो कोण केकेची मेळ्ळो सांगा मरे. आता तो डायनामिक रॉयल्स म्हणटा वा तुमी आवाज करा मरे केकेजीचो. केकेजी yes very good. There is a support for KKG also. So nice to see but need more noise compared to this one. सर तुका दिसता कोण येवपाक शकता ही मॅच. रॉयल्स डायनामिक रॉयल्स कित्याक कित्याक दिसता कित्याक तुवें मॅची पळयल्ली आसा कित्याक दिसता तुका. तेंची आमी पळयले ते भाशेन की बॉलिंग बरें आसा आनी आतां तेंचे जे बॅट्समॅन आसले ते फॉर्मा येयल्या जे मिडल ऑर्डर आसा ती बरी चलता अशें दिसता आमकां. एब्सोल्युटली सांगला सरान की त्यांची मिडल ऑर्डर जी रायट टायमार फॉर्मा येयल्ली आसा सो थंय तांकां एडवांटेज. म्हाका दिसता क्रिकेट सगळे फॉलो करता आनी सगळे रेडी करतात म्हणून इतले सगळे हांगा क्रिकेटीचे मोगी हांगा पाविल्ले आसात. देव बरें करूं. सर तुमचें नांव. कालिदास नायक. कालिदास बाब नायक बरें करूं तुमकां. कोणाक सपोर्ट कोण जिखताशें दिसता तुमचो. अशें क्रिकेटीचे सपोर्ट करपाक गरज ना पूण तुमकां अशें कॅल्क्युलेशन दोनी टिमी पळयलें जाल्यार कोण जिखताशें दिसता. बॉलिंग डायनामिक रॉयल्स. हॅलो डायनामिक रॉयल्स. डायनामिक रॉयल्स म्हाका दिसता चड सपोर्ट आसा हांगा सद्या फातोडा. परत एकदा प्रेडिक्शन पळोवया तुमचे सगळ्याले. मॅन कोण जावपाक शकता. प्रदीप पाटील फ्रॉम केकेआर. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. प्रदीप पाटील इज द प्रेडिक्शन. एक इनाम है जो कि इस फाइनल के अंतिम मुकाबले गेंदबाज के लिए ये इनाम है. जो पहला विकेट गेंदबाज लेगा उसको 1000 रुपए का इनाम है. 360 सॉल्यूशंस जो फारूक बेग सर फारूक बेग इन्होंने ये इनाम रखा है. जो भी गेंदबाज मैच में पहला विकेट लेगा उसके लिए 1000 रुपए का. थँक यू. हांगा एक बरो खेळगडी आसा वेटरन आनी भरपूर क्रिकेट खेळा लेदर बॉल अंकुश वापकुटकर. ताजो जो भुरगो आसा सद्या गोंयच्या टिमीक खेळटा रणजी टिमीक. अंकुश बाब तुमी हांगा पळयता मॅच तुका दिसता तुजें प्रेडिक्शन कितें. फिल्डिंग म्हणल्यार डायनामिक रॉयल्स. आनी तुका मॅन ऑफ द फायनल जर एक प्लेयर चूज करपा जाय जाल्यार कोण जिखतलो असो दिसता मॅन ऑफ द फायनल. बंटी पटेल. म्हाका दिसता बंटी पटेल जबरदस्त. अंकुश बाब. हेलो हेलो हेलो. एक दर्शकों से एक सूचना है दोस्तों. जिस कुर्सी पर जो कुर्सी है वो बैठने के लिए आप ऊपर खड़े होकर मैच मत देखिए दोस्तों. एक आपसे रिक्वेस्ट है जो कुर्सियां है वो बैठने के लिए है. ये बात प्लीज आप नोट कीजिए. और एक इनाम है सर 1 मिनट. 1000 रुपए का इनाम. बंटी पटेल का विकेट अगर लेते हैं तो 1000 रुपए का इनाम. दोस्तों जो आपको इनाम लगाने हैं पहला पैसा अगर कमेंट्री बॉक्स में जमा करो. और सामने जो साइड स्क्रीन के बिल्कुल सामने जो दर्शक बैठे हुए हैं दोस्तों आपसे थोड़ी प्रेडिक्शन कितें आसतलें.
यांची बॉल खूप बरी असा prediction थोड़ा थोड़ा आवाज बढ़ा दे. सो बॉलिंग लायनअप बरी आसा म्हणटा दामो सावडे बॉयज ते घेवन वता टीम आणि प्रेडिक्शन असा की 80 सकयल आसतलो. देव बरें करूं दामो. हरीश सर आपके साथ जरूर जुड़ जाएंगे बीच बीच में जब वक्त हो मिलेगा तब. लेकिन मुकाबला मैदान पर फाइनल का मेगा मैच जो कि शुरू हो चुका है. डायनामिक रॉयल्स क्रिकेट टीम ने टॉस जीता. सामने केकेजी नाइट राइडर्स जो बल्लेबाजी पर और पहली सफलता. बहुत ही कमाल का कैच मैदान पर. पहले विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर. ओपनिंग जोड़े में प्रदीप पाटिल और उन्हीं के साथ भरत अर्कसी जोड़ी. अनिकेत सनप जो कि गेंदबाजी और पहला विकेट चटकाते हुए मैदान पर. हरीश सर बोलिए, आप ही के साथ जुड़ जाएंगे बीच बीच में. और 1000 रुपए का इनाम का जो इनाम रखा था हमारे आदरणीय सर फारूक बेग जिन्होंने उस इनाम का जो कि हकदार रहते हुए. थैंक यू 360 आई सॉल्यूशंस. और वो इनाम का हकदार रहे गेंदबाज अनिकेत सनप. और जो साइड सीन के बिल्कुल जो कि सामने जो कि दर्शक है, चले प्लीज रिक्वेस्ट है दर्शकों से वो इलाका बिल्कुल थोड़ा सा खाली रखो क्योंकि बल्लेबाजी को थोड़ी सी परेशानी होती है. रात के मैच जब होते हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज जिस तरह से पिछले 2 दिन में 2 दिन के दिन रात में आपका साथ मिला है बस इस फाइनल के मैच में वो भी होना चाहिए आप ही का साथ. सगळ्यात चढ जर आवार करता जाल्यार हो क्राउड पहला विकेट बहुत सस्ते में लौटा. प्रदीप पाटिल आउट होकर बिना खाता खोले 0 पर मैदान पर बैटर भरत अर्कस और भरत अर्कस का साथ देने के लिए. और आज पहली बार इस मैदान पर जो कि इस श्रृंखला में गुरुप्रसाद आरोस्कर जो लेफ्ट हैंडर बैटर सामने गेंदबाजी पर अनिकेत सानप एक सफलता हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए. फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे मैदान पर गेंदबाज अनिकेत सानप. पहला ओवर पावर प्ले का ओवर. 8 ओवर का मैच है. 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का, तीसरे से 7वें तक एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर और इसी बीच में अगली गेंद. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार सम्मानजनक खेला, थोड़ा सा ढीले हाथों से खेला, रन के लिए निकले. बहुत ही कमाल की फील्डिंग, शानदार फील्डिंग से लिमिट पर तेजी के साथ गेंद को उठाते थ्रो करते लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित एक रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज. इस सिंगल के साथ केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम ने अपने रनों का खाता शुरू किया 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर. इस अगर टूर्नामेंट की बात की जाए ये दूसरे पर्व की भरत अर्कस बहुत ही शानदार अच्छे फॉर्म में है और सामने गुरुप्रसाद आरोस्कर आते आते पहला मौका मिल चुका इस जो कि प्रतियोगिता में सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए. और टॉपेज लगा इस बार और सामने ये बिल्कुल जो कि दूसरे प्रयास में पहले बार ऐसा लगा कि गेंद हाथों से छूटे. आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से, एलईडी स्क्रीन पर आप जरूर देखिए, रिप्ले देखिए किस तरह से ये शॉट खेलना चाहते थे. टॉपेज लगा पहली बार जो कि हाथों से थोड़ी सी फिसली थी गेंद लेकिन दूसरे प्रयास में कैच को लपेटा. बहुत ही शानदार शुरुआत गेंदबाजी में, 2 सफलता हासिल करते हुए अपने गेंदबाजी में और बड़ी निराशा के साथ निराश मन के साथ बिना खाता खोले ओपनिंग जोड़ी जो मैदान पर प्रदीप पाटिल 0 पर, भरत अर्कस 0 पर, गुरुप्रसाद बल्लेबाजी कर रहे 1 रन लेकिन कहीं ना कहीं नाजुक शुरुआत मैदान पर केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम की. 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर.
नए बैटर मैदान पर अंकुर सिंह आते हुए गुरु प्रसाद का साथ देने के लिए। 1 रन 2 विकेट पर एक नाजुक शुरुआत मैदान पर, एक साझेदारी बनानी पड़ेंगे इस मैदान पर केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम को मैच को आगे बढ़ाने के लिए। देखना होगा फिलहाल क्या होता है मैदान पर। बहुत ही शानदार शुरुआत गेंदबाजी में, पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर, और पावर प्ले में पहले ओवर में 2 सफलता। फुल टॉस गेंद इस बार हल्के से मोड़ा गेंद को स्क्वायर लेग पर, फील्डर तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते, लेकिन थ्रो उतना अच्छा नहीं रहा। जब तक बैकअप होता मिड ऑन पर एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ स्कोर 2 रन 2 विकेट पर। केकेजी नाइट राइडर्स और डायनामिक रॉयल्स, एक मेगा फाइनल टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला चलता हुआ दोनों के बीच में। मान्यवर कक्ष में सम्माननीय अतिथि, मैदान के चारों ओर खचाखच भरा हुआ यह मैदान, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में। सर हरीश काकोड़कर, सागर गोस्वामी, जय भोसले और मैं अशोक नाइक, मेरे साथ विराज तेंदुलकर पूरी स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, और हमारे ऑनलाइन स्कोर जो जुड़ चुके हैं शिवम मिश्रा। TennisCricket.in की गौरव सावंत और उनकी पूरी टीम, 4 अंपायर इस टूर्नामेंट में, सदगिरी नाइक, सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक, असलम शेख और शिवशरण उर्फ बाबू दाबोलकर। सामने से पहले ओवर के बाद दूसरे ओवर की शुरुआत, और बॉलिंग बार पर बंटी पटेल गेंदबाजी करने के लिए। बंटी पटेल सामने से फातोडा स्टेडियम की ओर से। और पटकी हुई गेंद इस बार बेहतरीन शॉट, अपर कट का डीप कवर पॉइंट, बाउंड्री पर एक लाजवाब टाइमिंग, गेंद चली गई डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर। थोड़ी सी जायदाद हो रही है, अंपायर का इशारा होगा, और गेंद निकली 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। पहला बड़ा शॉट निकलता हुआ बल्लेबाजी में, कहीं ना कहीं पहले ओवर में रोक लगा दी थी अनिकेत सानप ने। बंटी पटेल का स्वागत किया एक बड़े शॉट के साथ, चौके के साथ, और चौके के साथ 4 रन के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ 6 रन पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए एक बार फिर से जुड़ जाते हैं मैदान पर। सामने आते आते एक बड़ा शॉट लगाते हुए बल्लेबाजी में आगाज करते हुए अपने आने का अंकुर सिंह 4 पर सामना करते हुए। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार लगभग बीट किया इस गेंद ने, थोड़ी सी उछाल मिली, कट होकर बाहर की तरफ निकली। विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी, स्लिप पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं मैदान पर। बहुत ही सुंदर आयोजन इस टूर्नामेंट का, डे नाइट का, सुरभि लाइट्स, शब्बीर भाई कोल्हापुर, शानदार साउंड सिस्टम हमारे दीपक डीजे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर सिंह स्ट्राइक पिन पर बल्लेबाजी करते हुए, एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी इस आखिरी मुकाबले में अपने टीम के लिए। और इस बार बढ़िया शॉट, थोड़ा सा हवा में गेंद, वाइडिश गली पर गेंद निकलते हुए फील्डर गेंद के पीछे देखना होगा, लगभग बाउंड्री लाइन पर गेंद को रोका, और जब तक गेंद को फील्ड करते सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक अच्छा शॉट था, थोड़ी सी अपेश निकली थी गली पर गेंद हवा में, लेकिन फील्डर से बहुत दूर थी, और शानदार फील्डिंग, आखिर तक गेंद का पीछा किया। एक एक रन बहुत कीमती होता है, जब मुकाबला टाई हो जाता है तो ये मालूम बात मैदान पर पड़ते हैं। फिलहाल 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, 5 पर खुद के व्यक्तिगत, और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गुरु प्रसाद आरुस्कर 1 रन पर बल्लेबाजी करते हुए।
खेल जारी दूसरे ओवर का। बंटी पटेल एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। थोड़ी सी बातचीत मैदान पर। बहुत ही सुंदर आयोजन। टाइटल स्पॉन्सर sportsninja.in, को स्पॉन्सर CSG, शगुन होटल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन मैदान पर हो रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैटर है और बंटी पटेल राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। राइट हैंडर के लिए ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट। इस टूर्नामेंट में पहली बार मौका मिल चुका है। गुरु प्रसाद कट के इस बार बढ़िया शॉट बैकफुट पर निकले, स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ इस बार। और जब तक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, फिर से एक रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट। मालूम है 2 विकेट बहुत जल्द खो चुके हैं, कहीं ना कहीं साझेदारी बनानी पड़ेगी। सामने से टॉस जीतकर डायनामिक रॉयल्स क्रिकेट टीम शानदार शुरुआत करते हुए पहले ओवर में 2 सफलता और बाद में दूसरा ओवर मैच का मैदान पर जो पावर प्ले का ओवर और एक ओवर जो बैटिंग पावर प्ले का, तीसरे से 7वें तक वो ओवर अभी भी बाकी। इस बार थोड़ी सी पुलर लेन की गेंद शफल हुए, गेंद को खेला इस बार ऑन साइड पर, फिर से एक बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर तेजी के साथ फील्डर आते गेंद को फील्ड करते, लेकिन दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया मैदान पर। फिर से एक रन जुड़ गया टीम स्कोर के खाते में। केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी 9 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर खेल दूसरे ओवर का चलता हुआ। और इस बार बिल्कुल बीट किया गेंद ने। गुरु प्रसाद स्ट्राइक इन पर सामना करते हुए उस गेंदबाजी का खेल 2 ओवर का जो पावर प्ले का शुरू का खेल। डायनामिक रॉयल्स क्रिकेट टीम ने सामने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का, फील्डिंग करने का फैसला किया और एक थोड़ी सी धीमी शुरुआत मैदान पर केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम को ऊपर से जो कि 2 धक्के शुरू में लगे 9 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। वाइल्ड फायर एनर्जी ड्रिंक, अलबरका होटल, इहाप इंटरेस, सीस इंजीनियरिंग्स, उषा स्टोर्स, अल्स्टोन्स, स्टार फिशर्स, एडमंड फर्नांडिस, आकाश फिश मिल, क्वालिटी एक्सपर्ट। तो आप सभी का धन्यवाद इस टूर्नामेंट के साथ। और स्कोर रुका हुआ 9 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर खेल जारी तीसरे ओवर का। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, हर्षद मातोंडकर ओवर पिच गेंद, इस बार एक लॉफ्टेड शॉट, गेंद सामने बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के। ओ इस बार बिल्कुल शायद ये बड़ा खतरा हो सकता था मैदान पर। दोनों फील्डर बिल्कुल सामने आ चुके थे। लॉन्ग ऑन के फील्डर, लॉन्ग ऑफ के फील्डर, बातचीत बिल्कुल नहीं थी, कैच के लिए निकले थे। लेकिन खुशकिस्मत मैं तो कहूंगा ये बिल्कुल हादसा होते होते बच गया मैदान पर। टकराव होने की संभावना थी, बाल बाल वहां पर मैं तो कहूंगा ये बिल्कुल जो कि बड़ा आघात बन सकता था मैदान पर, क्योंकि दोनों फील्डर बिल्कुल सामने, आपस में टकराव होने की संभावना थी। और इसे बीच में गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। दूसरा चौका, 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 2000 रुपए का इनाम केकेजी की ओर से, जो कि अगर 2 छक्के लगाते हैं लगातार तो। अगली गेंद इसी बीच में
और अल्टीपल्टी इस बार बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, देखना होगा कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर है तैनात, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते, लेकिन फिर से सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों का। 10 पर खुद के 2 चौके अब तक बल्लेबाजी में अंकुर सिंह और 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर के खाते में उनके 11 पर पहुंचे, 2 रन पर गुरु प्रसाद आरोस्कर। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का हर्षद मातोंडकर गेंदबाजी कर रहे और टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। थोड़ा सा फील्डिंग को फिर से ठीक ठाक किया, लेकिन लेफ्ट हैंडर बैटर और राइट आर्म राउंड विकेट। फुल टॉस गेंद इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होता है मैदान पर। लेग बाइज का इशारा, फिलहाल 1 रन मिला स्कोर के खाते में। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद पैरों पे टकराई, कवर पॉइंट पर निकले, फील्डर गेंद को फील्ड करते और इस बीच में समय था दोनों बल्लेबाजों को 1 रन पूरा करने का। सिंगल डबल अब तक 2 चौके लगते हुए जो लगा है अंकुर सिंह ने, बहुत कुछ दारोमदार होगी। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गुरु प्रसाद आरोस्कर, पहली बार मौका, लेकिन प्रतिभा है इस खिलाड़ी में। अच्छी गेंद, हल्के से स्लाइस किया गेंद को, कवर पॉइंट पर फील्डर, लेकिन इस बार बिल्कुल मौका नहीं दिया फील्डर ने, गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर हर्षद मातोंडकर। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का और स्कोर और स्लॉग स्लिप का शॉट, एक लाजवाब टाइमिंग इस बार, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद तारामंडल में निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार, थोड़ी सी स्लॉट में गेंद मिली और एक शानदार टाइमिंग। अंकुर सिंह तीसरा बड़ा शॉट, 2 चौके अब तक 1 छक्का लगाते हुए अपने इनिंग में और स्कोर तेजी के साथ 21 लॉस ऑफ 2 विकेट, 21 रन 2 विकेट पर हर्षद मातोंडकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस गेंद बाहरी किनारा, इस बार कवर पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते और इसी के साथ खेल समाप्त होता हुआ तीसरे ओवर का। 7 रन के साथ प्रति ओवर रन बनाती हुई केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद टोटल 21 लॉस ऑफ 2 विकेट। जर्सी पार्टनर इस टूर्नामेंट के साथ सावली गोवा। टाइटल स्पॉन्सर sportsninja.in, को स्पॉन्सर सेजी शगुन होटल। और इसी बीच में चौथे ओवर की थोड़ी सी चर्चा हो रही है मैदान पर। चौथे ओवर की जिम्मेदारी किन के हाथों में सुपुर्द की जाए गेंदबाजी करने के लिए। 7 रन प्रति ओवर में 21 रन टोटल, 2 विकेट के नुकसान पर। इनाम जारी है, जो इनाम सिर्फ है वो है केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के लिए। अगर लगातार 2 छक्के लगाते हैं तो बल्लेबाज को मिलेंगे 2000 रुपए। थैंक यू। ये इनाम सिर्फ केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों के लिए है। फिलहाल चौथे ओवर की शुरुआत मैदान पर सामने फातोड़ा स्टेडियम की ओर से गेंदबाज बंटी पटेल, खुद का दूसरा, स्कोर रुका हुआ 21 रन 2 विकेट पर। शुरू के ओपनिंग जोड़ी ने, दोनों बैटर ने खाता नहीं खोला, प्रदीप पाटिल और उन्हीं के साथ भरत अर्कस बहुत निराश किया इस मैच में जो अंतिम मुकाबले में। और गुरु प्रसाद आरोस्कर सामने थोड़ा सा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे थे, अंपायर ने बिल्कुल रोका गेंदबाज बंटी पटेल को। आज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, एक यादगार इनिंग खेली जो पिछले मैच में। वो अब गेंदबाजी पर राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए, ऑफसाइड पर डीप एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है, बाउंड्री लाइन पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए।
और छोटी गेंद इस बार हुक किया गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। गुरु प्रसाद आरोस करके बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार शॉट। गेंद मिली और गुरु प्रसाद बिल्कुल इस गेंद के लिए इंतजार कर रहे थे, तैयार थे इस शॉट के लिए। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा 25 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। एक नाजुक शुरुआत के बाद ये जोड़ी गुरु प्रसाद आरोस्कर और उनका साथ देते हुए अंकुर सिंह साझेदारी बनाती हुई 8 ओवर का मैच है। देखना होगा सामने कितना लक्ष्य रखती है डायनामिक रॉयल्स क्रिकेट टीम के सामने इस अंतिम मुकाबले में। चारों तरफ दर्शक इस मैदान पर, यूट्यूब पर भी कई दर्शक जुड़ चुके हैं इस प्रतियोगिता में। मान्यवर कक्ष में सम्मानीय अतिथि इस मैच का आनंद लेते हुए आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। राउंड विकेट एक बार फिर से बंटी पटेल अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। और पीछा किया था बिल्कुल कट होकर, थोड़ी सी ये ऑफ ब्रेक गेंद बाहर की तरफ निकली। गेंदों को बिल्कुल मिश्रण कर रहे, कभी जो कि लेग कटर, कभी ऑफ कटर, कभी पुलर लेन की गेंद। और ये ऑफ ब्रेक गेंद जो हमेशा लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए परेशान करती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। स्कोर बोर्ड पर टोटल 25, लॉस ऑफ 2 विकेट, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। खेल चौथे ओवर का मैच का चलता हुआ। बढ़िया शॉट, बैकफुट पर निकले, स्टोक के लिए जगह बनाई, स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ। इस बार 1 रन, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। और जब तक थ्रो पहुंचता, बैकअप हो रहा था, 2 रन जुड़ते हुए टीम के स्कोर के खाते में। शानदार शॉट, अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, क्योंकि आप बार बार चौके छक्के नहीं लगा सकते। यह भी क्रिकेट है बिल्कुल मैदान पर, जो सिंगल डबल के साथ भी आपको रन बनाने पड़ेंगे। और 2 रन जुड़ गए, 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 27 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। शानदार शुरुआत गेंदबाजी में अनिकेत सानप, जो आयोकार करता गोवा फॉरवर्डाचे जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास बाब कामत हांगा मॅच पळोवपाक आयिल्ले आसा। ही जबरदस्त फायनल। येवकार तुका दुर्गादास बाब। एक डॉट गेंद मैदान पर बंटी पटेल एक बार फिर से, जो राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए। स्कोर में कोई इजाफा नहीं मैदान पर। चौथा ओवर अभी भी जारी मैच का और स्कोर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी फिर से चर्चा हो रही है मैदान पर। गुरु प्रसाद आरोस्कर एक चौका, 8 पर खुद के व्यक्तिगत 2 चौके, 1 छक्का। अंकुर सिंह एक नाजुक शुरुआत के बाद ये जोड़ी निश्चित रूप से, जबकि एक बिल्कुल 1 रन 2 विकेट पर यह बिल्कुल स्थिति थी मैदान पर केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के लिए। लगातार अगर 2 छक्के लगाते हैं बल्लेबाज तो 2000 रुपए का इनाम जारी है। लेकिन देखना होगा जिस तरह से चौथा ओवर शुरू है, 2 विकेट खोए हैं। मालूम है दोनों बल्लेबाजों को थोड़ी सी जो कि संभल कर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने टीम बिल्कुल जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रही है मैदान पर। और इस बार पुल किया गेंद को, गेंद देखना होगा थोड़ी सी हवा में दिखाई देते हुए, फील्डर है और इसी के साथ शायद उतना अच्छा संपर्क नहीं रहा था। और फिलहाल एक जो कि रन आगे बढ़ते हुए स्कोर के खाते में 1 रन जुड़ गया, स्कोर के खाते में 1 रन। गुरु प्रसाद और सामने अंकुर सिंह एक बार फिर से सामना करते हुए बंटी पटेल की गेंदबाजी का। चौथा ओवर अभी भी जारी मैच का। मुख्तार भाई, आनंद यूजीकर और उन्हीं के साथ शमीम भाई, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी प्रतियोगिता में आपने मुझे कमेंट्री के लिए मौका दिया। एक बार आपके पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं।
क्योंकि ये चौथा ओवर यहाँ पर आपके साथ का मेरा सफर भी आपके साथ का जो कि समाप्त होगा। जुड़ जाएंगे हरीश काकोड़कर, सागर गोस्वामी और जय भोसले। लेकिन उससे पहले ये चौथा ओवर और चौथे ओवर की समाप्ति के और बंटी पटेल अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। अंकुर सिंह शानदार इनिंग खेल रहे, एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। अब तक एक बड़ा शॉट लगा चुके, छक्का लगा चुके, 2 चौके लगा चुके हैं अपने इनिंग में। थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन हो रहा है। फुल टॉस गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेला, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, लेकिन कैरी नहीं कर पाए, बिल्कुल कैरी नहीं कर पाए। ओवर थ्रो रहा जब तक गेंद को फील्ड करते कवर पॉइंट पर लगभग गली पर। एक 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन जुड़ गया स्कोर के खाते में। हेलो, तो टोटल स्कोर हो चुका है 29। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 4 ओवर का। 5वें ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए सर हरीश काकोड़कर के साथ। Ankur Singh himself is the captain of rest of India team when they are playing the tennis ball cricket. Wonderful player. So you can imagine the talent that he has. And also Bunty Patel from Valsad, Gujarat has won many man of the match, man of the tournament awards in his career. Batting power play has been taken in Udupi Premier League. He was adjudged player of the tournament where he won the 4-wheeler. Munna Sheikh in one of the Supremo. The Supremo is a highly rated trophy in Mumbai, Maharashtra. There Munna Sheikh had won the player of the tournament award with a 4-wheeler under his kitty. So some big names, big players playing in these finals. And here is an opportunity for me. This is my last turn for the night in these finals. I can understand that the match is slowly poised in favor of the bowling side, Dynamic Royals, but just 1 or 2 overs, everything is going to change. That catch which was dropped, is it the explosion of volcano that will erupt from Ankur Singh's side at this point, or are they not going to pay the price of their drop chance? Oh, this is India. This might be one more chance. Catch taken. So they are not going to pay the heavy price of dropping Ankur Singh. He went for the shot in the square leg region and departs. Good catch by short fine leg region fielder, and Dynamic Royals are taking wickets at the right interval. Ankur Singh was looking good, and with those 2 boundaries and a 6, looked like he is going for a big innings, but not this time, not in the finals. He departs, and Harshad Matonka, known as Kane in Goa, takes wicket of the very first ball.
almost right to thank the organizers. Look at the crowd. This is buzzing. This is aura. This is super here. And all the Goikas, we thank you from the bottom of heart for giving such a hearty welcome to all the outstation players, and also recognizing that hard work has been done by the organizers. You are thronged in large numbers, and no one is moving an inch until the last ball of the finals is being bowled. We also welcome Manish Jain sir, the CEO of EMO. EMO is the sponsor of Man of the Series, that is Emo Bike, that is kept on stage, and also title sponsor sportsninja.in, co-sponsors Mushtaq Bab Ahmed C-Easy and Amin Bab Khan Shagun Hotel, supported by US Pizza, M Street, 6 Star 6, Wildfire Energy Drink, Al Barka Hotel, E-Hub Interiors, SES Engineering, Usha Stores, Alstone, Star Fisheries, Edmond Ba Fernandez, Akash Fishmill, Quality Exports, Kukalim. On one more wicket, Royals are doing it in Royals way in the finals. Every batsman that is coming has been taken out of the contest here by the bowling side, and Kane is doing a fabulous job. It's absolutely amazing. And it's all pink on the ground at the moment. I was going around the ground, and I saw that lots of supporters of Bunty Patel and this dynamic Royals team, they must be jubilated. Yes, look at them, they are happy, they are very happy. Now it will be a lot of pressure here on the batting order. Sanket Moraskar coming on to the wickets. So both are Goan players, both are left-handers, both are excellent in their own terms. One of my favorite players, you can certainly say, is Sanket Moraskar, hailing from Fathoda, Margaon area. And he has represented Goa under 25 in leather ball. So certainly no mug with the bat. A wonderful talent here coming up to the crease against Kane. This time very nicely bowled. Sometimes when the wickets are falling and the pressure has been piled upon by the captain, even a decent bowler looks great. And at this stage, the same thing happening here for Dynamic Royals. Harshat Matondkar has taken his 9th wicket at the previous one. This is in the air. Will it be taken? It is going to be a difficult catch. He has not timed it well. Oh my God! This is outstanding. This is super stuff. Dynamic Royals. And who is that? Chipu. Akshay Zogle, take a bow, man. Just take a bow. This is the outstanding catch that I have seen in my commentary career. This I thought is going for 4 runs, and he has taken an absolute stunner. Absolute stunner. Well, hard luck to Sanket. This was an unbelievable, exceptional, outrageous, super stuff here from the fielder. This wicket not go to the Kane, but I think 90% Kane should thank the fielder Akshay Jogre. This is the level of fielding that Goa has seen, and it is increasing. The level is increasing just because of the tournament like this, SGPL 2.0. This is giving the platform to all the local talents, what we call Goikarpan, and for them this stage is very much important, which has been provided by Gauti Cricket Club here. What a turnaround. Sanket was, that was not a bad shot, that was actually a good shot. This was unbelievable. 3 wickets in this over and just 1 run, that too off the wide. Kane, it is Harshal Matondkar, but he is called Kane.
One cane I remembered in WWE wrestling, and here is one cane of Goa. The dynamic Royals right now all over KKG Knight Riders. All over. Score at the moment is just 30 for the loss of 5 wickets. Guru Prasad Aroskar and now Alvino Carvalho. Alvino Carvalho hailing from Sheldon region of Kurcharam. Once again going for the cross-batted shot. A very good player, normally bats at number 1 spotted as an opener for his team. This time he has got an opportunity to come at number 7 spot. But the way the cane is bowling at the moment, just like the cycle might go in his way. Cycle sponsored by DGCOM for man of the final. This is India, very nicely played shot. He scored for 6 runs. Yes, 6 runs. So Alvino Carvalho, they have got the batting depth. They are playing deep down, and the 6 certainly adds flavor to their color, the purple color. After completion of 5 overs, the score is 36 for the roster for 5 wickets. Take early wickets, you got variations in your bowling attack. 80 should be the first target. That is exactly what I think, and hope the captain also thinks the same way. Still 3 overs left for them to get to the total, and after that 6 from Alvino Carvalho. I think the dressing room hopes must have lit up. Kridesh Kinarkar, new bowler. Bowling to the left-hander, Guru Prasad Aroskar, hailing from Pernia region. So now Pernem and Kurcharam have to save KKG Knight Riders here. Can they rescue them from the clutches of defeat? 1 dot ball. They are tightening the stranglehold here, tightening the stranglehold in a good way by bowling dot balls and also taking wickets in good succession. Kritesh had bowled a very good over. If you remember that previous match, not the previous one, but the first match against Oxford Titans, they were going great guns, and second last over he bowled. He gave hardly any runs. It was Akshay Jogle and Kritesh Kinrekar that got them that match against Oxford Titans, the Eliminator. And once again he has to do that job. You cannot think here after losing 5 wickets that the match is ours. This is finals. We have seen strange things happening in the game of great uncertainties. We call it cricket. We love that game, love to the core, love from the bottom of the heart. That's why people are coming in thousands here. So trying that big hoik, just getting inside edge of the bat just for a single.
If you aim a little higher, you will get to the target. If your aim is somewhere around 85-90, you might get somewhere around 70. So aiming high, aiming big is always important. Think that it has not gone out of the hands. We can still come back strongly. Should be the mantra here of the betting side. This is in the air as he timed it well. This is gone high, high, and what has happened over there? I cannot see. Yes, it's a 6 runs. It's way too far. The ball has also gone way too high, and finally it comes down outside the boundary rope for 6 runs. Newton's law of gravitational pull was out of the context. Manish Jain sir liked that comment very much, and is smiling. He's still smiling. That was it. I heard the noise here in the commentary box. He went for the cross-body shot, and Kritesh after the 6 strikes back strongly. Strikes back strongly here and taking the wicket of Guru Prasad Aroskar. So the wickets are coming continuous here for the fielding unit of Dynamic Royals, and the score at the moment is 44 for the loss of 6 wickets. Mishra there is how you do fitness and keep yourself fit. So you can do that fitness work. Shivam is the online scorer. आणि हे सगळे स्क्रीनचेर सांगपाक म्हाका ताणेच सांगला. Yeah, but that is good actually. Fitness is very important, and I think fitness, I was talking to Anand Badri that fitness is also an important key. I can understand 3 games are being played by Dynamic Royals here, so fitness is utmost important, and you need to be doing the pre-match fitness and post-match fitness every now and every then, because you can see our station players much fitter than the Goan players. So this also is an aspect that we have to get into our forte if we need to succeed in the bigger tournaments like this. So after 6 overs, the score is 45 for the loss of 6. I guess सगळे जे गोंयकार हांगा आशिल्ले आसात, म्हाका दिसता जसो म्हाका मेसेजीस येता वॉट्सॅपाचेर की इंग्लिशीन कॉमेंट्री सगळ्यांक आवडटा, पूण म्हाका दिसता गोंयकार जेन्ना जमता तेन्ना कोंकणीन कॉमेंट्री जावपाक जाय, आनी गोंयकारपण जेन्ना स्टेजीचेर आसा तेन्ना कोंकणी आमची मायभास आनी कोंकणी आमची अस्मिताय ती फुडें व्हरपाकूच जाय. सो 2 ओवर हांव कोंकणीन सांगतलो. So फुडली ओवर घेवन येता अनिकेत सनाप, एक बऱ्यांतलो बरो बॉलर. जेन्ना पयली ओवर घाल्ली आनी आउटस्टेशन प्लेयर अजून पर्यंत जर कोणे ह्या टुर्नामेंटाक एक दर्जेदार बॉलिंग घाल्ली आसा तो अनिकेत सनाप, लेफ्ट आर्म मिडियम पेसर, आनी सद्या परिस्थिती पळयल्यार 6 विकेट्यो गेल्ल्यो आसा. एक बारीकशी कॅमियो, एक बरी इनिंग्स हांगा गरजेची आसा. परत एकदा उखलून मारपाचो यत्न केल्लो स्वीच शीट. जर स्वीच शीट कोणे इन्व्हेंट केली जाल्यार तो केविन पिटर्सनान हाजो इन्व्हेंट केले शॉटीचो, आनी आतां ग्लेन मॅक्सवेल आनी बाकीचे सगळे जे प्लेयर्स आसा, जावं तो डेव्हिड वॉर्नर आनी आतां सगळे आमचे खेळगडी हांगचे तेय बी ट्राय करतात आनी बऱ्या रित्यान खेळटात. पळोवपाक गेले जाल्यार खूब भायर बॉल आनी अंपायरान सिग्नल केला वायड.
ह्या वायडा फाटल्यान स्कोर 1 रन मुखार गेला, 1 धाव मुखार गेला 46 धावा, 46 रन्स. परत एकदा उकलून मारला आणि आखांताची 6, जबरदस्त 6 जागे केल्ले आसा. जे कोण दिले तांकां ह्या शॉटीन जागे केल्ले आसा आणि म्हाका दिसता जर अशी बॅटिंग चालू उरली जाल्यार हो स्कोर 80 लागीं पावपाक शकता. विनोद विल्सन मंचाकडे जर जिखपाची जैताची व्हील आसा जाल्यार तो म्हणटा तो विल्सन. परत एकदा मारपाचो यत्न केल्लो पण सफल जालो ना. परत एकदा एक निर्धाव बॉल डॉट. सध्या अजून पर्यंत 3 बॉलाक आयल्या 7 रन. पहिले टार्गेट म्हाका दिसता चेंज केला आसतले, 70-75 कडेन पावले आसतले. वायट टार्गेट आसपाना. अनिकेत परत एकदा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. परत एकदा उखलून मारला. गॅपान आसा काय ना? गॅपान आसा. सारको बायसेक्ट केल्लो आसा. दोन्ही फिल्डर हालूना आणि ताज्या खातीर स्कोर जाल्लो आसा. 4 रनान फुडें गेला. म्हाका दिसता जेन्ना मॅच क्लास चालू आशिल्ली तेन्ना अल्विन कार्वालो बरोच मॅच बरो शिकला आणि प्रोटेक्टर घेवन ताणें बायसेक्शन म्हणटा तें कितें तें पळयल्लें आसा आणि सारकें बायसेक्ट केल्लें आसा दोन्ही फिल्डराक. परत एकदा कॅच जावपाक शकता ना. मातसो पयस उरलो. 1 रन. पूण अजून पर्यंत विनोद विल्सन जो इनिंग्स खेळटा त्या इनिंग्सान म्हाका दिसता मातशी उर्बा हाडिल्ली आसा, उर्जा हाडिल्ली आसा आणि ती उर्जा वता केकेजी नायट रायडर्स कॅम्पा भितर. अजून मॅच वचूना. तशेंच आनी एक मोठे अनाउन्समेंट हांगा येता. जे लास्ट सीझन गोवा प्रिमियर लीग म्हणल्यार एक मोठो टुर्नामेंट दबाजान घडोवन हाडिल्लो तो आल्लेम क्रिकेट ग्राउंडार समरसेट क्लबान. तो परत एकदा ताजो अनाउन्समेंट येता की समरसेट परत एकदा आनी एकदा गोवा प्रिमियर लीग ऑर्गनायज करतले. ताची डेट्स तुमकां थोड्याच दिसांनी भायर सरतल्यो. परत एकदा डॉट गेंद आणि 1 डॉट बॉलाच्या उपरांत 7 ओव्हरीच्या नंतर स्कोर जाल्लो आसा 57. फर्स्ट ऑल गोवा पंचायत लेवल हेवी बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट जो जातलो 29, 30, 31 मार्च आणि 1 एप्रिल. वेन्यू मोलेम पंचायत ग्राउंड. विनर्स 1 लाख प्लस ट्रॉफी, रनर्स 50,000 प्लस ट्रॉफी. सो जांकां कोणाक आमचे जे पंचायत म्युनिसिपालिटी जे आसा तांकां जस्ट इन्फॉर्मेशन. तुमचे जर कॉन्टॅक्ट नंबर आसा जाल्यार अक्षय आनी सुजय जांचो संपर्क नंबर आसा 9370472674 आणि सुजयाचो नंबर आसा 9307489620. हांकां तुमी संपर्क करचो. एक मोठो टुर्नामेंट मोल्या वाठारान जाता. थंय तुमी आपली जी टीम आसा ती घालपाक जाता. सो 2 मोठे अनाउन्समेंट. सगळ्यात मोठो म्हणटा तो समरसेट क्लबाचो. समरसेट क्लब एक दबाजान घडोवन हाडटा आणि मोठ्या रित्यान घडोवन हाडटा. पण आज जर आमी पळयला एक सुंदर आयोजन आणि अजून पर्यंत सगळ्यांत गोंयचे मोठे आयोजन जर कोणे केला ते गांवठी क्रिकेट क्लब ह्या फातोडेच्या ग्राउंडार. आणि म्हाका दिसता हे स्टँडर्ड मॅच करपाक दुसऱ्यांकूय भरपूर त्रास करचे पडटले जशे त्रास ह्या ऑर्गनायझींग टिमीन काडिल्ले आसा सगळ्या गोंयकारां खातीर आनी फातोडेकारां खातीर. तसोच 5 एप्रिल ते 10 एप्रिल पानपराग उजगांव हांगा टुर्नामेंट जाता. तो जातलो 2 लाखाचो.
तोय टुर्नामेंटाचो अनाउन्समेंट कारण सगळे थोडे कडेन रिलेशन्स असतात आणि लोकांनी पळयलें आसा की खूब जाण लायव्ह व्ह्युअर्स आसतात आणि तांकांय दिसता की आपल्याले जो टुर्नामेंट आसा ताजी मातशें तुवें सांगचें आणि म्हाका दिसता एज अ क्रिकेट आमी एक फ्रेटर्निटी आणि सगळ्यांक वयर काडपाची गरज आसा सगळे गोंयकार आमचे भाव बंधू सो ही तुमकां सगळे आमी अनाउन्समेंट हांगा दितात. तशेंच सानवडेच्यान अनाउन्समेंट येता. सावडे बॉयज टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता 1 ते 5 मार्च 1 लाखाचो टुर्नामेंट कुडचडेच्या एसएजी ग्राउंडार जातलो आणि मोठो टुर्नामेंट परत एकदा पंचायत म्युनिसिपालिटी लेवल जर कोणाक नांव दिवपाक जाय जाल्यार दामो आसा ना जाल्यार म्हाका सुद्दां संपर्क करपाक जाता. शॉर्ट बॉल मारिल्लो आसा उखलून आणि गेला सामको शगुन हॉटेलाच्या सायडीन जबरदस्त सिक्स. म्हाका दिसता शगुन हॉटेलाचो ओनर जो आसा अमीन खान ताणें हांगा जे टावर्स लायिल्ले आसा ताजे वयर बॅनर आसा. जर बॅनराचेर मारता खंयचोय प्लेयर जाल्यार 1000 रुपयाचें इनाम आणि जर कोणी स्पेक्टेटर भायर एक हातान कॅश धरता जाल्यार ताकाय बी 1000 रुपयाचो इनाम दवरिल्लो आसा. तुमी जागे रावात. थोड्या खेळना आसतना खेळून सुद्दां म्हाका दिसता 1000 रुपया मेळना जर तुमगे सारको हात रायट टायमार सारक्या जाग्यार पावलो हात आणि बॉल तुमच्या हातान आयलो जाल्यार तुमकां मेळटले 1000 रुपया. जबरदस्त अशी इनामां भरपूर इनामां ह्या टुर्नामेंटाक कारण गोंयचो आसा हो व्हडलो टुर्नामेंट साउथ गोवा प्रिमियर लीग आणि आखांताचे गेस्ट आमचे माचयेर आसात दबाजाचे आणि दबाजान चल्ल्या ही फायनल. आमी म्हाका दिसता सगळे कॉमेंट्री बॉक्सान खूब एफर्ट घेतला ह्या 3 दिसान. जर तुमकां आमची कॉमेंट्री आवडली आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सान जाल्यार दोळ्यान ताळयांनी आमकां सगळे कॉमेंट्री बॉक्साचे सगळे जे आसा तांकां येवकार करचो. देव बरें करूं सगळ्यांक. परत एकदा शिरफू तुमकां ओदोळीच सांगिल्लें जेन्ना एक मॅच हातांतल्यान गेल्ली आणि ही ओवर जी चिरपून आशिल्ली ऑक्सफर्ड टायटन्सा अगेन्स्ट इतली सुंदर रित्या जाल्ली की फक्त म्हाका दिसता 6 ते 7 रन दिल्ले आणि तांकां संद मेळ्ळी तांकां वाट दवरिल्ली ताणें की ती रन आशिल्ले जे चेस करपाक म्हणून बंटी पटेलान लास्ट ओव्हरीन 21 रन चेस केल्लो पूण तातूंत मोलाचो वांटो जो आशिल्लो तो चिरपूचो म्हणल्यार अक्षय जोगळेचो आशिल्लो. परत एकदा उकलून मारला गॅपान गेला काय कॅच कॅच धरिल्ली आसा कॅच धरिल्ली आसा आणि मातसो चुकला आणि म्हाका दिसता फिल्डर भितर आसा बंटी पटेल. बरी एक शॉट मारिल्ली एक होप्स आयिल्लो की सोको जातलो. आता स्कोर जाल्लो आसा 63 रन 63 रन्स. डिफेंड करतले पूण ते डिफेंड करून फर्स्ट टाइम इंडियन वर्ल्ड कप हाडिल्ले. पळोवया परत एकदा एक लो टोटल आसा आणि हो लो टोटल परत एकदा एक टीम जी केकेजी नायट रायडर्स डिफेंड करता काय ना. क्रिकेटीन खुबश्यो गजाली जाल्ल्यो आसा घडिल्ल्यो आसा आणि सदांच एक हिस्ट्री घडटा ती हिस्ट्री आज घडटा काय ना. इतिहास म्हणटा तो असो की जो बदलतलो जो घडटलो आणि नवीन नवीन आमकां कितें पळोवपाक मेळटलें. जस्ट लास्ट बॉल कारण लास्ट बॉला नंतर हांव विसव घेतलो पण ताच्या पयलीं
तुमकां एक रिक्वेस्ट जशें हांवें तुमकां सांगिल्लें की इंडियेचो म्हळ्यार इंडियेक जायना पूण दुबय जाता असो 10 PL म्हणटा तो सगळ्यांत व्हडलो जाका वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट म्हणून संबोधता थंय म्हाका सिलेक्ट केल्लो आसा. हांव जस्ट सगळ्या गोंयकारांक मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता की जेन्ना एज अ तुमचो एक गोंयकार भाव बंधू म्हणून हांव थंय वता आनी कमेंट्री दितलो जाल्यार म्हाका तुमचो मोग आनी म्हाका तुमचो तेंको म्हाका तुमचो सपोर्ट आसूं न्ही इतलेंच म्हणटा आनी लास्ट बॉल सांगून हांव कमेंट्री बॉक्सांतल्यान विसव घेता. परत येता तो लास्ट बॉल साईश गुरव स्ट्रायकर लास्ट बॉल पळोवया 6 मारून 69 करता काय ना काय फक्त एक रन कारण अजून पर्यंत चिरपून अक्षय जोगवेन बॉलिंग बरी गेली आसा फक्त एक 6 मारल्या जर एक 6 सुद्धा मारता जाल्यार म्हाका दिसता बॉलरान सामकें जबरदस्त कामगिरी केल्ली आसा. एक 6 खंयच्याय बॉलराक केन्ना एक ओव्हरीन पडपाक शकता येता चिरपू आपल्यालो लास्ट बॉल घालून. परत एकदा बरो बॉल लोअर फुल टच बॉल 2 धाव काडपाचो यत्न चालू आसा आणि 2 धाव काडपाच्या वाटेर आणि म्हाका दिसता अल्विन 2 धावा काडिल्ली आसा आणि ह्या 2 धावे नंतर 8 ओव्हरीच्या उपरांत स्कोर जाल्लो आसा 65 म्हळ्यार 65 धावा आणि जैताक जाय 66 रनाची गरज आसा. आणि पळोवया एक बरी फायनल आमकां पळोवपाक मेळटली स्कोर तितलोय चड ना तितलोय कमी बी ना आणि एवरेज स्कोर हो कितें घडोवन हाडटा एक मॅजीक घडोवन हाडटा आनी एक बरी फायनल पळोवपाची संद मेळटा हें सांगून हांव कमेंट्री बॉक्सांतल्यान विसव घेता. देव बरें करूं तुमकां सगळे GCCचे वांगडी तशेंच ऑर्गनायझर मना काळजांतल्यान तुमकां उपकार आठयता आनी हांव म्हजी जे उतरां आशिल्लीं ती आटोपी घेता आनी थँक्यू तुमकां. चलते हैं मैदान के बीच में। मैंने आते ही कहा था जब इंसान जन्म लेता है तो सोता है माँ की गोद में, और जब उसका इंतकाल हो जाता है उसे दफनाया जाता है मिट्टी की गोद में।
और इसी के बीच जो चलता है ना उसे कहा जाता है जिंदगी का सफर। और वो जिंदगी का सफर सुहाना बनाने के लिए ऐसे प्रतियोगिताओं का आयोजन करना बेहद जरूरी है और वो कार्य में कर दिखाया है जिस सिफत इस क्लब में। और बात की जाए तो ये प्रीमियर लीग आज ये पूरे 3 दिन और 3 रातें ये सुहाना सफर रहा है, ये फसाना बनकर उभर कर आया है। लोग इंतजार करेंगे अगला साल कब आएगा। थँक्यू जय। तशेंच आमचे गेस्ट ऑफ ऑनर मौलाना बाब इब्राहिम हांगा आसात। हांव रिक्वेस्ट करता तांकां हांगा ह्याच वेळार 2 उतरां तांणी दिवची लोकांक। आयचे GCCचे हे सेकंड सक्सेसिव्ह टुर्नामेंटाक हांगा हाजीर आशिल्ले आमचे चीफ गेस्ट आनी म्हाजो इश्ट बाब विजय सरदेसाय आनी ताचे बरोबर बॉम्बेचे तांचे फ्रेंड्स आसात आनी गुरुदास कामत आनी दुर्गादास कामत हांणी हेडमन आनी मुश्ताक आमीन आनी आमचे हेर मनीस जे हांगा स्टेजीर हाजीर आसात। हेची टुर्नामेंट आज घडोवन हाडला म्हाका दिसता एक बरो एक गोंयचे युथाक एक मोटिवेट करपाचो टुर्नामेंट जाल्लो आसा आनी हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। हे आमची GCCचे हे आमचे तरणाटे ही टुर्नामेंट घडोवन हाडून गोंयचे भुरग्यांक एक संदी दितात फुडें व्हरपाक। हांव तांकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। ही खंयची एक जात पात नासतना सगळे जातीचे लोक हे GCC भितर आसात, हिंदू आसा, क्रिश्चन आसात, ऑर्गनायझर मुस्लीम आसात। अशेंच तुमी हे प्रत्येक वर्साक ही टुर्नामेंट घडोवन हाडची। तुमचे टुर्नामेंटाचे जेन्ना विजय बाब हांगा आयलो तेन्ना आमी डिस्कस करताले। विजय बाब सांगतालो की तुमी ताका कित्याक पयलीं सांगू ना, आपूण बरो एक नॅशनल प्लेयर हाडटालो म्हण, इंटरनॅशनल प्लेयर हाडटालो म्हण, पूण ताणें म्हाका प्रॉमीस केला दुसरे फावटी एक इंटरनॅशनल प्लेयर एज ए चीफ गेस्ट तो हाडटालो म्हण हांगा। आनी हो एक टुर्नामेंट नेक्स्ट इयर तुमचो 3 लाखाचो न्ही तो 30 लाखाचो जावपा जाय, 30 लाखाचो जावपा जाय, 5 लाखाचे न्ही। काड्या पयशे काडा मरे सगळे। आनी व्हडले व्हडले एक्सपोर्टर बसलेले आसात हांगा, सी फूड एक्सपोर्टर आसात, रेस्टॉरंट ओनर शगून मुट्टो फेमस आसा आनी सगळे मोठे मोठे लोक बसले आसा। आनी विजय बाबाचो हात तुमचे हात माथ्यार सदां आसाच। ना ना फर्स्ट प्रायज दवरया, कित्याक जेन्ना इंटरनॅशनल प्लेयर हाडटा तेन्ना तुमी हें करपाक वाडोवपा पडटलें न्ही। पूण तशेंच विजय बाबान सांगलां म्हाका दिसता आतां अशें हांव उलयल्या मागीर तो एक न्ही 2 प्लेयर हाडपाक शकता। विजय बाब आता मॅच स्टार्ट जाल्ली आसा। हांव आतां प्रत्येक आनी एक पाटी GCC काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू सो मच। मुन्ना शेख का अगर विकेट कोई भी गेंदबाज निकालता है तो उसके लिए नगद 5,000 रुपए का इनाम। यहाँ पर KKG फिशर्स के पहले ओवर में कोई विकेट निकलता है गेंदबाज तो उसके लिए 5,000 रुपए का इनाम KKG फिशर्स के ओनर अहमद खान की ओर से पुरस्कृत किया गया है। नगद 5,000 रुपए का इनाम। ले चलते हैं मैदान के बीच में आन बान और शान की लड़ाई। इस वक्त मैदान के बीच में 66 रनों का पीछा करना है। इस बार खेलना चाहते थे, उठाकर गेंद बल्ले को लगी जरूर लेकिन लेग गली की दिशा में निकली। गेंद को जब तक फील्ड करते रन लेने का खतरा भी समाप्त होता हुआ। 66 रन ये आंकड़ा थोड़ा फंसाने वाला है। अगर यही टोटल 90-100 के आसपास का होता तो आते आते बल्लेबाजी जोरों शोरों से शुरू हो जाती, लेकिन ये 66-70 का आंकड़ा होता है ना तो बल्लेबाज द्विधा मनस्थिति में आ जाता है। बड़े शॉट खेले, सिंगल डबल को अहमियत दे या विकेट बचाए। और इस बार खेल दिया है केवल खोद कर निकाले कवर के बीच में से गेंद गोली के रफ्तार से जैसे सीमा से धागा भिड़ाया गया, गेंद सीमा पर 4 रन के लिए पहला चौका इस इनिंग का निकलता हुआ। रूपेश गांवकर के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी करे थे, मैन ऑफ द मैच के हकदार भी रहे थे। 40 रनों की एक शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया था इस मैदान पर। वही जलवा, वही बल्लेबाजी, वहीं से शुरुआत करते हुए रूपेश गांवकर इस बाउंड्री के साथ। पटकी हुई गेंद, ये गेंद कितनी दूर, जितनी चाहिए थे उतनी दूर देकर जाएगी
ये शायद पेविलियन से सेड होकर आए हैं, ये सिर्फ छक्के और चौकों में डील करना जानते हैं। मुझे सिंगल डबल का पता नहीं है। मेरे बल्ले से निकलेंगे रन, वो मेरे टीम के हित में निकलेंगे। इस प्रतियोगिता का सेहरा मैं अपने टीम के सर के ऊपर बांधकर चला जाऊंगा, शायद इसी सोच के साथ इस मैदान के बीच में। और सपोर्टर देखिए इस बाएं तरफ किस तरह से बंटी बदल के रुपेश गांव करके फिर एक बार, इस बार उठा दिया, फंसे फंसे फंसे, इस बार नहीं फंसे। अंकुर ने ललचाया, फ्लाइट डिलीवरी रुपेश को चलता कर दिया। पहला आघात लगता हुआ डायनामिक रॉयल्स टीम को पहले विकेट का पता। सात समुंदर और सात समुंदर पार करके हमारे गोवा राज्य के खिलाड़ी भी दुबई में पहुंचे थे 10 PL के लिए। और आने वाले अगले महीने में जो कि प्रतियोगिता है उसके लिए हरीश काकोडकर सर गुजरात में जा रहे हैं। एक बड़ी प्रतियोगिता गोवा राज्य के लिए अभिमान की बात है कि हरीश काकोडकर सर वहां पर कमेंट्री के लिए उन्हें बुलाया गया है। न्यू बैटर मैदान के अंदर प्रीतम सेठ, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, पूरी तरह से खोल कर रख दिया था बल्लेबाज को। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। एक छक्का निकला, एक चौका निकला, एक विकेट भी निकली, 11 रन निकले इस ओवर में। पहले ओवर का खेल यहां पर समाप्त होते हुए 66 रनों के जवाब में। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 66 रनों का पीछा करते हुए अब तक 11 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। नेल्सन फिगर ऑन स्कोर बोर्ड 1-1-1, 11 रन एक विकेट के नुकसान पर, एक ओवर का खेल यहां पर समाप्त होने तक। अभी भी और 55 रनों की आवश्यकता जरूर है, लेकिन मैच में बहुत कुछ छिपा हुआ है। हम हमेशा कहता है समय समय की बात है और समय से बलवान कोई नहीं है। हर दुख का इलाज है समय। समय के बाद आ जाता है अच्छा समय, जब चलेगा तब सुख आ जाएगा, और जब बुरा समय चलता है तो दुख के बादल सर के ऊपर मंडराते हुए नजर आते हैं। इंसान हमेशा दुख को कोसता है और सुख में मशगूल होकर नाचता है, लेकिन हमेशा कहा जाता है दुख होता है इसलिए तो सुख की अहमियत होती है, वरना सुख को कोई नहीं पूछता। यह है जीवन का सार, यह है जीवन की संघर्ष की कहानी। इस मैदान के बीच में हो या मैदान से बाहर, आपको लड़ना है, मैदान के बीच में झगड़ना है। आसानी से कोई बात आपको मिलती नहीं, और जब आसानी से कोई बात मिलती है ना, उसका कोई महत्व नहीं होता। गोपाल गांव गेंदबाजी के लिए ये फ्लाइटेड देते हैं, हवा देते हैं, ललचाते हैं। यहां पर मिस फील्डिंग हो गई, जहां पर कोई रन नहीं था वहां पर सिंगल निकला, और ये पूरी तरह से जाल में फंसाना जानते हैं बल्लेबाज को, हमने कई बार देखा है। और 5 विकेट एक ओवर में निकालने का कारनामा भी इस खिलाड़ी ने कई बार किया है, चाहे वो लेदर बॉल की प्रतियोगिता हो, चाहे वो टेनिस बॉल की प्रतियोगिता हो। इनको देखकर ऐसा लगता है ये हल्के में ले लेते हैं बल्लेबाज इनको, लेकिन जब विकेट गिर जाता है ना, तब अपने सर के ऊपर हाथ लगकर वापस जाते हैं खेमे में। हमेशा हमने देखा इस खिलाड़ी को, आज भी इस मैदान पर उनको जरूरत है एक अच्छे स्पेल की, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाज को चाहिए अच्छी बल्लेबाजी की। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। स्ट्राइक पर है मुन्ना शेख, डायनामिक रॉयल्स का डायनामिक बैटर जो कि मैदान के अंदर मुन्ना शेख, इसने बहुत बड़े कारनामे करे हैं अपने जीवन में अपने बल्लेबाजी के साथ।
ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, इस बार हवा में खेल बैठे हैं, गेंद निकल रही है बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, पॉइंट की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करते, दूसरा रन पूरा कर दिया। आज के दिन का अगर यादगार पल कौन सा होगा, वो अक्षय जोगले का कैच। क्या कैच लिया, बेहतरीन कैच लिया। 1983 में कपिल देव ने रिचर्ड्स का जो कैच लिया था, उसकी याद दिलाने वाला वो कैच था। और ऐसा 100% एफर्ट जब दिया जाता है ना, तो टीम के हौसले भी आसमान को छूते हैं। और यही कारनामा है, ये यहां पर देखना है, लड़ती हुई नजर आ रही है टीम मैदान पर। गोपाल गांव फिर एक बार यहां पर निश्चित रूप से डायरेक्ट देखने वाली बात, यहां पर अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर के ओर आता हुआ। थर्ड अंपायर का इशारा आते हुए, दिल की धड़कन इस तरह से होती हुई, लेकिन फैसला यहां पर जाता हुआ नॉट आउट का, यानी कि हरी झंडी। बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो उस एक्शन में। टोटल अब पहुंचा है 15 रन पर 66 रनों के जवाब में। गोपाल गांव फिर एक बार, और इस बार सामने उनके प्रीतम सेठ, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। दाहिने और बाएं का एक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा दिक्कत में डाल देता है, हर एक सिंगल के बाद फील्डिंग करने वाली टीम को परेशानी में डाल देता है। आगे निकले थे विद अलोंग द कारपेट, कॉपी बुक स्टाइल का एक बेहतरीन स्ट्रोक, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर हल्की सी मिस फील्ड हो गई, सिंगल तब तक चुराया। एक रन के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचा अब 16 रन पर। हर एक रन के लिए जूझना पड़ रहा है मैदान पर। जानते हैं यहां से हल्की सी गलती मैच हाथ से गंवाने के लिए मजबूर करेगी, और इंतजार करना पड़ेगा 365 दिन का, आने वाले अगले साल का। और ये कांटा चुभेगा जब हार के आप बाहर जाओगे। दोनों टीमें चाहेगी इस प्रतियोगिता का सेहरा अपने सर के ऊपर बांधे, लेकिन देखना है समय किसके साथ होता है, क्योंकि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, शायद रन लेना चाहते थे, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, लेकिन वापस भेज दिया अनमौके पर, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी, देखिए पता चलता है किस पूरी अभ्यास के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं इस मैदान पर। और चाहे जीवन हो या क्रिकेट का मैदान, आपको संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। जब आप गिरते हो फिर उठना पड़ता है, संभलना पड़ता है, और फिर लड़कर जीत को अपने पास गले लगाना पड़ता है। और तब जीत का जो सुकून मिलता है ना, उसकी क्या बात है। निकलता है फिर एक बार गोपाल गांव गेंदबाजी के लिए, और यार करलें की गेंद बैक टू द बॉलर खेला था, डाइव जरूर लगाई थी, लेकिन गेंद को रोकने में नाकामयाब। एक रन तब तक पूरा हो गया, सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है लगभग 2 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ 17 रन स्कोरबोर्ड पर 86 रनों का पीछा करते हुए डायनामिक रॉयल्स की टीम इस मैदान के बीच में। साउथ गोवा प्रीमियर लीग 2023 ये दूसरा सीजन है, और क्या शानदार आयोजन। किसी भी प्रतियोगिता का आयोजन करना वो खाने की बात नहीं है। जिन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है उनके लिए तो 100 मार्क बनते ही है, तालियां जोरदार होनी ही चाहिए। जिस तरह से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, 7वें आसमान पर चढ़कर बोल रही है ये प्रतियोगिता। कारण यही है कि इसके पीछे है बहुत बड़ा परिश्रम, बहुत बड़ा पसीना बहाया हुआ, और आज रंग ला रही है ये। और इसके साक्षी आप सभी दर्शक इस मैदान के ऊपर जो उपस्थित है, सभी मान्यवर जो इस व्यासपीठ रंगमंच के ऊपर उपस्थित है। 2 ओवरों का खेल समाप्त, 17 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। आन बान और शान की लड़ाई
पिछले 2 दिन से आपने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन उस प्रदर्शन का फल यहाँ पर क्या मिलेगा? हमेशा कहा जाता है अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा मिलता है। इसलिए क्रिकेट में हमेशा अच्छा जो प्रदर्शन करेगा उसके लिए जीत और बुरा प्रदर्शन करने वाले के लिए हार का शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इस बार खेलना चाहते थे बैठक स्ट्रोक, घुटना टेक और तमाशा देख, लेकिन स्विंग एंड मिस, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। बहुत ही शानदार आयोजन, मानो इस मैदान के ऊपर आईपीएल चल रहा हो, इस तरह से आभास निर्माण हो चुका है इस प्रतियोगिता में। फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ खेला, फिर एक बार मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी तेजी के साथ आए, थोड़े से फंबल हो गए लेकिन फायदा नहीं मिलेगा, मात्र मिलेगा वहां पर सिंगल। सिंगल के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 18 रन, 66 रनों का पीछा करना है, अभी भी और 48 रनों की है और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। गेंदें बहुत ज्यादा जरूर बची है, मैच में बहुत कुछ बचा है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं समय के पिटारे में क्या छिपा है ये इंसान को पता नहीं होता। अगर ये इंसान को पता होता ना तो इंसान प्रयास करना छोड़ देता और घर में बैठ के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा करता। फिर एक बार और इस बार उड़ा दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए 6 रन के लिए आसमान को छूते ना छूते, बहुत ही बड़ा छक्का, लंबा छक्का, इसी की आवश्यकता थी टीम के लिए। और इस खिलाड़ी के बारे में ऐसा ही नहीं कहा जाता ये नासिक का आशिक है, क्योंकि ये छक्कों के ऊपर प्यार करता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है नासिक का आशिक। और मैदान के बीच में प्रतीत हो रहा है, प्रतिद्वंदित कर रहा है अपने बल्लेबाजी से, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। छक्के के साथ टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचता हुआ 24 रन स्कोर बोर्ड पर, 42 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। अल्टी पल्टी देखिए, 24 रन बने हैं, 42 रनों की है आवश्यकता, ये है आंकड़ों का खेल। इस छक्के के बाद पूरी तरह से माहौल बना दिया है अपने टीम का, डायनेमिक रॉयल्स का। ये डायनेमिक सिक्सर आपने देखा इस मैदान पर, बहुत ही बढ़िया। देखते ना देखते गेंद हवा से बातें करते हुए निकली सीमा रेखा पर 6 रन के लिए। ओ फिर एक बार वैसे ही प्रयास, लेकिन इस बार चूके थोड़े से, गेंद की लाइन को थोड़ा सा खींचा था अपनी तरफ, गेंद निकली बिंदी, गेंद समाप्त होती हुई, लेकिन प्रयास जारी रहेगा। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अपने टीम के लिए और टीम के हित में इनको बल्लेबाजी करना आता है। ओ इस बार थोड़ा सा मन बदला, सिंगल के लिए भागे, हल्के हाथों से एक ऑनर ऑफ द स्ट्रोक जिसे कहा जाता है वो खेला, सिंगल के साथ छोर बदला, 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 25 रन स्कोर बोर्ड पर। जानते हैं मुन्ना शेख इस मैदान पर आसानी से रन बन सकते हैं, क्योंकि टारगेट उतना बड़ा नहीं है, सिर्फ विकेट हाथ में रखना बेहद जरूरी और खुद को मैदान के बीच में साबित करना बेहद जरूरी होगा। अंकुर सिंह का अच्छा ओवर था, लेकिन एक छक्का एक चौका उस ओवर में निकले, 11 रन और एक महत्वपूर्ण सफलता भी निकली थी। लेकिन उसके बाद गोपाल गंज का ओवर, उस ओवर में निकले सिर्फ 6 रन और इस ओवर में अब तक निकले हैं 8 रन। विनोद विल्सन और फुल टॉस गेंद, ये देखिए घुटना टेक, तमाशा देख, गेंद स्टैंड एंड डिलीवर, इट्स अ सिक्सर। आखिरी गेंद के ऊपर ये लगा छक्का और टोटल पहुंचा है
31 31 रन 66 रनों के जवाब में 3 ओवरों का खेल लगभग समाप्त होता हुआ। अभी भी 5 ओवरों का खेल बाकी है, यानी कि 30 गेंदों का खेल बाकी और 35 रनों की है और आवश्यकता। मैच इस तरह से बीच में जरूर है, लेकिन पलड़ा भारी है डायनामिक रॉयल्स टीम का इस मैदान के बीच में। अगर मैच में वापसी करनी है सामने वाले विपक्ष खेमे को, केकेजी नाइट राइडर्स टीम को, तो विकेट की तलाश होगी। शायद भोपू बजने बंद हो गई है, भोपू बजते रहने चाहिए, माहौल बनना चाहिए और माहौल से क्रिकेट बनता है। हमारे दाहिने तरफ के भोपू बंद हो चुके हैं। याद दिलाना चाहूंगा हमारे दाहिने तरफ जो भोपू है बजते रहने चाहिए। गोपाल गांव से आए हैं, ये संकट मोचे गए इनके टीम के। पहला ओवर अच्छा डाला, संभल कर खेला था बल्लेबाजों ने। अब देखना इस ओवर में क्या होता है। ओ आगे निकले, हाफ वॉली बनाकर खेल दिया, पहला रन तेजी के साथ पूरा कर दिया। दूर थे खिलाड़ी, लेकिन जैसे ही देखा तेजी से आ रहे थे, सिंगल के ऊपर ही संतुष्टि। सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 32 रन स्कोरबोर्ड पर। 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन बनाकर आउट हो गए रुपेश। अभी भी और 34 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। थोड़ा सा ड्यू फैक्टर दिख रहा है मैदान पर, हल्की सी ड्यू नजर आ रही है और शायद ठंडा वातावरण, और ठंडे वातावरण में छक्के लगाना उतना आसान नहीं है। ओ इस बार चॉप कर दिया, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, वहां पर कोई रन नहीं मिलेगा। बेहतरीन गेंदबाजी, थोड़े से हवा दे रहे थे और बल्लेबाज के दायरे में जरूर थी, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ लिया सीधा। 1 बाउंस निकली उनके हाथ में। फिर एक बार गोपाल गांव, अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी अपने टीम के लिए। ओ फिर एक बार बाइटक स्ट्रोक लगाने की कोशिश, फिर एक बार चकाती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, आला गेंदबाजी मैदान के बीच में, और इस वक्त ऐसी गेंदबाजी की आवश्यकता है नाइट राइडर्स टीम को, केकेजी नाइट राइडर्स टीम को। ओ इस बार थोड़ा सा ललचाया था, फ्लाइट दिया था, यहाँ पर बाहर खींचना चाहते थे, लेकिन अपना पैर पॉपिंग क्रीज में रखकर दूर से खेलने की कोशिश। गेंद और एक निकली बिंदी गेंद, लगातार 3 गेंदें डॉट निकले अब तक इस ओवर की। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 32 रन स्कोर बोर्ड पर। ये कांटे का मुकाबला होगा ये मात्र निश्चित है, लेकिन देखना पड़ेगा आने वाले समय में क्या लिखा है। गोपाल गांव फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। ओ इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, सेकंड स्लिप के नजदीक से। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता कोई रन नहीं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। यूं ही हम इनकी तारीफ नहीं करते, इनको यूं ही चंदन नहीं कहा जाता, क्योंकि चंदन को कहना नहीं पड़ता, वो चंदन है। हवा के महकने से पता चलता है मैं चंदन बहका है, चंदन आया है। गोपाल गांव की बेहतरीन गेंदबाजी मैदान के बीच में अपने टीम के लिए। बीच बीच में गेंदबाजी जो कि कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी। अब देखना है इनको बल्लेबाजी करनी है, समर्थकों का भोंपू बजते रहना चाहिए, तभी उनको जोश आएगा। ओ अच्छी गेंद, लेकिन फिर एक बार मात्र मिलेगा सिंगल, और सिंगल के साथ टोटल जो कि पहुंचा 33। आधा फासला इन आधे ओवरों में समाप्त हो चुका है। 24 गेंदों का खेल बाकी है, 33 रनों की और आवश्यकता। ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत, आमंत्रित करते हैं सागर गोसावी को, और मुझे यहां पर मौका दिया इस पूरे ऑर्गेनाइजर टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और यहां से आप सभी दर्शकों से भी विदा लेता हूं। धन्यवाद। Thank you, Jay Bosley.
It was very nice, pleasing to hear from you. And now we are into the final juncture. 4 overs remaining, that is 24 legal deliveries to go. And the thing that is striking my mind is the number which is on the scorecard. That is 3333. And that 33 number has struck at so many times. Even at the international level, if you look at the records, then definitely you are going to see fall of wicket on 33. But is it going to happen on this very ground, or is it going to be lucky for the batting team? Last 4 overs to go, and here we go in this run chase. Vinod Wilson, the jet into the act. Meanwhile, there was an appeal from behind the stumps, just into anticipation that it might be a wicket. That not the story out in the middle. Meanwhile, a first delivery goes as a dot delivery. 33 still into act. Meanwhile, a wonderful strike and what a hit. Slog sweep and a Pritham delivering for his team. Big six takes the team total to 39. So 39 favoring the batting team at the moment. And our team total is 39. 66 is the target. So meanwhile, both the batsmen are having a good check at the tennis ball as a dew factor is on. It's a very chilly night that is being progressed, and that actually makes the ball to get little wet and even little darker. So that is the concern for the batting team. So meanwhile, both the batsmen are happy with the tennis ball that has been taken as the match ball. Vinod Wilson feeling the hit, have been taken for a big six. Let's see what is going to be his approach. He is a very shrewd all-rounder. Have bowled at the n number of times. He has bowled to all the good batsmen in leather ball as well as in tennis. Knows which are the right areas. So here we go. Another good delivery, shifting towards the off-stump, guides the ball towards the square leg region. Fielder patrolling the fence, gathers the ball meanwhile. Knows that they won't be running for the second. It's none other than Ankur Singh. So a single that takes the team total to 40. Still, the game is equally poised. Target must be looking very narrow if we calculate the figures, but let me tell you, the situation out in the middle as the dew factor is also in. This might be a good finish for the match, as it is not going to be that easy to hit the ball, as ball is skating as well. Vinod Wilson, as the left-handed batsman, have come at the strikers and decides to come right arm around the stumps. Munna Sheikh versus Vinod Wilson. This is going to be a very good contest, but we have to see the approach of Munna Sheikh. Knows that a big shot has come in this over. He is a very cool and a handy customer. Low full toss and again drives the ball through the covers. Sweeper in act. Takes the ball in his hand and a single that takes the team total to 41. This is a wonderful approach. Very calculative, cool and calm, and loves to take the game as deep as possible. Earlier, as the shorter format has started, it was none other than the god of cricket, Sachin Tendulkar, have actually showed us how to play the T20, as one player needs to play the ankles role, and a similar thing is displayed by Munna Sheikh at the moment, waiting for the loose deliveries. If the score is not coming in the over, then taking chance on the second last or the last delivery. But a calculative risk taker, what a player that we have witnessed, and that is the reason why lot many prizes are there under the belt of Munna Sheikh. Meanwhile, team total is still at 41. Fifth over is still on. Another good strike. Is it going to be caught? Yes, I think so. Fielder under the ball as Gules Kakamba receives the ball right in front of the boundary rope. And the youngster
back to the pavilion, but he has played a handy role that was given to him. Pritham Sheth back to the pavilion. Second wicket taken by KKJ Knight Riders. So now, again, this match has come to an equal juncture. Still, both the teams are having equal chance. Another fall of a wicket will boost the morals of the fielding team. And a good batting, a sensible batting, will take the batting team home quite comfortably and will allow them to grab the hands on the winner's trophy. Meanwhile, the signal from the middle is, this is going to be the batting power play over. So as we were talking about the legends, one is the god of cricket who has taught us how to play T20, as one has to be the anchor to carry on the innings. And in the depth, another legend has taught us how to take the proceedings, whatever may be the score. Is none other than MSD, who soaks all the pressure, even 25 runs required from the last over. Then the experts have said, pressure is on the bowler one, MSD is at the striking end. So two legends have taught us how to deal in the different situations. So let's see who is going to be the finisher for the batting team, or is it going to be a tight line and length that will be the hindrance for the batting team to put their hands on the winner's trophy. Two teams fighting it out in the middle for the winner's trophy. KKJ Knight Riders Dynamic Royals. Nitesh. Meanwhile, the chance of catch, fielder and the ball. Oh my dear, lovely effort. Lovely effort. But could not stop the ball from crossing the fence. Look at that effort. This is what is required. Total commitment. And full marks for fielder for that effort. If he had to held on, then definitely it would have been a big, big wicket. Nonetheless, a boundary takes the team total to 45. As this is the batting power play over, you can place only 3 fielders outside the 30-yard circle. Still, the ball has been hit where the field was placed. Definite wonderful effort, but could not stop the ball as ball landed slightly in front of that player. So here we go, a young Turk with the ball in his hand, left arm over the stumps to the left-handed batsman. Slightly outside the off stump. Inside the guideline. Oh, we are waiting to check whether it has landed outside the playing area or not. Definitely, ball was pitched way outside the off stump. So here's third umpire checking on the monitor. If it pitched outside the playing area, then definitely this is going to be a no ball, but that is not the story. It has pitched inside the playing area. That's the call from the third umpire. So this goes as a legal delivery. Meanwhile, wide is the signal as it has landed inside the playing area. So we were waiting for the umpire signal. An extra takes the team total to 46.
Team total 46. 20 runs required from here on. Another swing away from the fielder, ball traveling the distance quite comfortably. A drop inside the boundary rope. Look at the batting of Munna Sheikh. Taking calculatively risk, not in a hurry. Taking his own time, but punishing the ball that has been bowled in his slot. And that boundary takes the team total to 50. Half century up for Dynamic Royals. More 16 runs required. Meanwhile, look at that delivery. Straight into the zone. Looks to be Munna Sheikh has hurt himself in the hunt of hitting that ball towards the square leg region. Not getting the direction, not getting the elevation, not even getting the space to connect that ball. Good reply from Nitish, a youngster who is marking his name at this juncture, at this platform, as he has taken some big wickets in the initial half of the tournament. Wickets of Krishna Satpute. So that is the dream wicket for him, and that is his first wicket in this tournament. So this guy who is bowling at the moment in the batting power play. Meanwhile, a decent delivery slightly outside the off stump. Good keeping from Sanket Moraskar behind the stumps. Wide is the immediate signal, and that takes the team total to 51. Nitish, let's see whether he can strike. Lovely strike, and he has been hit outside the boundary rope. What a hit! Munna Sheikh looks to be playing with the bowling of Nitish into his zone. Two strikes were towards the square leg, and now towards the cow corner, as it is a vacant area outside the 30-yard circle. That big six takes the team total to 57. More 9 runs required. Can Munna Sheikh finish off it in a style? Looks to be, oh my dear, what a lovely cut shot. Even the fielder has been placed but could not stop that boundary. 4 runs from the bat of Munna Sheikh. That takes the team total to 61. Now the opportunity for Munna Sheikh to finish it off in a style. 5 runs required, and this is the final delivery of this over. Can Munna strike big? Can they finish off in a style? Yes, he does. What a hit! No need to even look at that, and that a big six. What a player! What a contest! What a hit! Congratulations, Team Dynamic Royals. You are the crown champion in this second edition. Meanwhile, एक कळवणी आसा जितले GCC गांवठी क्रिकेट क्लबाचे जे मेंबर आसात ते मातशे हांगा स्टेजीच्या मुखार येवचे. मागता जितले आमचे GCC क्लबाचे जे मेंबर्स आसात ते हांगा स्टेजीच्या मुखार येवचे. Congratulations, Dynamic Royals, for being the crowned champions of a second edition of South Goa Premier League. And now, over to Harish Kakodkar.
हांव रिक्वेस्ट करता ऑर्गनायझींग कमिटीचे जितले जाण मेंबर्स आसा आता ते मातशे म्हाजे कडेन येयात. ऑर्गनायझींग कमिटीचे मेंबर मातशे म्हाजे कडेन येयात फास्ट. ऑर्गनायझींग कमिटीचे सगळे मेंबर आम्ही प्रेझेंटेशन सेरेमनीक सुरवात करतात वेळ काडनासतना. ऑर्गनायझिंग कमिटीचे ओनर्स हे आसा ते मातशे बेगीन रावात. हांगा सुरवात करता. बुकेस, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, टोकन ऑफ